तशीचे आमगलोटू ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋದು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು. तशीच आमगलोटाजी बीजेपी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट जावन आशिल्ला नंदन मल्ल्या आसाची दयकोरलो टँक कोब्रादांनी पुरे क्लॅप मारलो नंदनाक वेलकम करता म्हणून निमून वतास. तशीच डेडली पॅन्थर्स त्यांनी पिच्चाच्या राईट साइडाक लाईन करता. डेडली पॅन्थर्स पुरे प्लेयर्सान लाईन कोण रब्बुका. तशीची आमगेला इनॉग्रेशनाक गेस्ट जावन आशिल्ले तसला नंदनण्णा मध्ये येवका विकेटाला घेवका. पट्टाब मामू विकेटना विकेट येवचुका. तशीची स्वानिष्ठानि साधे ते नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. ब्रह्मान्था गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मनि जन्मनि. प्रथमशावनु विघ्न निवारकु महागणपतिले चरणाक वंदन करून ग्रामदेव वीर वेंकटेशु मंगळापुराज देवी मंगळादेवी कद्री मंजुनाथ हांगाची या क्षेत्राचे अत्यंत प्रमुख देव जावन आशिल्ले मारियम्मा हांगा मस्त दैवस्थान आसाची. तशींची मुख्य जावन आमगेले गुरुवर्यांक उडगास करून आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे वतींतून आमगेले तळे इतला चरके टँक कोरबाचे हांगेले क्रिकेट टूर्नामेंट आज आयोजन केलेलं असतं. आता नंदन मल्ल्यांनी प्राय मुख्य अतिथी जावन आयल्यांची तांकां स्वागत करता. आता हे पिच्चारी आमगेले एक संप्रदाय कसं म्हणल्यार एक परमात्मा उडगास करच्यो, विघ्न निवारक गणपती उडगास करच्यो, सकट देवांग उडगास करच्यो आनी हांगा आशिल्ले ग्राउंडारी कसलेय नमुन्याचे क्षुद्र शक्ती हें कशें आसा म्हणजे तांकां एक नाल्ल मारून तांकां एक बली दिवन हें पंद्यावळी निर्विघ्न जावन चला आसून दिवका म्हणून सकट देवा लागीं प्रार्थना करून हें पंद्यावळी उद्घाटन करता आसाची. तशीच आमगलोटात दक्षिण कन्नड बीजेपी युवा मोर्चाच्या प्रेसिडेंट जावन आशिल्ला एक यंग लीडर आमगलोट आसा. नंदनण्णान एक 2 उत्तर उरलो न्हू, 2 टिमाक एक वेलकम करता. तशीच आमगेले टुर्नामेंटाक एक सक्सेस जावं म्हणून आमकां एक सपोर्ट करता. सोमले देवाल उडगास करताची टँक कोब्रास ट्रॉफी
सीझन 4 आमची गल एक समाजाचे सक्कडी आम्ही युवक ಒಟ್ಟು जावन आसुका म्हण जाल्यार असले हलवार टुर्नामेंट जातर आसुका आमची गल समाजाचे जरके कसले भेदभाव असल्यार ते बरीन दवरून आम्ही युवक सक्कडी असल टुर्नामेंट निमित्त ओगट जावका म्हण सांगताची हांगा सगळे सक्कडी क्रीडापटू तांकां विशेष जावन अभिनंदन सांगताची आणि मुखावेल जीवनांत तुमकां सगळ्यांक यशस्वी मेळो म्हण सांगताची टँक रोवडा या ತಂಡದ सक्कडी पदाधिकारी तांकां विशेष जावन अभिनंदन सांगताची मिगेल 2 उत्तर करता तशीची डेडली कॅप्टन आणि टँक कोब्रा हे कॅप्टन नेद्रे होका नंदन नेद्रे होनु फर्स्ट मॅचाच्या टॉस घालून आमगेले टुर्नामेंट इनॉग्रेशन करता म्हण निमगून घेतस क्रिकेटाचे एक मेन पार्ट टॉस सो त्या एक टॉस घालून इनॉग्रेशन करता हेड्स कॉल म्हणला टेल्स पडला फिल्डिंग टँक कोब्रास टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतला तशीची रब्बू का नंदन विकेंडान आणि पट्टाप मामान पूर जनाक एक ऑल द बेस्ट म्हणून पूर प्लेयर्सांक तशी हंगेलोटू आनी पुरो आमकां आमगेले टीम प्लेयर्स जाल्यार एवरी टुर्नामेंट सपोर्ट करता असेल जेवण प्रसाद मिल्स अजी ओनर जावन असेल प्रसाद नायक त्यांनी नेद्रे होका दुर्गा लॅबोरेटरीचे ओनर जावन असेल बाला त्यांनी होका अभय नेद्रे होका राघव बाबाजी तुम्ही नेद्रे होका अंकुपुर आम्ही गेस्ट म्हणून जायना पूरे आमगेलेची टीम प्लेयर जाल्यार पूरे प्लेयर्साक ऑल द बेस्ट म्हणून सपोर्ट करता ವೆಂಕಣ್ಣ ಏ ಕ್ರಿಕ್ಕಿರೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದವರಪ್ಪ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ तशीची टीमात आणि पुरांगे हो का नंदन एक दोन बॉल खेळ का नंदन बॅट देऊ का तशीची युवा मोर्चा प्रेसिडेंट जावन आशिल्ला नंदन या टुर्नामेंटाच्या फर्स्ट बॉल फेस करतस पूर्ण जणांना क्लॅप मारका फर्स्ट बॉलाची बाउंड्री गेला या टुर्नामेंटांत बारीला एक शॉट अनेक बॉल देऊ का बारीला एक शॉट ಹಲೋ ಬಂಡ್ಲೆ ಎಂಡ ಮೈಕುಂಡಿ ಮಂತೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಆರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ फर्स्ट बॉल 4 गेला आता पळो आनंदाने कसं करतो म्हणून फुल टॉस बॉल हा एक हातान काय धरला तशीच या टाइमारी डेडली पॅन्थर्स कॅप्टन आला एक रिक्वेस्ट ते कमेंट्री बॉक्सर वचून क्रिकी रोजा तुमगेला प्लेइंग 11 देऊ का देखो योग्य कोर का
Umpires. Sir, start Malpuga. Hello. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Umpires. Sir, fielding na kun ready leru. Deadly Panthers. Batting team achana batting ayo command nimmun geta. Deadly Panthers and jaldi logi batting outscound nimmun geta. Landy. Jaldi logyo. लंबी प्लेयर्स है पेटे लंबी एक सर्कल कौन बैटिंग हो चुच लेट करता वेंकैना Good morning everyone. Welcome to the most prestigious Tank Cobras Trophy 2025 Season 4 will go into start now after that inaugural ceremony. We are into the first match, the inaugural match. The two teams will go into play the inaugural match. The team Deadly Panthers takes on Tank Cobra. The two teams will go into play the inaugural match after that inaugural ceremony. The captain of team Tank Cobra, after winning the toss, they elected to field first so that the fielders of Tank Cobra, they are on the field and just waiting for the opening batters of team Deadly Panthers. So umpires for this first match, umpire Divit as well as umpire Ravi Uppala, and experienced umpire Ravi Uppala and Dikshit Divit and Dikshit and Dhanush, the other two umpires are in our commentary box, and as a third umpire Dhanush, and we are going to start the match here. The bright and sunny morning and the typical weather condition of the month of March. A little bit hot, but not that much of hot in the morning, and a slight bit of small wind which is passing in the ground, making this condition absolutely perfect for the cricket. And the umpires
for this match. We are just talking about the officials, experienced officials. In commentary box, myself, Satish Salyan, Mr. Gopi, my long-time commentary partner, my best friend, will be the another commentators for this wonderful Tank Cobras Trophy 2025 Season 4. Everything is ready here for the first over. We are just waiting for the opening batters are now slowly walking towards the middle of the pitch. After that, 3 successful season, Tank Cobras organizing the wonderful cricket tournament, Andram cricket tournament in this most beautiful and historical UCG cricket ground known to be lots of Andram cricket. And all set now for the opening match. The host team, Tank Cobra, they're playing their first match. Inaugural match. After that inaugural ceremony, they won the inaugural toss. They elected to field first. Narendra and Karthik are the opening batters, and here is a signal coming from umpire. Ravi Uppala will be the start of the tournament, and the first delivery of Tank Cobra Trophy Season 4 will going to start. The power play number 1, of course, 1 over going to be a power play. Sujit will be the bowler. There is a fielder at short fine, like 1 at short mid wicket, mid on, short third man, cover point, short extra cover, short mid off and long off. The first ball starts with the delivery which is just inside the line of and it's going to be a wide call by umpire, and with that extra scorer now started the journey, 1 without loss of any wicket. Sujit, right arm over the wicket, bowls, drives that one down to cover point region, fielder behind the ball. They wanted to come back for the second. Nagraj the fielder running back, and enough time for the batter to complete the 2 valuable runs. And with the 2 valuable runs, Narendra off the mark, and total score of team Deadly Panthers are 3 without loss of any wicket. Sujit, experienced campaigner, and they introduced this time outside the line of off stump, the impact which is clear. We can see that the overthrow comes into play. No one there is a backing up. Enough time for the batter to take that opportunity to convert that single into 2. Leg by call by umpire. The couple of runs which is completed with that couple of runs, Cobra moves on to 5 on the board. And the 5 without loss of any wicket from the Tank Cobra end. Right arm over the wicket. Balls beautifully bowled around the legs. Almost around the legs, in the sense it's between the legs of the batter. The first wicket back in the pavilion. Narendra departs. The one delivery ball by Sujit is absolutely perfect in cutter. And the batsman has got a no clue whatsoever. The wicket number first which is back in the pavilion of Deadly Panthers. They are 5 for loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Samarth is a new batter in, slowly walking towards the middle. Here is an announcement. Every 6 there will be a 300 from Tank Cobra. But that amount will be donated to the Save Life Charitable Trust for the noble cause. And last year also they are donated rupees 45,000 for the student, the college girl, those who are financially backward. And they are absolutely did a very good noble job, social work. And this is what Tank Cobra is knowing for. Not only they are engaged in sports and games, but even in the social work they are contributing for the uplifting the students, those who are financially backward. And one more single in the form of leg by, with that extra score moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Sujit to continue.
So here is next delivery. Right arm over the wicket balls. Lovely. This time outside the line of leg stump and umpire called it wide. Little margin for error. Down the leg side and again with that extra score, but moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. Again, lovely delivery indeed. Equally well played there by the new batter. Is came into bat is Samarth Karthik. Now Samarth has got announcement. If he hits 1-6, he will going to get 1,000 rupees, which is announced by Shampath Shetty. 1,000 rupees for 1-6. Right arm over the wicket, Sujit bowls. Going to be a wide, far outside the line of leg stump with the extra score, but moves on to 8 on the board. 9 on the board, correction. The good runs on the board, even they lost the wicket. For the deadly Panthers, they got 9 runs in this first over is in progress. Sujit, final time. Driven nicely down to long off region for a walkable single. He will go into retain the strike for the next over. So 10 runs coming from that foul play over by Sujit and 1 wicket as well. So altogether, both the teams has got a start here. Team Deadly Panthers got a 10 valuable runs and Tank Cobra has got a 1 wicket in that over. After completion of first over, it's 10 for the loss of 1 wicket. So next match will be played between Tank Cobra B versus Karshit Friends Manjeshwar. So that I request both the teams kindly request you to complete all the formalities of registering the player's name as well as tossing ceremony. The 10 on the board. Second over going to start and the bowler brought into attack Dilip Pai from Machli End. Right, Mohammad wicket balls. Driven that one officially but quite safely down to deep long off region. Ample time for the batter Samar to complete his second run from his bat when the total score now moves on to 11. All ones in that scoreboard. 1-1-1-1. 11 for 1 and the over number 1 which is completed and the second over is in progress. Second time in this over. Right, Mohammad wicket balls. Nothing much to do with the delivery. Ball is almost going down the leg side and the umpire Divit has got no hesitation to call that wide with that extra score, but moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Dilip with a short run up. Right arm over wicket. This time lovely delivery just around the legs but going down the leg side. Little margin for error and I think is gone. Is bowled out. Stumped out. Automatically done might be. Yes, it is. Oh, and that was a fantastic. I think it's not behind the stump. The wicket keeper has got automatically done. That time the wicket keeper, when the wicket keeper hitting the ball to the stumps, that time the batter's back footage is absolutely out of the crease. Wide which is given. So 13 for the loss of 2 wicket. So new batter in. Gautam, the man with lot of experience, will be the striker. Driven nicely down to deep long on region, not deep correction, the mid on region in fact. And ample time for him to complete the single. With the single score, but moves on to 14 for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. Samarth will go into face next one. Right arm over the wicket balls. This time nicely driven down to deep extra covers. Will they come back for the second? No chance at all. Lovely piece of fielding there by Sujit in the deep. Nicely pick up and pick that one and return the ball quickly to the hands of the bowler. And ample time for the batter to complete the single. With that single scope, now moves on to 15
for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. You are watching the match number 1, the inaugural match of prestigious Tank Cobras Trophy 2025 Season 4. Some outside the run of off stump and misjudgment by Gautam in the occasion. He thought it might be a wide, but well within the reach of that line, just inside the line, and no run scored. And the last 2 deliveries left in this over, and right arm over the wicket bounce. Driven up easily, but safely, and after one bounce, Sujit is charging from the deep extra cover. And looks like Gautam a little bit has got a problem in his right leg. Might be it was a twisted. Tried to get the second run. I think absolutely he is in trouble. Maybe that was a twisted ankle. And while try to get the second run, might be that finest the face of the pitch is really struggled the batsman to get difficult to grip. That might be the problem if you're not having enough grip in the shoes. And then it's always, you can see that kind of problem the Gautam is facing. तशीची फुडकोट आमतो काप स्टार्ट जाला परगांवची टीमान पुरे काप पिवन एक पटी मागीर So Gautam getting some treatment and quick relief spray which is implemented to that his right leg and twisted what you are talking about twisted ankle, and might be looks like it's very fine because a man in good form, terrific form on the last tournament. He's become the man of the series as well, so that the Deadly Panthers doesn't want to lose him by injuries, but looks like he's fine here after getting some quick relief treatment, and looks like he will going to continue. So bowler will going to continue from Machli and with a short run up. Dilip for final time in this over. Right arm over the wicket. Outside the line of leg stamp, it's going to be a wide. Again with that extra scuba Namuzan to 17 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Dilip continues. Lofted opportunity, but Sujit will not. Oh, he got that, but dropped the catch in that occasion. Looks like he's in a perfect position, even though he need to run a little bit from deep to almost to that catch. But once the ball is coming to him, he couldn't manage to hold that catch. Ball is absolutely flagged out of his hands. And the batter has got a life. Not only a life, they got valuable 2 runs as well. As a 19 for the loss of 2 wicket. After completion of over number 2, they're going exactly 9.5 runs per over. The good going here for Deadly Panthers. And the 2 overs, they got huge runs, 19 against Tank Cobra A. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಶೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು. So third over going to start. The bowler brought into attack from Tank Cobra and Sohan with a jersey number 25. And batter will going to take the strike is the man in good form. Gautam will go into face. Loved it. What we are talking about, the man in good form. This is the stroke from the man. He is in a terrific touch. And he played it very straight over the head of the bowler into the commentator roof. And just like ton, 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 the sound what we are hearing in that commentary box roof. And this has been outstanding cricketing stroke coming from the blade of Gautam.
What a shot that one. Stand and delivered, isn't it? Effortless. Ball is in the slot. But he delivered that one right from the middle of the bat. This time again, he wanted to go for the big shot. Faced the penalty for that. Good comeback here by the bowler. Sohan, after that, the boundary out for that 6. Immediately is learning from the mistake. Not really pitched the ball short, but he bowled a little bit along the carpet outside the line of off stump. Gautam tried to repeat the stroke, but doesn't get hold of that one properly. And played it straight to the hands of wide-ish long off fielder. And wicket number 3 is back in the pavilion. It's 25 for 3. Team Deadly Panthers in the second over. Shivanand Pai, Kamath will be correction, the new batter in. The first ball nicely played it down to deep long on region off the toes, played with the merit of the delivery. Down to long on for a walkable single. One more experienced campaigner, Shivanand, usually is loves to come in the beginning, but he's coming as a number 6 batter, 5 batter in fact. Lovely delivery along the carpet. So when last moment he got a bat onto that. Samarth. Only a single. With that single, Cobra moves on to 27 for the loss of 3 wicket in the over. Number 3 is in progress. Again played it right just wide of that short mid-wicket fielder. Down to deep long on for a single. With that single, Cobra moves on to 28 on the board. The fantastic tournament is in progress. Cobras Trophy Season 4 2025. The live telecast from one of the most popular YouTube channel, King Sports, having a live telecast of this cricket tournament. Again, played it almost not able to get the ball from the middle of the bat. And the ball is coming along the carpet. One more single. With that single, Cobra moves on to 29 for the loss of 3 wicket. And the over number 4 is in 3, which is completed. So good going here for Deadly Panthers. They are scoring the runs with a good, nice run rate, just under 10 runs per over. And the projected score will be a 50 if they manage to get the score in the similar run rate, 49 to 50. In the morning, it seems to be a good total to depend. And, but watching the ball which is used for this particular tournament, which is very hard in the nature, so it is very difficult to tell anything about that first innings score, how much is going to be good enough. So Dr. Vivek Pai brought into attack. The first ball, nicely driven down to deep extra cover region. Brother of Nagraj Pai, the proprietor of Machli, Hotel Machli. Here is again Vivek bowls. Driven, bowlers back drive, Vivek tried to stop the ball by using his feet, but ball just defeating his feet. And driven down to deep long on for a walkable single. 31 for the loss of 3 wicket. Over number 4 is in progress. Vivek to Samarth down the leg side. It's going to be a wide, little margin for error with that extra. Scored moves on to 32 on the board for the loss of 3 wicket. In the over number 4 is in progress. Vivek balls again driven straight back to long off, just right off the bowler. And with that addition of that single, scoreboard moves on to 33. Again, all 3 is in the scoreboard. 3, 3, 3, 3. And so far it's a very decent over. He's in progress there from Vivek. Oh, there's going to be one more extra then, excluding that 2 wides in this over. I think that might be a little bit to disturb the economy of the bowler. That extra 34 on the board. Again, this time Shivanand wanted to go for the mighty drive, but it's a blind attempt without coming to the line of the delivery. The line which is outside the line of off stump along the carpet. Shivanand just wanted to get that one in the long on region. Missed it completely. No run scored.
Back bounce again, lovely line. It was a very good line indeed. Shivran drives that one down to mid, wideish long on towards the cow corner. Walkable single, 35 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Excellent over is in progress here from Vivek. And here you go, last time it's over. This is the one area the Vivek a little bit have to careful. 3 wides in this over. 36 on the board for the loss of 3 wicket. Vivek again. Wow, this time lifted, but say, oh, what a stop! Excellent stop by the fielder at mid wicket. What could be the great catch if manages to hold that catch, but he's got the catch. Almost his ball is stuck in his hand, but unfortunately, when he's tried to get that one, the ball is just slipped out of his hand. And what could be a certain 6 might be to the chance of catch as well. Altogether, more than the catch, I think he saved 5 valuable runs for his team. And scoreboard is 37 after completion of over number 4, Deadly Panthers. Compared to the last 3 overs, this is a better over because the runs which is coming in the form of singles and 3 wides, it might be the little bit problem in that over. Otherwise, it's a great over from Vivek, Dr. Vivek. So last over will going to start, and Sudhindra with a jersey number 55, double 5, will going to start the last and final over of their innings of Deadly Panthers. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ಬಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಶಿಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ I request the 2 captains, please get ready for the next match. This time bowled him, cleaned him up. What a delivery from Sudhindra. And Samarth back in the pavilion. What the announcement is made for him for 1,000 rupees, which is remained in the pocket of Sampath Shetty. 37 for 4. The good innings, even though they're from Samarth, contributed little bit runs from his bat for Deadly Panthers, and one more very good player coming to the middle, the middle order batter, Venkatesh Pai, the good striker of the ball, left-hand batter. He's got only 5 deliveries to spare in their innings, but great start there from Sudhindra from the Tank Cobra end. And here is the bowler will go into continue. Second time in this over, Venkatesh will go into face his first delivery and second delivery of the last over. Start again going to be a wide. 1 + 1, 2 runs added to total with the addition of that couple of runs in the form of extra. Scoreboard moves on to 39 for the loss of 4 wicket. You are watching match number 1, the inaugural match of Tank Cobras Trophy 2025 Season 4 is under progress. Shivanand will go into face, good striker of the ball. And the bowler, Sudhindra. Ball system, just wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that and properly, just a single. With that single, scoreboard moves on to 40 on the board. Vivek, the fielder, coming from the deep wideish long off. 40 for loss of 4 wicket. Last 4 deliveries left in their innings. Taking his own time.
This is what the problem, the left and right combination. Wide call by umpire. What could be a perfect delivery for the right-hander batter? The same delivery, the same line will go into be a wide delivery because left-hand batter is on strike. This is a big problem sometimes for the bowlers when you're having a left and right combination. You need to change the line. And again, he's now wanted to come round the wicket. And wait and see how effective it's going to be effectively. It's no effectively, the same problem continues. One more extra, one more wide. All runs are going to be a bonus for the team Deadly Panthers. So many extras conceded, Tank Cobras. It's not a good sign. You see the giving some kind, that much of extras will going to impact the result of the match when they're going to chase those runs. This is a better line. This is a good line indeed. Coming into the batters with the pace, and Venkatesh Pai beaten by the pace, just wanted to get the ball towards an extra cover. Inside out cricket stroke is tried, but missed it completely. Good comeback by Sudhindra. And this is what the line you need to bowl when the left-hander is on strike, pitching the ball on the midland off stump. If you're bowling the leg cutters, and that might become off cutter for left-hand batter. And keeping that line will going to make a problem for the left-hand batters. Sudhindra continues. Pass umpire Ravi Uppala. Coming down the track, using his feet, but missed it completely. But wicketkeeper not going to miss the opportunity to complete the formalities of removing the bails from the stumps. The wicket number 5 is back in the pavilion. Venkatesh Pai just lost his patience after that dot delivery, the previous one. He just tried to break the shackles, coming down the track, misses the line completely. And wicket for... तशीची आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानाच्या ट्रस्टी जावन आशिल्ल्या किरण पै माम तांकां स्टेजारी वैरव कमणाव निमून घेता. आमगेल टँक कोब्रा फॅमिली दाखोवन तुमकां रथपूर्वक स्वागत. तशीची वसंत माम आमगेलो तांकां रथपूर्वक स्वागत म्हणटा. So exceeds the time limits, the fielding team, so that Tank Cobras have to bring one fielder inside the ring as far as the penalty is concerned. The batter's name, please. Batter name. Batter name, please. Batsman ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. Shashank, the new batter in, will go into face the next delivery of Sudhindra. The last over is in progress. I wanted to go for the reverse shape. Lovely delivery indeed. One more dot delivery. With that dot delivery, score remains on 42. Turning out to be a good over. Excluding that 2 wides in this over. He bowled excellent line and length. And this is going to be a final delivery of their innings. So Shashank will go into face Sudhindra. 42 is the total score. All right, over the wicket balls. Again, wicketkeeper fumbles. That's going to be a 1 run in the form of extra. And that's it. The bye call by umpire. Deadly Panthers will going to finish their innings of 5 overs quota with the 43 and set a target of 44 to win the match for the team Tank Cobras. It's going to be a good score, and around 9 runs per over the run rate required, and under 9 runs per over. कार्शीट फ्रेंड्स मंजेश्वरा ताजे कॅप्टन आना स्टेजा लागी नेक्स्ट मॅच टॉस येवका म्हण निमून घेता. ऑलरेडी मॅच स्टार्ट येताना ಸ್ವಲ್ಪ डिले जाला. तशी आनी चड डिले करतनाका म्हण निमून घेतला तांगे लागी. Thank you very much. I request all the team, please cooperate with the organizers. Already we are having a shortage of time. Your cooperation is much required. That's it. The 5 overs which is completed. Tank Cobra won the toss, elected to ball first. And the team Deadly Panthers, absolutely they got some deadly start in the beginning. Got some runs. And highlight of the innings is the highest score, which is scored by the opening batters. Karthik was scored, little correction, Samarth scored valuable 10 runs out of 11 balls, and small contribution in the end from the Gautam is scored 8 runs as well as and the batter
Arshit Shivanand who scored some runs as well. Altogether, it's a very good batting performance, even the good bowling performance by the Tank Cobra, especially the last over is a very tight over indeed from Sudhindra, but altogether the 44 runs they managed to, 43 managed to score, and they set a target of 45 to win the match. And wait and see how well the Tank Cobra batters will going to reply here against the deadly Panthers. And we are just hoping for some great start from both the teams in the second session. The time to change in voice as well as the language. It's over to Gopi for the further explanation of the match in Hindi language. And good morning, Gopi, and welcome to the Tank Cobras Season 4 2025. It's going to be a great start for the tournament because both the teams has got some good players in the side, and we are expecting some great battle between these two teams for the victory in their first match of the league stage. धन्यवाद सतीश. सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. और जहाँ तक सवाल है सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. तो जैसा कि हम जानते हैं टैंक कोबरा ट्रॉफी सीजन 4 2025 का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है. द फर्स्ट मैच ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोबरा ट्रॉफी सीजन 4 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मुकाबला जारी है टैंक कोबरा जो कि अतिथेय टीम है और डेडली पैंथर्स के बीच. और टैंक कोबरा ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए डेडली पैंथर्स के बल्लेबाजों ने रन से बनाए 43. 5 विकेट के नुकसान पर 44 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है उन्होंने टैंक कोबरा के सामने जो कि मेजबान टीम है. और इस वक्त देखना है कि 44 रनों के लक्ष्य तक निर्धारित 5 ओवर में टैंक कोबरा के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं. तो जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, एग्जैक्टली 8.80 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ 10 विकेट्स. द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर टैंक कोबरा द होस्ट टीम. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. रजत शेणय और प्रसाद भट्ट. कार्शीट फ्रेंड्स मंजेश्वरा कार्तिका ना स्टेज आरे का मंडी मुंजता ओंग टॉस रखता से जी टैंक कोबरा बी टीम आज. नयन द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड. और नयन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रजत के लिए. और रजत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बार पहले गेंद को उछालना चाहता. गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ इस वक्त रजत का खाता खुल चुका है. अब प्रसाद है जो कि सामना करने के लिए तैयार. नयन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और तो इस वक्त रजत ने खाता इस वक्त खोल लिया है पिछली गेंद पर. नयन गेंदबाजी करेंगे इस वक्त प्रसाद भट्ट के लिए. और इस वक्त नयन फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the power play is concerned. और सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. और नयन दाहिने हाथ ओवर बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और नयन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. दिशाहीन गेंद थी और वाइड के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड येट टू लूज एनी विकेट. और नयन अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो बेहतरीन गेंद इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ अंतिम क्षण में कुछ उछाल लेती थी और विकेट कीपर के हाथों में गेंद जैसे ही पहुंची विकेट कीपर ने तेजी से विकेटें उखाड़ दिया. और देखना यह है कि जब विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े थे तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज के बाहर था या अंदर. तो तीसरे अंपायर यहां पर इस का परिशीलन यहां पर करते हुए. और
देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो बेहतरीन विकेट कीपिंग इस गेंद पर विकेट कीपर ने की और इस वक्त देखना है कि बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से लिफ्ट हो चुका था या फिर क्रीज पर मौजूद था उनका बैकफुट। और देखने वाली बात यह है कि तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। और जहां तक इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का सवाल है, जिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, just talking about the prestigious cricket tournament which organized by Tank Cobra in the celebration of their 4th year, they are organizing this such a wonderful tournament in the name of Tank Cobra's Trophy season for 2025। और इस श्रृंखला के हर छक्के के लिए टैंक कोबरा की ओर से सेव लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर नोबल कॉस्ट को 300 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और निस्संदेह न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी टैंक कोबरा अपना हाथ कई सालों से बटाता आ रहा है। पिछले साल 45,000 रुपये जो छक्के के रूप में, हर छक्के के ऊपर 300 रुपये के नगद पुरस्कार से 45,000 जो रुपए इकट्ठा हुए थे, उस 45,000 रुपये को एक कॉलेज लड़की के शिक्षणार्थ के रूप में टैंक कोबरा जो कि प्रदान कर चुके हैं। और निश्चित रूप से एक सामाजिक, बेहतरीन सामाजिक कार्य यहां पर कहा जाएगा। नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। बेहतरीन सोशल वर्क जो कि टैंक कोबरास के सर्व सदस्य करते हुए पिछले साल 45,000 रुपये नकद कॉलेज की छात्रा के लिए उनके शिक्षण के लिए दिए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन फोर्थ कमिंग डेज, आने वाले दिनों में नेक्स्ट मॅच आहे टँक कोब्रा बी वर्सेस कार्चिट फ्रेंड्स मंजेश्वराचे। आता टॉस झालेला सर, टँक कोब्रा बी टॉस विन जाऊन दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। तो इस बीच नयन तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा और लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं और सही गेंद घोषित। और निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन फोर्थ कमिंग डेज टैंक कोबरास के द्वारा और भी कई सामाजिक कार्य हो और ये टैंक कोबरा जो कि संस्था है प्रगति के उन्नति पर जा पहुंचे भविष्य में। और इन फ्यूचर इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, थोड़ी सी नीची रहती हुई अंतिम क्षण में और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सामना करते हुए इस वक्त प्रसाद और गेंदबाजी करते हुए नयन। काफी लंबा ओवर इस वक्त नयन का प्रगति पर, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और नयन ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट। और फ्री हिट गेंद इस वक्त बरकरार बल्लेबाज के लिए। नयन बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीची रहती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर। 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और नयन इस वक्त 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और नयन बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, लंगोन सीमा रेखा से गेंद बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड he just lofted that one over the roof of our commentator box fence for a massive one. This is a fantastic struck. Came from the bat of Prasad Bhatt. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक प्रसाद भट्ट के बल्ले से लगता हुआ और नयन एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा। काफी लंबा ओवर इस वक्त नयन का, इस वक्त प्रगति पर और अब तक इस ओवर में 12 रन वो प्रदान कर चुके हैं। 4 या 5 वाइड भी यहाँ पर फेंक चुके हैं अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए। एक गेंद अभी भी बाकी और नयन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूंकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक लंबा ओवर नयन का समाप्त हो चुका और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 44 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए
कोबरा से, जो कि मेजबान टीम है, होस्ट टीम है, इस वक्त 12 रन जोड़ चुकी है बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत कहा जाएगा। और जहां तक रिक्वायर्ड रन्स का सवाल है तो 32 रन और चाहिए, 32 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज विद द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 8 रन्स पर ओवर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए। तो सुबह का वक्त लगभग 10 यहां पर बजते हुए, अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 9:56 अब तक बज चुके हैं। और सूरज धीरे धीरे इस वक्त अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ गर्मी की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 5 2025 के अंतर्गत गेंदबाज मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए वेंकटेश। पहली गेंद उछाला लंगोन पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। Not quite get that one right from the middle of the bat by Rajat, and the placement was too wrong, and Lagon fielder held the catch successfully just inside defense. Rajat departs, first wicket loss for Tank Cobra. Now it's 12 for 1 at the start of the second over in fact. तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। रजत छक्का लगाने के प्रयास में इस वक्त लंगोन फील्डर द्वारा लपक लिए गए, और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रजत, द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। विजय राज नए बल्लेबाज के रूप में, और विजय राज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कहना पड़ेगा इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, सामना करेंगे यहाँ पर वेंकटेश की गेंदों का। और वेंकटेश पाई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार विजय राज के लिए। यह गेंद इस बार हवे में, और गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में। स्ट्रोक को इस वक्त चेक किया था, हाफ माइंडेड स्ट्रोक प्लेड बाय विजय राज, एंड ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। दुविधा में पड़ गए कि गेंद को स्ट्रोक को खुलकर खेले या नहीं ना खेले, और यहां पर अंतिम क्षण में हाफ माइंडेडली इस गेंद को उछाला जरूर है, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में विजय राज का विकेट गिर चुका है, और दूसरा विकेट खो चुका है टैंक कोबरा। नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच। दे लॉस्ट 2 consecutive wickets in the last 2 consecutive deliveries. Just 2 deliveries back, they were 12 without loss, and right after 2 deliveries, now they are 12 for 2. And in this critical circumstances, the man called Sudhindra, as a number 4 batsman, he now comes out to the middle. और सुधींद्रा इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर पहुंच चुके हैं, और नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज वेंकटेश इस वक्त अपनी हैट्रिक गेंद लेकर तैयार। वेंकटेश भाई इज ऑन अ हैट्रिक। हैट्रिक बॉल्स कम्स फ्रॉम हिम। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर मिसफील्ड इस वक्त। और जब तक डीप मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 in progress. So the batsmen of Tank Cobras now searching for the right track at this situation. They badly required a partnership at this stage to get back into this match. एक साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत टैंक कोबरा के बल्लेबाजों को यहाँ पर वापसी कमबैक करने के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और वेंकटेश भाई इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress। और अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर। प्रसाद भट्ट जो कि इस वक्त सामना करते हुए वेंकटेश पाई की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, कटर के तौर पर गेंद थी,
दिशाहीन गेंद वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त वेंकटेश भाई इस ओवर में तराशते हुए, और कुल मिलाकर 3 गेंदें इस वक्त बाकी, और वेंकटेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद चारा लॉन्ग ऑन पर, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन ने सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद जरूर थे, जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, और आखिरकार सीमा रेखा के सीढ़ियों पर स्टेप्स पर गेंद टिप्पा खाती हुई छक्के के लिए। 22 रन बन चुके हैं, 22 रन और चाहिए, और गेंदें बाकी हैं अब 19 balls and 22 runs required. Again इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। नाउ 19 balls remaining and 21 runs required. In fact 19 balls left and 21 runs required. Still the match is now equally balanced. और ऐसा कहना पड़ेगा जो छक्का प्रसाद ने लगाया था उनका दूसरा छक्का, और वो छक्का टैंक कोबरा को इस मैच में वापस ला चुका है। फुल टॉस इस बार चूके विकेट कीपर चुके, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद, और फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया बेहतर तरीके से 20 गज के दायरे के अंदर। शॉर्ट फाइन लेग पर ओवर नंबर 2 की समाप्ति। 2 gone, 23 on the board and 11 runs came from this over. One more good over in Tank Cobra's point of view came in. So after 2 overs they are looking in a good situation. 23 for the loss of 2 wickets. Now 21 runs required in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा the match is now equally poised. So Cast It friends and Tank Cobra we will face each other in the next match, and because of that I request the players list, please bring the players list on the commentator box. तो इस वक्त गेंदबाज ओवर की पहली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और गेंदबाज हैं इस वक्त नारायण। गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। 17 balls left and 20 runs required now. Still the equal battle is now on, और गेंदबाज नारायण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सुधींद्रा सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद नारायण अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त सुधींद्रा ने वाइड इस लॉन्ग ऑन पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा Tank Cobras are now strongly back in the game. Now the equation seems to be much easier for them. Just 14 runs required from remaining 16 deliveries. और निश्चित रूप से effortlessly इस गेंद को उछाला था इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज सुधींद्रा ने, और बेहतरीन स्ट्रोक कहना पड़ेगा बल्लेबाज सुधींद्रा के बल्ले से लगता हुआ, और ये छक्का टैंक कोबरा को इस मैच में पूरी तरह वापस ला चुका है। अब एक बार फिर से नारायण तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आते हुए सटनली गोइंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन का इजाफा, एंड नाउ इट्स अ लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बोर्ड अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 13 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। 15 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर डेडली पैंथर्स को इस वक्त कम बैक करना है, तो चंद डॉट गेंदे और चंद विकेट यहाँ पर उखाड़ने होंगे उनके गेंदबाजों को। तो इस बीच कुछ बातचीत दोनों अंपायर्स के बीच में जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। हालांकि डेडली पैंथर्स के खिलाड़ी ने कुछ बात की थी इस वक्त अंपायर से, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बातचीत दोनों अंपायर्स के बीच में जारी है, और इक्वेशन इस वक्त 13 रन और चाहिए, 15 गेंदें बाकी, 15 balls remaining and 13 runs more
Now they have to score for victory. दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए, और इस बीच ये रन को रद्द इस वक्त कर दिया गया है, तो कोई रन उनके खाते में जोड़ा नहीं जाएगा। तो रन सब चाहिए 14। 15 गेंदें बाकी है, 14 रन चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज नारायण, इस बीच ये गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 31 रनों पर। 31 ऑन द बोर्ड, एंड दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 14 बॉल्स लेफ्ट, 13 रन रिक्वायर्ड। और बल्लेबाज प्रसाद भट्ट इस वक्त सामना करते हुए नारायण की गेंदों का। फील्डिंग का मुआयना करने के बाद नारायण एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और यहां पर जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल फील्डर, और गेंद उनके हाथों को वंचित करते हुए इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि जी तोड़ कोशिश जरूर की थी इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर ने गेंद तक पहुंचने की, लेकिन अंतिम क्षण में पहुंच नहीं पाए, और गेंद उनके हाथों को टकराने के बाद उनके हाथों को वंचित करते हुए निकल गई सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ समीकरण इस वक्त काफी आसान होता हुआ। अब रन चाहिए 9, गेंदें बाकी है 13। 13 बॉल्स लेफ्ट, 9 रन रिक्वायर्ड। 35 इस बार स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, गेंद को उछाला इस वक्त लंग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर गेंद को रोक नहीं पाया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, टैंक कोब्रास आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। 39 on the board, just 5 to get from remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs, and now टैंक कोबरा इस मैच में अब ऐसा कहना पड़ेगा पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। तो इस ओवर में रन बने 16 रन, 16 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर। और अब ऐसा कहना पड़ेगा डेडली पैंथर्स को कुछ घातक गेंदबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है। और गेंदबाज इस वक्त मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अनिल किनी, जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए निश्चित रूप से, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक घातक गेंदबाजी ही, एक चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग ही इस वक्त डेडली पैंथर्स के इस मैच में वापस ला सकती है। और इस बीच जहां तक टैंक कोबरा का सवाल है, इस वक्त कोई जल्दबाजी की इस वक्त उन्हें कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू पैनिक एट ऑल एट दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ टैंक कोब्रास। और ओवर की पहली गेंद लेकर अनिल किनी इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। इस बार स्ट्राइक एट द ग्राउंड, बट स्ट्राइक टू फील्डर, फैंटास्टिकली हेल्ड जस्ट इनसाइड द फेंस बाय द फील्डर। बेहतरीन कैच इस वक्त लेने में सफल, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपक लिया, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो सुधींद्र के बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 39 रन पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर नाउ। तो सुधींद्र का विकेट यहां पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज नागराज पै का आगमन यहां पर होता हुआ नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से, और सिर्फ 5 रन अपने विजय से दूर इस वक्त टैंक कोबरा, जबकि 11 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। अनिल किनी अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए, लंग ऑफ लंग ऑन बिल्कुल सीधा इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट मौजूद, कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं। एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और अनिल किनी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची फील्डर, और इस बार थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन बल्लेबाज एक ही रन के साथ संतुष्ट इस वक्त, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स, एंड टैंक कोब्रास नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू देयर विक्ट्री। जस्ट 4 runs to get from remaining 10 deliveries. अनिल किनी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त
प्रसाद भट्ट के लिए, जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करते हुए गेंद को उछाला, इस वक्त लंगोन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ ही जस्ट फिनिश द मैच इन स्टाइल। सो जहां तक प्रसाद भट्ट का सवाल है, he remained unbeaten on 28 including 3 massive sixes and 2 boundaries, and undoubtedly fantastic innings played by Prasad Bhatt. He remained unbeaten on 28, and with that his fantastic batting performance, Tank Cobra reached the target comprehensively, and they won the match by 7 wickets. So man of the match देखते हैं किसके पक्ष में जाता है। तो जहां तक पहला मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत टैंक कोबरा ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत यहां पर समाप्त हो चुका है, जिसमें मेजबान टीम होस्ट टीम टैंक कोबरा विजय रहा डेडली पैंथर्स के खिलाफ 7 विकेटों से, जबकि 9 गेंदें उनके पारी के बाकी रखते हुए और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक यहां पर प्राप्त कर चुका है। तो अगला मैच यहां पर शुरू होगा टैंक कोबरा बी और कास्ट्रीट फ्रेंड्स के बीच में। मैच नंबर 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोबरा ट्रॉफी सीजन 4 2025 is now coming up between कास्ट्रीट फ्रेंड्स वर्सेस टैंक कोबरास बी, एंड दैट मैच स्टार्ट्स विद इन जस्ट शॉर्ट व्हाइल। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब यहां पर मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು वी बाजार आज मालिक जेवण अरुण भट त्यांनी स्टेजवर येऊन बसू का? तशीची कमेंटेटर्स फर्स्ट मैच ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Prasad Bhatt adjudged the man of the match for his fantastic knockoff. 28 unbeaten runs he scored, and because of that he adjudged the man of the match. I request Prasad Bhatt please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Thank you. किरण अण्णा स्टेजवर प्रसाद भट्ट मॅन ऑफ द मॅच देऊ का निवडून घेत सर. फर्स्ट मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच तशी वसंत मामाने ओळखतो का? वसंत मामा तुम्ही स्टेजवर येऊ का? फर्स्ट मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच प्रसाद भट किरण अण्णाने वसंत मामाने ओळखतो हंगे मॅन ऑफ द मॅच देऊ का निवडून घेत सर. पूर्ण वेळा जोर क्लॅप मारका. फर्स्ट मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच प्रसाद भट. तशीची विकेणाला एद्रे किरण अण्णा आमगेले एक मोमेंट देऊ का म्हणून निवडून घेत सर. जोर क्लॅप मारका आमगे एवढी टुर्नामेंट सपोर्ट करत असेल किरण अण्णा आमगेले तसं जोर क्लॅप मार वेलकम करका. तशीची वसंत मामाक एक मोमेंट देऊ का? आमगे एवढी टुर्नामेंटाक सपोर्ट करत असेल किरण अण्णा आणि वसंत माम जोर क्लॅप मारका आमगे टिमात आणि पर्यंत वेलकम करका.
Umpire, just a minute. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಯ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಯಸ್ತುವ. Thank you very much and welcome to the batch number 2, and Cobras B, after winning the toss, selected to field first, so that opening batters for team Karshit Manjeshwar are in the field. Karthik the striker, Hemant will be the non-striker. Here is the first ball. Starts with the delivery, which is going to be a huge wide, Spectra wide, and Dikshit, the umpire, in his own style, has got the first exercise of the morning for Dikshit in the form of extra, the wide signal by umpire, where the extras scored and journey. They started the journey. The first run came in the form of extra for team Karshit. This time lofted high up in the air, opportunity. I think the fielder in the deep long on, just a spectator watching the ball, goes into the fence for a 6. Short pitch delivery. The batter, even though didn't time it very well, but it's got a little bit hard enough to get the distance a little bit. The ball is just crossing the boundary line. And what a start here for the team of Manjeshwar. And the scoreboard is 7 on the board. Karthik, the batter, got the 6, and now Karthik played it down to long on for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress.
Hemant is on strike now. After that, Karthik has got a flying start in the first beginning of this over, and the bowler is a little bit under pressure. Lakshmish will going to continue from the Tank Cobra end. Right arm over the wicket, a flighted delivery. The batter too early into that stroke, but missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. The batter wanted to get a big shot, but seeing that the delivery, which is a little bit short one outside the line of off stump, Lakshmish will going to continue. Hemant will going to face the next delivery. Again, the similar kind of delivery. This time he drags the ball from outside the line of off stump. Got his first run. Not a convincing cricketing stroke, but he managed to get a first run from his bat. Hemant got his first run. Total score numbers on to 9 on the board without loss of any wicket. First match, the comprehensive victory for the Tank Cobra A against the Deadly Panthers, one of the favorite team. Their first defeat against the Tank Cobra A in the opening match of this cricket tournament. This time bowler's back drive, opportunities created for the cotton ball, but late reaction coming from Lakshmish to get that catch, and almost that ball is in a good height for bowler to take that cotton ball. The fact that Karthik is hit that one pretty firmly back to bowler, he couldn't manage to hold the catch, and Cobra moves on to double figure straight away. 10 on the board without loss of any wicket. Lakshmish bowls a short pitch lofted, and it's going to be a maximum. The second sixer of this over, and this time Hemant joining the party, and even Dikshit is also joining with this unique style of signal, and with that 6 scoreboard 16 in the first over itself. The great start here for the team Kashit Manjeshwar. 16 without loss of any wicket. It's been a great start here for the team Kashit Manjeshwar. Opening batters got a very good start here for the team. Both the batters respectively hitting 1-6 each, and it takes the total score into 16 in the first over. The power play, which belongs to the team Kashit Manjeshwar. You are watching match number 2 of day and night cricket tournament Tank Cobras Trophy 2025 season 4, which is wonderfully organized by Tank Cobras. 16 without loss of any wicket. The bowler brought into attack to bowl the second over. Pawan Bhakta from Machli end. Pawan Bhagat, little correction. The young man, and very good talent. Of course, I'm watching him performing in the over-arm cricket. He's a great all-rounder for the side, and I don't know how he'll going to perform in under-arm. He's been introduced from the far end, Machli end, round the wicket. Second delivery, the first ball single taken by the batter Karthik, and here again Pawan. Far outside the line of leg stump, but batsman switched, and because of the switched, it's going to be a bye, and boundary signaled as well. It's going to be a great miss by the wicketkeeper as well as the third man fielder. The gifted run, the boundary, and it's going to be a bonus run for the team. With that bonus run, Cobra moves on to 22 on the board. 21 on the board. Hemant round the wicket. The equation, Pawan round the wicket. Hemant played it down to short mid-wicket division. Quickly, both the batters are responding for that quick single. With that addition of that quick single, Cobra moves on to 22 without loss of any wicket. Karthik brought into attack. Pawan Machli end. Wow, so beautifully bowled. That was a perfect line. Very lucky indeed. Ball is just missing the stumps. That slacketer might be the ball. It hits the stumps, but Bales, which is not dislodged from the stumps. It's going to be very lucky escape here for the bowler. Just have a look at that one in the replay.
Just wanted to go for the sweep shot. Ball turned and hits the stumps, but very lucky that ball is not having that much of hard enough to dislodge the bails from the stumps. Lucky escape of Karthik. Unlucky for the bowler. Again played it very nicely. Roll of the wrist wedges comes into play to pick the couple of runs here. Good placement. Even they're looking for the third run as well. They're asking for trouble and he's back in the pavilion. Not required, isn't it? After getting a couple of runs, they wanted to come for the third, which is very difficult one. And Eamon, the batter, is back in the pavilion in the form of run out. Misjudging that third run, costing a wicket. At last, Tank Cobras B, they got their first wicket. It's 24 for loss of 1 wicket. ಕಾರ್ಷಿಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ಷಿಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್. ಮಹೇಶ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ so came into middle, played his first ball, dot ball. So over number 2, which is comes in and after completion of over number 2, Manjeshwar. Hello. Hit 24 for loss of 1 wicket. तशीची आमगेल हे टुर्नामेंटाक सपोर्ट केला तसला यज्ञवंतना लायला सची दैकोरने स्टेजर एन बैसो यज्ञवंतनाक टँक कोब्रास तो कोण स्वागत दिता सची. Prasad Senai, the new bowler in, brought into attack from Tank Cobra. He will go into bowl his first over and first delivery to Karthik. The well-settled batsman has got some 6 in his... तशीची सेडे बटमम तुम्ही स्टेजर येऊ का? सेडे बटमम स्टेजर या. Far outside the line of off stump and wide call by umpire Dikshit with the addition of that single extra in fact. 25 quarter century straight away for the team of Karshit Manjeshwar. Lofted it but doesn't get hold of that properly. The fielder going back and taking a wonderful catch. I think the Pawan, the fielder down at extra cover, just going back and getting the position quickly and completed a very good catch, and that's a big wicket for the team Tank Cobra. Karthik departs. Just wanted to slash the ball outside the line of off stump. Got outside edge of the bat. And making no mistake at all. The wicket number first is back in the pavilion of team Manjeshwar Karshit. 25 for 2. Umpire, just a minute. Gautam not added in that list. Mobile number, please, Gautam's. ಸ್ಕೋರರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವವರು 11ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. So Gautam will be the new batter in. His experienced campaigner played it nicely towards a mid-wicket
They wanted to come back for the second, but no chance at all for the second. One more addition. 26 for the loss of 2 wicket in the over. Now. तशीच अर्बन क्रिकेट क्लब आज मालक जावन आशिल्ला नरसिंहण्णा आमगेल्या टसाची आमकां डिझायनिंग खातीर मस्त सपोर्ट केलेलो आसा. टँक कोब्रा ट्रॉफीक वेलकम करपाची. Prasad continues. Again played it topishly and same fielder in the picture. The Pawan making no mistake at all. The 2 wickets in a row here for Pawan. The wicket number 3rd is back in the pavilion of team Manjeshwar Kashit. 26 for 3 now. The Prasad picking his 2nd wicket with that gentle off-spin delivery. The batter excited, going for the big shot. Same thing has happened. Almost the identical mirror display of the dismissal of Karthik. The same line and same length. The batter just wanted to go for the expansive drive on the offside region. Doesn't get hold of that and properly. Wicket number 3 is back in the pavilion. It's 26 for loss of 3 wicket. It's going to be a no ball. No ball called by umpire. Batter name, please. Manohar, the new batter in. Played it down to mid-wicket region for a easy single. (28) for the loss of 3 wicket. Oh, beautifully bowled, perfect one. It's gone, it's gone. Ball deflected from the leg and if it the stumps, wicket number 4 back in the pavilion. Prasad, absolutely outstanding over from him. 3 wickets in that over. It's 28 for loss of 4 wicket. Hitesh, the new batter in. Prasad, what a terrific over. So far picked up 3 valuable wickets in this over for Tank Cobra B. Putting some break on the run rate. The over number 3 is in progress. The Hitesh and Manohar, the 2 batters out there in the middle. Right arm over the wicket balls. Swept the ball nicely. Down to square leg region. Enough time for the batter to come back for the second. No one there in the deep square leg region so that the fine leg fielder have to run back. So great over, good over there from Prasad. Excellent over. The wicket picked up 3 valuable wickets. It's 30 for the loss of 4 wicket after completion of over number 3. Prasad Nayak, the new batter, new bowler in from the Machile end. After that, Manohar will be the striker and Prasad will be the bowler from the Machile end. This time he lofted, but I don't think he will go to get the distance, but he will go to get the fielder
in the long off region. No ball called by umpire. Well, Manor survived. I think the sixth fielder might be the outside the ring. That may be the reason that they called no ball. Only 3 fielders inside the ring. There's absolutely absence of mind from the fielding side. So 33 on the board. For the loss of 4 wicket. Prasad. This time lofted but straight to the hands of mid-wicket, but it's a free hit delivery. Nothing much worried about that catch, but they got a single for that, and with that single, Cobra Namuza 34 for the loss of 4 wicket. एक Ertiga car ang Madeira Rabbaila sir K20 4275. So from the Machili end, the Prasad will going to continue. Hitesh will going to face his delivery of this over. This time again played it gently down to cow point region. Good placement as well. Excellent thinking there from Hitesh. The bowler absolutely uprooting all the... K20 4275 Ertiga ang Madeira Rabbaila sir Daikonta ek driver ane car card ka mundu ngete. Okay. 36 for the loss of 4 wicket. Hello. तशीच फूड कोर्ट अंतू फ्रेश वाटरमेलन ज्यूस रेडी केलेलो आसा दैकोन ग्राउंडर आशिल्ल्या पुरे प्लेयर्स आनी वाटरमेलन ज्यूस पिवपाक म्हूण रिक्वेस्ट करतास. .36 for the loss of 4 wicket. Again from the far end, right up over the wicket. Coming down the track, lofted that one, and fielder will going to get, drop the catch, straightforward catch. My goodness, the fielder in the deep long off, maybe the Prasad, the fielder in the deep long off, taken that very lightly. The pays the penalty for that. Unbelievable. It's a straightforward catch for the fielder. Very lucky escape here for Hitesh. It's 37 for the loss of 4 wicket. Over number 4 is in progress. Over number 4 in the sense the 37 is a good score on the board for the team Karshit Manjeshwar. This time wanted to go for the reverse sweep appeal for something, but nothing has happened. Then it's going to be a leg by, going to miss the leg stump. And one more addition, 38 for the loss of 4 wicket. In the over number 4 is in progress. Again played it very nicely down to fine leg region for a single, with the addition of that single. Cobra moves on to 39 for loss of 4 wicket. And a very good tournament is in progress in the name of Tank Cobra. 2025 season 4 is under progress. All the teams are they're trying to get into the playoff round. For that they have to perform very well in the league stage matches. This time Manor drives that one firmly down to mid-wicket. All good stop by the fielder, isn't it? Made an adjustment. Otherwise, ball is almost looks like the fielder defeats the fielder. That got a little bit extra bounce while he tried to get the ball. But he managed very well to get the hand into that. And the wicket over number 4, which is comes to an end. It's 41 for the loss of 4 wicket after completion of over number 4.
Sri Varada Panduranga takes on Jai Hind Games Club. So that I request both the teams, the captain, please be reported for the tossing ceremony. And after the tossing ceremony, have to register your player's name in the Cricket Heroes in our commentary box. This time, oh, might be that ball is, looks like whether it's going to be a caught behind or not. The appeal is going on. The both umpires are not interested. Wicket keeper. KCG 4275 car Madhe Rabbaila the car ka. Umpire have to clarify whether yes it is cleanly taken by the wicket keeper. The umpire have to clarify whether the wicket keeper taken neatly or it is on bounce. But square leg umpire has got a good view that the wicket keeper taken in the pull, not in the bounce, but it's neatly taken by the wicket keeper behind the stump. So one more wicket is back in the pavilion. It's 41 for the loss of 5 wicket in the over. Number 5 is in progress. Ritik, the batter, back in the pavilion. One more wicket back in the pavilion in the form of run out. And wickets are tumbling here of team Karshit Manjeshwar. It's 41 for the loss of 6 wicket in the over. Number the 5 in progress. Pasi food court onto watermelon juice and enjoy tangala soft drinks sir. Vehicle pure players and angal jana juice po kamundan gatas. So last over is in progress and the batter coming to the middle. Sudhir with the jersey number 99. Manahol going to take the strike. AB, right arm over the wicket balls. Lovely delivery, fantastic delivery indeed along the carpet. Chance of run out in the strikers and umpire asking for the third umpire for the decision here. And straight away umpire Dhanush goes upstairs and just sending that message to the third umpire to see whether the batter is safe or not. It's definitely going to be a very close one for the third umpire to decide whether the batter is safe or not. Wait and see. The batsman looks like he's short of his crease is gone. The out call from the third umpire. The wickets are tumbling here of the players of team Karshit Manjeshwar after they got a flying start. They are losing the wicket in the frequent intervals. The bowler brought into attack in this last over. Adi Bhatt. Yes, the time exceeds by the fielding team and they have to bring one fielder inside the ring. Already they got and 6 fielders inside the ring. The right arm over the wicket. Subbu, the new batter in. And 4 delivery ball. Excellent 4 delivery from Adi Bhatt. Excellent display of the slow leg spin delivery. And using his feet, played it nicely down to deep long on 42 for the loss of 7 wicket. Last delivery of their innings is coming up. And Manohar will go in to face that last delivery of their innings. Good comeback by Tank Cobras bowlers after they conceded so many runs in the first 3 overs. But last 2 overs definitely belongs to Tank Cobra. Especially the Prasad bowling. This time he given the finishing touch for the innings. What a magnificent slack
pull that one very nicely down to deep square leg boundary for a 6. And Dikshit in his own style, he signaled that is going to be a 6. And with that 6, the team Manjeshwar Karshit set a target of 49 for the team Tank Cobras B to win this match. It's going to be one more scoring match here for the team. And Manohar remains unbeaten with excellent batting performance from his bat. And altogether, it's going to be the very good total set by the team. Karshit Manjeshwar, the 49 going to be a target for the team, and wait and see how well the team Tank Cobras B will going to chase this total. We take a short break here in the commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 49 the target for Tank Cobra, which said by Karshit Manjeshwar, and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. The openers आरंभिक बल्लेबाज दोनों इस वक्त क्रीज पर मौजूद बाला और सूरज, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो. हेमंत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और जहां तक सवाल है उनकी पारी के पहले गेंद का, तो हेमंत इस वक्त पहली गेंद लेकर तैयार. द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप.
Hemant to Bala. 49 they have to score in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 9.80 runs per over. और पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त 0 पर रुक चुका है और एक बार फिर से हेमंत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार उछाला मिड ऑन की दिशा में, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। तो इस वक्त 2 गेंदे फेंके जा चुके हैं और हेमंत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर खेला। बेटर फील्डिंग, फैंटास्टिक स्टॉप मेड बाय द सीनियर प्लेयर ऑफ देयर साइड। मिड विकेट पर जो इस वक्त उनके सीनियर खिलाड़ी जो खड़े हुए थे, बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने रोका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। टैंक कोब्रास बी द्वारा 1 रन 90 अंक से नुकसान किया और सूरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज हेमंत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, एक्स्ट्रा कवर, गली और शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। और गेंदबाज हेमंत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑन साइड पर क्विक पीस ऑफ वर्क, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और अंपायर जो कि विकेटों को सही करते हुए। और मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत यहाँ पर प्रगति पर मुकाबला इस वक्त जारी है। आकाश स्ट्रीट फ्रेंड्स मंजेश्वर और टैंक कोब्रास बी के बीच। और गेंदबाज हेमंत अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। वाइड का इशारा, अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए गेंदबाज हेमंत और इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ ओवर द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूरज के लिए। सुबह का वक्त 10:55 बज चुके। प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए। और दूसरा मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। हेमंत मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार भाग्यशाली रहेगी गेंद ऑफ रन का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज दौड़ा है पिच के आधे तक टू द मिडल ऑफ द पिच और कोई मौका नहीं उन्हें इस वक्त वापस लौटने का। नॉन स्ट्राइक रेंज पर आसान सा रन आउट इस वक्त करते हुए गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद। तो बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं बाड़ा। और जहां तक का सवाल है इस वक्त रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है बाड़ा का और पहला विकेट गिर चुका है। इस वक्त स्कोर है जबकि 3 रन, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गौतम नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। पहला विकेट पिछले गेंद पर खो चुका टैंक कोब्रास भी बाड़ा के रूप में। और गेंदबाज हेमंत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो पहुंचा इस वक्त नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटकाए जरूर लेकिन गेंद से नहीं अपने हाथों से। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 on the board for losing 1 wicket in the over number first in progress। एक लंबा ओवर इस वक्त गेंदबाज हेमंत द्वारा इस वक्त प्रगति पर। केवल 2 मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। पावर प्ले के अंतर्गत लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा, लेकिन लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और हेमंत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए।
सामना करते हुए सूरज। हेमंत की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद। ये गेंद bowled out, just gone for a big one this time, lost his midland leg stump, bills are disturbed and that is the end of today's. What a fantastic delivery bowled by the bowler हेमंत, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आते हुए गेंद को विकेट से हटते हुए इस वक्त ऑफसाइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। नाउ आई मस्ट से टैंक कोब्रास बी आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 3 for the loss of, in fact it's a 5 for the loss of 2 wicket. राघव नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए so 5 on the board, 2 wickets down and they are looking in trouble. In fact टैंक कोबरा भी और नए बल्लेबाज राघव इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सुमित गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अपनी कोटे की पहली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, I just wanted to play that one too early this time. फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद सीधे पहुंची शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फुल टॉस गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं सुमित और इस वक्त विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें इस वक्त भेजा जा रहा है मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। और ऑफसाइड पर सिर्फ 2 मात्र फील्डर 20 के दायरे के अंदर मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन और एक्स्ट्रा कवर और गेंदबाज इस बीच सुमित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे धीमी गेंद थी और धीमे गेंद को उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, टैंक कोब्रास के बल्लेबाजों को इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है यहाँ पर कम बैक करने के लिए। दर्शकों की संख्या इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ इस वक्त बढ़ती हुई सुबह के 11 बज चुके हैं और सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और अपने ओर की अगली गेंद लेकर सुमित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, गेंद पहुंची इस वक्त फील्डर मौजूद और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड and 2 wickets lost for Tank Cobras B. Still the batsmen of Tank Cobra B searching for the right track. सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन इस बीच नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 6 on the board, 2 wickets lost in the over number 2 in progress. Good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Car Street, friends Manjeshwar. और ये गेंद बेहतरीन गेंद, absolutely fantastic delivery, almost came along the ground. और गेंद को उछालने के प्रयास में चूंकि भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों से कुछ दूरी पर इस वक्त निकलते हुए और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाज सुमित एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल, स्लाइट बिट ऑफ फंबल देयर, लेकिन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 overs completed, 8 on the board, 2 wickets lost। जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो टैंक कोबरा ने इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का आयोजन किया, न सिर्फ
खेलों में, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि समाजमुखी कार्यों में भी टैंक कोबरास कई सालों से अपना हाथ बटाता था। वह इस श्रृंखला में हर छक्के के लिए 300 रुपये का नकद पुरस्कार जो टैंक कोबरा ने घोषित किया है, और वो रकम जो कि सेव लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर नोबल कॉस्ट इनको जाएगी। और निश्चित रूप से पिछले साल 45,000 रुपये जो इकट्ठा हुए थे, उन 45,000 रुपये को एक कॉलेज की छात्रा, कॉलेज की लड़की के लिए उनके शिक्षण के खर्च के लिए उन्होंने योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन समाजमुखी कार्य जो कि टैंक कोबरा से यहाँ पर करते हुए, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में और भी कई समाजमुखी कार्य टैंक कोबरास करें और भविष्य में आने वाले दिनों में उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से इस मैच की ओर बढ़ते हैं। मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नितेश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछालना चाहता, इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। नितेश गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछालना चाहा, एक बार फिर से चूके है और रन से एक बार फिर से नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर टैंक कोबरास के, और इस बीच गेंदबाज नितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहे, एक बार फिर से चूके डॉट गेंद वाइड फेंकने के बाद 2 लगातार बेहतर गेंदे है इस वक्त गेंदबाज नितेश यहां पर फेंक चुके हैं, और बल्लेबाज को कोई अवसर उन्होंने प्रदान नहीं किया है कोई रन बनाने का इन पहले 2 गेंदों में। और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। मछली एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, एक बार फिर से चूके, हालांकि 2 कदम आगे जरूर निकले थे, गेंद को उछालना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद उनके पैरों पर टकरा कर बैक टू द बॉलर की दिशा में जाते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बीच नितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। सिर्फ 9 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ 49 रनों का लक्ष्य, 49 द टारगेट, दैट मींस एग्जैक्टली 40 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। और नितेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद एक बार फिर से चूके, पैरों पर गेंद टकराए, रन इस वक्त लेना चाहते हैं लेकिन एंड मौके पर, और इस बार खुद फ्रस्ट्रेशन इस वक्त बल्लेबाज के चेहरे पर नजर आता हुआ और पेविलियन की ओर वो इस वक्त जाते हुए। तो ये विकेट यहां पर गिर चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रगलिंग इनिंग्स बल्लेबाज गौतम की समाप्त हो चुकी है, और एक और विकेट यहां पर टैंक कोबरा भी खो चुका है। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, इन फैक्ट इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। One of the Pandurangar won the toss against Jai Hind Karkala in the next match, and because of the request all the players to please get ready for the next match. तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, वरदा कारकला ने टॉस जीत चुका है जय हिंद कारकला के खिलाफ अगले मैच में। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहें। तो इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका, प्रसाद नायक इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, शॉर्ट स्कोर लेग पर, स्वयं विकेट कीपर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे लेग बाय के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। The scoreboard moving up to double figures now, that means on 10 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Still the problems are continuing here for the batsmen of Tank Cobras. We still have a long way to go. That means still they have to score 39 more runs for victory in remaining 2+ overs. और गेंदबाज इस वक्त नितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर था विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ कटर गेंद को उछाला, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर मौका, फील्डर गेंद को लपकने में सफल हो चुके हैं। उछाला था जरूर लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर मौजूद थे
उन्होंने कोई गलती इस वक्त नहीं की। और जहां तक सवाल है विकेट का, तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। टैंक कोब्रास बी आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 10 for 4। तो 8 प्रतिष्ठित टीमें, 8 franchise teams are participating in this tournament, prestigious cricket tournament. 8 prestigious franchise teams are participating in this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy Season 4 2025। और 4 टीमों के 2 गुटों में 8 टीमों को बांट दिया गया है। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो ये मैच है जो कि मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है पवन, और पवन इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज नीतीश। मनोहर गेंदबाजी शुरू करते हैं। बॉल आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इन मिडल ऑफ स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड। मच स्ट्रेटर लाइन फ्रॉम द ऑफ ब्रेक बॉलर। और इस गेंद की सीधेपन को समझ नहीं पाए, करारा प्रहार करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर टकराते हुए। वन मोर विकेट फॉल ऑन इट्स स्ट्रेंथ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। तो नए बल्लेबाज आदि भट्ट इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी, मैजिकल बैटिंग ही इस वक्त टैंक कोब्रा बी को इस मैच में वापस आ सकती है। फिलहाल एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज कार स्ट्रीट फ्रेंड्स मंजेश्वर के। 39 runs more, still they have to score for victory in remaining 11 deliveries। सिर्फ चौके या छक्के ही अब यहाँ पर टैंक कोब्रास बीच को इस मैच में वापस ला सकते हैं। इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और रन्स यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मनोहर जो कि 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदि भट्ट जो कि सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड। और इस गेंद को समझ नहीं पाए स्ट्रोक्स खेलने में चूके आदि भट्ट, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और मनोहर फिर से एक बार तैयार, यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लंगोन पर, गेंद पहुंच चुकी है। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त मनोहर गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद अंदर की ओर आती है, गेंद को जगह बनाकर खेलना चाहा लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया। रन से नहीं मिलेगा। फिर से एक बार गेंदबाज मनोहर बाएं हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद उछाला स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। शायद फील्डर वहां पर मौजूद थे, गेंद तक पहुंच सकते थे। जिस तरीके से गेंदबाज के चेहरे पर हताश मनोभावना नजर आई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन थोड़े से दूर, और गेंद को रोकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 overs completed. Now just the last over left. 34 runs required from the last over. 6 deliveries. Almost 6 sixes required in the last 6 deliveries. या फिर 5 छक्के 1 चौके की जरूरत इस बचे हुए अंतिम ओवर में। सुबह गेंदबाजी शुरू करते हुए मछली एंड की ओर से, और अंतिम ओवर, आखिरी ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टैंक कोब्रास बी की पारी में अंतिम ओवर शुरू होता हुआ। द लास्ट ओवर स्टार्ट, 34 नीडेड फ्रॉम द लास्ट ओवर, दैट मींस इन रिमेनिंग 6 डिलीवरीज। और हर स्ट्रोक्स को सीमा रेखा के बाहर कन्वर्ट यहां पर करना होगा बल्लेबाज को, अगर इस मैच में, इस ओवर में, अंतिम ओवर में विजय दर्ज करना है तो। और गेंदबाज सुबह पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, just a single he got, 16 on the board for losing 5 wicket. Now 33 required from remaining 5 balls. अगर 5 गेंदों में 5 छक्के भी लगाते हैं तो भी
इस वक्त अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंके जाए। अगर गेंदबाज कुछ नो बॉल या वाइड फेंकते हैं इन पांच गेंदों के दरमियान तो कुछ हद तक कमबैक करने का मौका जरूर है। इस बीच गेंद को ड्राइव करते हैं, विकेट से हटते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक बार फिर से एक रन मौजूद, मनोहर फील्डर मौजूद थे और इस बीच एक रन का इजाफा। 17 ऑन द बोर्ड, 5 विकेट्स डाउन नाउ, 32 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 4 डिलीवरीज। और इस बीच चूंकि बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, one more wicket fallen, Adi Bhatt departs and now 6th wicket down for 17, and now it looks like just formalities now remaining in this match if any miracle things will not happen in this remaining 3 deliveries. 3 balls, 32 runs required. Because the new batsman is now comes out to the middle. 3 balls is left, 32 runs required. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुब्बू, सामना करते हुए विकास, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, स्टंप्स पर एक बार फिर से गेंद टकरा चुकी है। कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर सुब्बू, नाउ ही इज ऑन अ हैट्रिक। Just 2 balls left, 32 runs required. Just formalities now remaining in this match. प्रसाद न्यू बैट्समैन और हैट्रिक का सुनहरा मौका इस वक्त सुब्बू के लिए। सो सुब्बू इज ऑन हैट्रिक एंड द हैट्रिक बॉल्स कम फ्रॉम हिम। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ड्रिवन, can't find the gap और डॉट गेंद। नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमेनिंग, 32 runs required. And the last ball of the match is now coming up. Subbu to Prasad. Beamer delivery, no ball. Wide, no ball in fact, and a free hit delivery. 18 on the board for losing 7 wicket. Now still last ball left. और सुब्बू इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रसाद के लिए अंतिम गेंद। Driven down to long on, just a single he got. So that's it. 29 runs, a comprehensive victory for Car Street Friends Manjeshwar against Tank Cobras B, and with that 29 runs, big margin victory, they back the complete points. So match number 2 of this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy Season for 2025 has been came to an end. And now the match number 3 is now going to start with just short while between 2 Karkalas teams will clash each other in the next match, and that match is now starts within just a short while. So man of the match of this match award goes to Subbu, bowled fantastically, conceded just 2 runs and grabbed 2 wickets in his 1 over quota. And Subbu is now adjudged the man of the match for his fantastic bowling performance. So I request Mr. Subbu to please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it for the match number 2, and match number 3 is now coming up exclusively right in front of you within just short while. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। तशीच कार स्ट्रीट मंजेश्वर या टिमाच्या सुब्बू पूर्णिमाच्या मॅन ऑफ द मॅच स्टेजर येवका म्हणून निमून घेतो सर।
कार स्ट्रीट फ्रेंड्साच्या सुबू स्टेजर येऊ का मॅन ऑफ द मॅच घेवच्या का तुमका गेस्ट लागतं असं सुबू आमका या शकेक थंड ज्यूस स्पॉन्सर केलेलं तसला एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक मालिक जे असेल विनायक अण्णानं तांकां मॅन ऑफ द मॅच देऊ का एन्जॉय सॉफ्ट ड्रिंक्स मात नाही क्रिकेट आणतो कंचे एक बिड्डिंग टुर्नामेंट जेलारी कोड्याल आणतात एन्जॉय टायटन्स म्हणून टीम पळयत आसा अजय मालिक त्यांनी कदने जीएसबी सपोर्ट क्रिकेटाक सपोर्ट करता आसला विनायक अण्णा I request extra players of both the teams please be reported here immediately. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Gopi. Welcome to the match number 3. I request the two teams please make it fast. Only 2 matches which is completed. Time is exactly 11 past 20. So your cooperation is much required to continue the match quickly. The match number 3 will be played between Sri Varada Panduranga versus team Jai Hind. And after winning the toss, captain of SVP, they elected to field first. So that opening batters are in the middle for team Jai Hind. Karthik and Aniruddha are the opening batters are in the middle. And Vishwa will go into start the proceedings from Tank Cobra end. The first over, the power play will go into start here. In the power play, we are seeing the two fielders in the deep, long on and the long off. The fielder down at short fine leg, one at square leg behind the square, one at short mid wicket. There is the mid on. And one fielder down at deep long on, little bit wideish. And altogether, that is onside field, 5 fielders on the onside. In the offside region, fielder at backward point, one fielder at cover point, one at extra cover. And one fielder down at deep long of 4 fielders in the offside region. Umpire for this match, Divit and umpire Ravi Uppala. The first ball, the nicely driven right in the gap towards the mid-wicket region. That will go into a first boundary. Nicely driven in that occasion. Little margin for error when they are bowling in the power play. The fielder is down at deep long on, but no one there in the mid-wicket. And he just got that one right from the middle of the bat. Played it between mid-wicket and the short square leg. And no chance for that long on fielder. It's a long way to go for him to cover that area. And what a good start here from the batter Karthik is off the mark with the boundary. Vishwa bowling away from us. Right, over the wicket, driven nicely, but protection there in the deep long off region, so that Karthik have to settle for the single. Jai Hind has got a start here through Karthik. He's got 5 already from 2 balls, and that brought Aniruddha into strike now.
he will go into face his first delivery and third delivery of the power play over. Oh, lovely delivery. This time almost over pitch delivery after 1-2 bounce. Ball which is coming into the a little bit correction is ball in the leg spin delivery. The batter tried to make a little bit room to play the shot. Ball just passing between his bat and pad. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Vishwa was driven down to long on. The protection there in the deep long on so that he had to settle for the single. And Anirudh also got his first run from the bat. And total score now moves on to 6 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Vishwa. Ball system lofted straight down the ground as straight as an arrow. And he got the distance as well. Ball almost hitting the commentator box. Just under the missing the commentary box here. Absolutely fantastic struck. Straight down the ground over the head of the bowler Vishwa. Score jumps into 12 on the board. Again, it's going to be one more. Better than the previous one. The same area he's choosing. He's very good in that stroke. Hitting the ball very straight. And effortless 2 cricketing stroke. Complete that over with the expensive one. 2-6 and the boundary. Altogether 18 runs coming from this over. The Karthik, the man, hitting that 2 massive sixes and 1 boundary. And he's got a flying start here for the Jai Hind. 18 without loss of any wicket. You're watching in the match number 3 of this prestigious Tank Cobra Trophy Season 4, which is proudly presented by Tank Cobra. Every 6, they will going to give 300 rupees. And that is only for the noble cause. And Save Life Charitable Trust, that amount will go into remit for that charitable trust. And for the social work, the last year they contributed rupees 45,000 for that student who were studying in a college, those who are financially backward, and they are absolutely did a great job. So again the first delivery and dropped by the cow point fielder in the relegation. And the first ball of the over number second ball, bowler brought into attack from the Machile end, Guru. Anirudh got his run, 19 on the board. This time up and over and safely played it down to deep cow point region. Ball will not going to travel to the fence, but enough time for the batter to complete the 2 valuable runs. Karthik looking in explosive mood. Even though after that power play, just continuing his stroke making, even after that power play. Even the 5 fielders out there in the deep, preventing the boundaries. So 2 in the off and 3 in the on. 21 on the board. This time he played it exquisite. Lofted extra cover drive and clearing the boundary line. Not only is he clearing the boundary line, but he is clearing the ground as well. What a glorious lofted extra cover drive. It's not an easy stroke to play in the books when you're playing that inside out cricketing stroke. What a fantastic struck came from the bat of Karthik. This is a third 6 came from his bat. And scoreboard jumps into 27 on the board. Guru again bowls far outside the line of off stamp. Once the batter Karthik wanted to go for the mighty drive, quickly seeing the line of the ball, getting a bat away from the line, and rightly so, white call by umpire Ravi Uppala. 28 on the board. Oh, this lovely line, good line indeed. Karthik just wanted to drag the ball from outside the line of off stamp. Just is thinking that might be a short pitch delivery, but a little bit early into that stroke, and ball is got a little bit bat inside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump gathers the ball, Manjunath, and back to bowler. This time he got that one right from the middle of the bat, and that will going to travel straight to the hands of deep long on. My goodness, when he played that stroke, there is no wind at all in the ground. That might be the problem, that Karthik hit that one pretty well, but fails to get the distance. This is going to be a disappointment end here for Karthik after hitting that one pretty well. Just have a look at that one in the replay. Exactly hit that one right from the middle of the bat, but he couldn't get past that deep long on fielder. The wicket number first, which is back in the pavilion. It's 28 for the loss of 1 wicket, but he played a small cameo of
excellent batting performance. He scored 25. That means almost 90% of the runs which came from the bat of himself. The batter has played some explosive cricketing strokes in this innings. Bowled him, cleaned him up, back-to-back 2 wickets. Guru bowled a beautiful off-cutter. The batter is a new batter, fresh leg. Srinivas has got no clue whatsoever. He just exposes all stumps. And the ball which is coming from the outside the line of off stump into the batter. He missed the ball and ball hit the stumps. The 2 wickets in the 2 balls of Guru. And after completion of over number 2, total score of Jai Hind, it's 28 for the loss of 2 wickets. They're going exactly 14 runs per over. It seems to be a good start here for the team Jai Hind. UTC trading. आज मालिक जाऊन अशिला संदेश आणि ग्राउंड राहिला सा संदेश आणि स्टेजला येऊ का म्हणून म्हणून घेता सा UTC ट्रेडिंग संदेश स्टेजवर येऊ का तशी ती फूड कोर्ट अंतू बच्चांगा पपस पाळ पाइनएप्पल फ्रेश कट फ्रूट्स रेडी झाला सा दईकोन ग्राउंड अशी प्लेयर्स आणि पोळाच्या स्पेक्टेटर्स फूड कोर्ट आवचेनो Thank you very much. And Tank Cobras trophies providing everything in this particular tournament. The hospitalities, there is nevertheless in this hot condition, they are providing the juices, watermelon, making this hot condition very cool. Thank you very much for the organizers. So next match, Padu Tirupati Cricketers takes on team Classic Salmar Karkal. So that I request both the teams' captain, please get ready for the next match. Driven nicely towards a deep long on region, protection there in the deep so that the batter have to settle for a single. With the addition of that single, Cobra moves on to 30 for the loss of 2 wickets. 2 batters out there in the middle, 2 fresh legs, and of course Anirudh is the man, is came as opener for the side. Will going to face the next delivery. Oh my goodness, ball is not landed to the wicket keeper. The once it looks like going to be a chance for the wicket keeper Guru there, but ball is almost falling short of him and no run scored. This time played it very straight. Will it going to be a no good piece of fielding there by the fielder? Stops the runs. And the great attempt there by the fielder in the deep long off region, almost covering the ground and saving the boundary for his team. And Anirudh will going to settle for the single. 31 for the loss of 2 wicket. Dhanush. Away from us, lovely delivery. That ball is absolutely missing the stump by Whisker. Almost very close to that off stump in the negation. Batter just tried to go for the off drive by exposing his stumps. Luckily that ball is just missed the stumps by inches. 31 for the loss of 2 wicket. And over number 3 is in progress. Jai Hind has got a very good start in the beginning. Karthik is the man, is scoring some important runs from his bat. Once he back in the pavilion, slight a bit of a comeback from this time. He hit that one pretty well into the commentator roof. High and handsome, short pitch delivery all the time in the world for the batter to go for that big shot. Little margin for error when you're using the ball which is hard in the nature, and Raghavendra dispatching that one into that commentator's roof for the huge one. And with that huge stroke, scoreboard now jumps into 37 for the loss of 2 wicket. That 1-6 really disturbing the economy of the bowler. Dhanush bowled very well, the 5 deliveries, but 1 loose delivery is good enough for the opposition team once again to grabbing that run rate what they really wanted. 3 gone, it's 37 for the loss of 2 wicket. So what we are seeing, some high scoring game. It's going to be a batting paradise, UCG cricket ground. Mainly because the condition is very good. Ball nicely coming to the bat because ball which is hard in the nature. And that's why little margin for error for the bowler. Again, played it nicely down to deep long on.
and one more single been added. Total addition of their singles score moves on to 38 for the loss of 2 wicket. So the bowler will going to continue. So already we are the Tank Cobra provided in the food court. Those who want to have the fruits and this is available in the food court, and please make use of that, all the players, to make this condition a little bit cool. Watermelon, the pineapple and papaya. The white call by umpire. With the addition of that extra score, moves on to 40 for the loss of 2 wicket. Sam, they are appealing, but umpire not interested. Leg by call by umpire. One more addition. With the addition of the leg by score, moves on to 41 for the loss of 2 wicket. Rakesh from the far end. Again, the ball just passing between bat and pad. Opportunity of run out in non-strikers, and Shiva Prasad, the experienced campaigner, down at short fine leg. Couldn't manage to return the throw quickly. Again, wanted to go for a big swing of the bat. Misses the line, but umpire will not going to miss the opportunity to call that wide. Runs are coming very freely for Jai Hind. His time hammers that one. One bounce collected by the fielder. Excellent stop. Good technique which is implemented by the fielder at mid-wicket. He quickly realizing that it's not easy to take the catch, so it just managed to stop the boundary. 44 for the loss of 2 wicket. And the bowler Rakesh bowls lovely delivery, but this time chance of run out. Appeal for run out. Umpire says not out. Anirudh just managed to reach his home by call by umpire. One more extra. 45 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. You need to come back here for the Srivarda Panduranga. Have to get some good deliveries because already 45 views total on the board. Over number 4 is in progress. This is a wide area where there is no excuse at all. The 46 need to reball. Extra runs also, extra deliveries. Always frustrate the captain of the fielding side. From the Machili end, right arm over the wicket. Bowled him, cleaned him up. Almost exposing his stumps, going for expansive drive. When you are trying for that kind of cricketing stroke, you have to connect the ball. If you miss the ball going to hit the stumps. You miss, high hit. Good finish for the over number 4 as well by the bowler Rakesh. 4 gone. It's 46 for the loss of 3 wicket.
Radhakrishna is the new batter in, and Vignesh, the new bowler, starts with a lovely leg spin delivery, just around outside the line of off stump, and Raghavendra loft on it correction. The batter has got the fielder in the deep long off. He just wanted to get the distance but failed to do that. So he's got the elevation but fails to get the distance. Lofted that one. And Vignesh got the wicket here. Excellent line and length there from the young man. It's not easy to come and bowl in the last over when the batters are looking for the acceleration. This young boy absolutely did a great job to send the batter back in the pavilion. Raghavendra gone. It's 46 for the loss of 4 wickets. Last 4 deliveries left. Sanket, right above with wicket balls. The correction, Vignesh this time. My goodness. Have a look at the batter. What is doing here? Absolutely unbelievable stuck, isn't it? After he got the switch hit, he's lost his balance, but managed to send that one out of the bound line for a maximum. 50 comes up here for the team Jai Hind. They are cruising towards a big total. What a hit there from even the ball is absolutely wide outside the line of off stump. The batter managed to play that switch hit quite brilliantly. Again he repeats the stroke. This time in other way. Down to deep backward point region for 4. After that very good start from the bowler. They are leaking the runs in this. Last 2 deliveries. 10 runs came for the team Jai Hind. The 56 for the loss of 4 wickets. Wide outside the line of leg stump. One more extra. 57 for the loss of 4 wickets. Vignesh bowls. This time missed the line. Wicket keeper behind the stump, questioning over the umpire, raising his finger. And Vignesh at last managed to send that man back in the pavilion. 57 for the loss of 5 wickets. So now last delivery of the innings is coming up of Jai Hind. Vinay Bhatt will going to face that last ball. Only the 2 deliveries, which is, I think, this is not a bad line, but batter hit that one pretty well to get that 6 and a bounty in this over. So last delivery, it's going to be a dot ball. And that's it. The team Jai Hind will going to finish with the 57 and they set a target of 58 to win the match for SVP Shri Varada Panduranga. And wait and see how Varada Panduranga will going to get this total. Of course, even though it's a big total to chase down, but Varada Panduranga has also got some good players in the side. The player like Guru, player like Shiva Prasad, they got some very good batting department as well. So we are just looking forward some great battle between these 2 teams to get the victory here. And wait and see how well SVP will going to reply here for the huge total, the huge target which is set by the team Jai Hind. And that means that the batters of Jai Hind did the job. Now all up to the bowlers of Jai Hind to justify the effort of their batters. We'll take a short break here. And after a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone in Hindi language. Thank you. हॅलो हॅलो नेक्स्ट मॅच पडुतिरुपती कारकाळा आणि क्लासिक सालमार कारकाळा 2 टीमाचे कॅप्टन आणि स्टेजा लागी टॉस होवका म्हूण निमगून घेता आसा क्लासिक सालमार कारकाळा आणि पडुतिरुपती क्रिकेटर्स कारकाळा 2 टीमा कॅप्टन आणि स्टेजा लागी टॉस होवका
धन्यवाद सतीश. So a huge target in front of SVP Ujire. 58 the target for them, set by Jai Hind Karkala. At batted first, Jai Hind Karkala managed to score 57 runs for the loss of 5 wickets in the simulated 5 overs, and now they set a victory target of 58 for SVP Ujire. And their innings now going to start exactly 11.60, the required run rate for them at this situation. Akshay and Shiv Prasad. Shiv Prasad the striker, Akshay the non-striker. Akshay striker in fact. Shiv Prasad the non-striker. Meantime the bowler starts the fresh proceedings. Little fellow is now going to start the fresh proceedings from that side, and that means from the Machli end. Radha Krishna, the bowler, is now going to start the first over, and we are just waiting for the first ball of SVP Ujire's innings. 58 the target for them. 58 रनों का लक्ष्य, और अंपायर ने इशारा किया कि उनकी पारी की शुरुआत और पहली गेंद लेकर इस वक्त राधा कृष्णा गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जबकि अक्षय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन का इजाफा और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. तो 3 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. 3 वाइड्स एडेड टू देयर टोटल, और इन 3 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है एसवीपी उजिरे के लिए. 3 रन बिना किसी नुकसान के, और राधा कृष्णा एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट अक्षय के लिए गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद को इस वक्त उछाला है खूबसूरती के साथ लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. अक्षय इस वक्त पहली गेंद को वो सीमा रेखा से बाहर उछालने में सफल. बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ लंगोन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ अक्षय अपना खाता खोल चुके हैं. नेक्स्ट मैच पडु तिरुपति क्रिकेटर्स टॉस विन जाओ फील्डिंग सिलेक्ट केलेला सर. तो इस वक्त राधा कृष्णा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, again a same treatment, this time even bigger, even squarer, consecutive sixes for Akshay, and he just looking on fire. 2 छक्के लगातार इस वक्त अक्षय जड़ चुके हैं, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त जो बेहतर शुरुआत की जरूरत है, 2 विस्फोटक, जो एक्सप्लोसिव, जो धुआंधार शुरुआत की जरूरत है, वो एक्सप्लोसिव शुरुआत यहां पर अक्षय दे चुके हैं लगातार 2 छक्कों की बदौलत. जो कि पावर प्ले इस वक्त जारी, केवल 2 मात्र फील्डर बीसीएस के दायरे के बाहर तैनात, और राधा कृष्णा दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. 15 ऑन द बोर्ड या टू लूज एनी विकेट. और अगली गेंद एक बार फिर से स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑन फील्डर. इस बार गेंद को उछाला था लेकिन काफी ऊंचा नहीं, और लंगोन मिड ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और अक्षय सिर्फ 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 12 रन उन्होंने बनाए, 400 स्ट्राइक रेट, और छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन में वापस लौटते हुए, और 15 रनों के योग पर अपना पहला विकेट यहां पर खो चुका है एसवीपी उजिरे. निश्चित रूप से 2 छक्के जो बेहतरीन तरीके से अक्षय ने लगाए थे, उसके बाद वो एक बेहतर पारी की सूचना जरूर दे चुके थे, लेकिन पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, और अगली ही गेंद पर मिड ऑन पर कैच लपक देने के बाद वो पेविलियन वापस लौट चुका है. नए बल्लेबाज धनुष का आगमन होता हुआ. लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. बैटिंग पावर प्ले इज नाउ ऑन. इनफैक्ट इट्स अ मैंडेटरी पावर प्ले इज नाउ ऑन. और जहां तक सवाल है राधा कृष्णा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष के लिए अगली गेंद. ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया. स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, और गली पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर. 16 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और राधा कृष्णा इस वक्त गेंदबाजी करेंगे शिव प्रसाद के लिए, और अपनी पहली सही गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त शिव प्रसाद तैयार. और पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी है, और
राधा कृष्णा दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त शिव प्रसाद के लिए। इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर लूजिंग 1 विकेट। लास्ट टाइम इन दिस ओवर राधा कृष्णा कम्स बॉलिंग टू अ लेफ्टी बैट्समैन धनुष, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ड्राइव जगह बनाते हुए गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाया, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर फर्स्ट ओवर दिस एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट फॉर the batting side. SVP Ujire managed to score 18 runs on the board for losing 1 wicket after the completion of first over, chasing the victory target of 58 in 5 overs. That means 18 on the board, exactly 40 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means 24 balls left and 40 runs required. Exactly 10 runs per over the required run rate for them at this situation. The bowler starts a fresh proceedings from the commentator box end. That means from the टैंक कोब्रा एंड। इस वक्त टैंक कोब्रा एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए राघवेंद्र और सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, सूरज लगभग आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है और अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलोर का तापमान इस वक्त दाखिल हो चुका है आज का, और निस्संदेह भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए। और राघवेंद्र ओवर की पहली गेंद, इस बार धनुष के लिए ढीली गेंद, जरूर सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके, और वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इन फैक्ट राघवेंद्र full toss, lost it, and this time he's got the distance. It's a biggie. This is an outstanding struck. काफी ढीली गेंद थी और इस ढीली गेंद पर जो करना चाहिए था वही किया इस वक्त बल्लेबाज धनुष ने। इस गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और राघवेंद्र फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ढीली गेंद, इस बार एक बार फिर से गेंद को उछाला है डीप मिड विकेट पर, कैच छूट चुका है, कैच हैज बीन ड्रॉप्ड। मौका जरूर था, फ्लैटर वर्जन पर गेंद इस वक्त फील्डर के हाथों में आई जरूर, लेकिन आखिरकार इस गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल। 1 रन का इजाफा, 26 रन बन चुके। 26 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। राघवेंद्र एक बार फिर से, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा। 27 58 रनों का लक्ष्य, लंबा जरूर है लेकिन उस लक्ष्य का इस वक्त पीछा करते हुए काफी बेहतर तरीके से इस वक्त बल्लेबाज एसवीपी उजिरे के। तो जहां तक सवाल है अगली गेंद, इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक, ओह दिस कुड बी इन ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल, इनफैक्ट इट मिसेस। काफी ज्यादा गेंद घुमाव हुई थी, नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंदबाज का फेंका गया हुआ थ्रो इस वक्त स्टंप्सों पर नहीं टकराया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। तो इस वक्त 3 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये क्या, ओह दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, टर्न द लॉट, काफी घुमाव लेते हुए, टर्न लेते हुए इस वक्त बल्लेबाज को बीट कर गए इस वक्त गेंद। बेहतरीन गेंद थी इस वक्त गेंदबाज राघवेंद्र की। तो 2 बेहतर, आखिर के 2 गेंदें बेहतर फेंक चुके हैं राघवेंद्र और धीरे धीरे अपना लय रिदम यहां पर प्राप्त करते हुए। स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर। द स्कोरबोर्ड सेज एट 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग। और गेंदबाज राघवेंद्र गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिव प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन पर, फील्डर
गेंद तक पहुंचते हुए और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और राघवेंद्र इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धनुष के लिए यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद टर्न लेकर अंदर की ओर आई, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके बल्लेबाज धनुष और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 10 रन इस ओवर में बने। 10 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर एंड आफ्टर 2 overs still the equal battle is now on. 28 on the board, 30 required from remaining 3 overs. तो कंपैरिजन तुलना अगर की जाए तो 2 ओवर के बाद जय हिंद कारकड़ा ने बनाया था 28 रन, जबकि एसवीपी उजिरे भी बना चुका है इस वक्त 28 रन। तो कंपैरिजन स्टैंड द सेम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs। और 3 ओवर का खेल बाकी। 30 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 ओवर, दैट मींस इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। द रिक्वायर्ड रेट is on still stands on exactly 10 runs per over. So third over starts from the मछली end. अनिरुद्ध गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा शिव प्रसाद ने, लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया। विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस वक्त नहीं मिलेगा। हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है एसवीपी उजिरे के बल्लेबाजों के लिए। और अनिरुद्ध अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। शिव प्रसाद के लिए गेंद को उछाला इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर 6। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक। ढीली गेंद जरूर थी, लेकिन इस ढीली गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए उछाल दिया, गैप चुनते हुए। वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप इन विकेट के दरमियान छक्के के लिए शिव प्रसाद ने। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 on the board for losing 1 wicket. Now 24 to get in remaining 16 deliveries. The equation seems to be easier a little bit with that 6 which hit by शिव प्रसाद in the previous delivery. और अनिरुद्ध अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार शिव प्रसाद के लिए बेहतर गेंद थी। फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन। उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स नहीं मिलेगा। 15 balls left, 24 runs required. और गेंदबाज इस बीच अनिरुद्ध फुल टॉस, नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस फॉर द डीप मिड विकेट फील्डर, ही अंडरनीथिंग इट एंड ही नेवर मिसेस। सो शिव प्रसाद डिपार्ट्स। फुल टॉस गेंद जरूर थी, गेंद को उछाला जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं। और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका। शिव प्रसाद की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। सेकंड विकेट लॉस्ट। नाउ एसवीपी उजिरे आर 34 for 2. तो गुरु का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। और 24 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 14। और इस वक्त अनिरुद्ध मछली एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गुरु जो के सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर होता विकेट, लेकिन नहीं जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। What a fantastically effortlessly played by गुरु। और खड़े खड़े गेंद को डिस्पैच कर दिया इस वक्त। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन विद द विंड। हवा के रुख के साथ इस स्ट्रोक को खेला गया था। और गेंद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर फील्डर के सिर के ऊपर से निकल गई छक्के के लिए। 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 18 रन्स नीडेड, 13 balls रिमाइनिंग। और इस ओवर में अंतिम बार अनिरुद्ध गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद टॉप एज, मौका, लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात था। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए यहां पर लेना चाहते हैं, लेकिन अंतिम कार्य 1 रन के साथ संतोष। 41 on the board. 13 runs came from this over. Still the battle is now on. 17 to get from 12 balls. That means in remaining 2 overs. मैच लगभग अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। So 98 runs scored in this match in just 8 overs. और ये बात ये दर्शाता है कि ये गेंद जो इस श्रृंखला में जो इस्तेमाल की गई है बल्लेबाजों के लिए कितनी सहकारी है।
और गेंदबाज रवि किरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 12 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए विजय के लिए 17 रन टू गेट इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। पहली गेंद लेकर रवि किरण इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरु। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और जहां तक सवाल है इस वक्त जय हिंद कारकाड़ा के गेंदबाजों को, तो इस वक्त उन्हें चाहिए डॉट गेंदे और विकेटें यहाँ पर अपनी पकड़ इस मैच में मजबूत करने के लिए। यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे इस वक्त, गेंद वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, थोड़ी सी मिस फील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to their total, 15 now needed from remaining 11 balls. What a match is now progressing here. The match number 3 of this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy Season 4 2025. और रवि किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त काफी ऊंचा, लेकिन यहां पर देखना यह है कि मौका होगा या नहीं। और गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ आई मस्ट से नाउ एसवीपी उजिरे आर नाउ बैक इन द गेम। नाउ 9 to get from remaining 10 balls, and the equation seems to be much easier for them now. और गुरु के बल्ले से ये छक्का लग चुका है, एक बार straight down the ground, this time straight as an arrow. 6 number 2 in this over from Guru, and now just 2 runs required. In fact 3 runs required for victory. 50 comes up for SVP Ujire now. What a fantastic struck came from the bat of Guru. Second consecutive 6 came from the bat of Guru. And now they are just 3 to get from 9 to 11. The things getting much easier now for them. और इस बार लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा. 1 more run added. 56 now. Just 2 to get. What a fantastic batting display continuing here from the batsmen of SVP Ujire. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मौका कॉट एंड बोल्ड इस वक्त हो चुका है. गुरु की पारी समाप्त, छक्का लगाने का प्रयास किया, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और गेंदबाज अपने आगे को लाकर इस कैच को लपक लिया. सो फैंटास्टिक इनिंग्स केम फ्रॉम गुरु, एंड ही इज बैकिंग टू पेविलियन आफ्टर बीइंग स्कोरिंग 21 runs into his credit, including 3 sixes. हॅलो, फूड कोर्ट आणतो स्वीट कॉर्न रेडी केलेलं असं, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ग्राउंडर आशिल्ल्या पुरे प्लेयर्स आनी स्पेक्टेटर्सांना फूड कोर्टा वचून बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खावका म्हणून म्हणटास. So just 2 to get. New batsman is now comes out to the middle. Vittal इस वक्त, विनोद माफ कीजिए, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और यह गेंद इस बार स्वीप कर दिया इस वक्त विनोद ने. गली पर 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल. जस्ट अ सिंगल रन रिक्वायर्ड फॉर एसवीपी उजिरे फॉर विक्ट्री. और अब धनुष सामना करने के लिए तैयार, और इस वक्त गेंदबाज रवि किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, lofted in the air, chance and taken. So one more good innings came to end from Dhanush, and 1 more wicket loss for them. 57 for 4. And now 4 overs has been completed, and now just 1 run required from the last over. दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं. मैच नंबर 3 के अंतिम क्षण यहां पर गुजरते हुए, और कुल मिलाकर 16 मैचेस आज खेले जाएंगे. 16 मैचेस टू बी प्लेड, 12 लीग मैचेस, 3 प्लेऑफ्स, and after that a grand finale will be played on tonight in this beautiful UCG Urwa cricket ground, the lords of undrawn cricket. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस वक्त, और गेंदबाज मछली एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए विश्वा. सिर्फ एकमात्र रन की दरकार अंतिम ओवर में. पहली गेंद drives into the gap as well. That's it. 6 wickets victory for SVP Ujire against Jai Hind Karkal. They reach the competitive target
58 successfully with just 5 balls to spare. And with that victory, SVP Ujire back the complete points. So man of the match of this match award goes to undoubtedly the man who scored 21 runs from his bat. Guru of SVP Ujire adjudged the man of the match because of his fantastic batting performance of 21 runs, including 3 massive sixes. I request Guru please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it for the match number 3, and match number 4 is now going to start. Till then we'll take a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 4 की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. दुर्गा लॅबोरेटरीच्या राजेश किंवा महिलांगा काही स्टेज आहे का राजेश मामाना. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಂತಿನ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೆ. Padu Tirupati versus Classic Salmar Karkala. CSK. And CSK is opening. Thank you very much, Gopi. And we are into the match number 4 between Padu Tirupati versus CSK Classic Karkal. I request extra player of CSK, please be reported here. CSK ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Deepak and Arjun are the new batter in. Deepak is a non-striker. Prashant Pai non-striker. Signal coming from umpire Danush, and everything is ready here for the first over. The bowler Ashlesh, the bowler, the first ball, and a confident looking drive there from Deepak is off the mark with a single. One without loss of any wicket. Team Classic team Classic Karkal. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ lazy fielding there by the fielder at cow points for the batters. Complete that quick single, 2 without loss of any wicket. Fantastic tournament is in progress. So here again the bowler bowls, lovely delivery just around outside the line of off stump. Deepak just wanted to go for the expansive drive, quite understandable. The power play is in progress, so that he wanted to break that shackles in this first over, but missed it completely. Wicket keeper behind the stump did the rest. Again up and over, played it very nicely the wide of the fielder, misfielder by the fielder. It's definitely going to be a stoppable. One of the good fielder in the deep, Vignesh making the mistake. And pretty ordinary effort, isn't it, from the fielder. It's definitely going to be a stoppable one from the fielder. And the boundary coming here for Deepak as well. The 6 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Quite unfortunately, Ashwin, Ashlesh, the bowler, the unlucky bowler. Again, lovely delivery. Again, is keeping that tight line outside the line of off stump. The batter, Deepak, just wanted to go for one more expansive drive on the offside region, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump, Vignesh, did the rest back to bowler. Again, round the wicket, right arm. This top edge opportunity for the square leg fielder. Quite hardly he managed to grab that catch, isn't it? Once it looks like the ball is almost slipped out of his hand. And at last the first wicket is back in the pavilion of team CSK. The wicket number 1 is back in the pavilion, 6 for 1. Of course, fear of IPL, which is started yesterday. After that grand inaugural ceremony, the team Royal Challenge Bangalore with again the great same slogan, Isala Cup Namde, but I don't know whether it's going to be a slogan remains this year also. But they starts very well, defeating the defending champion Kolkata Knight Rider in their home ground. It's some fantastic batting display from Virat Kohli, and Salt has got a great start for Bangalore. Royal Challenge Bangalore, they're winning that match quite comprehensively. And today we are going to have the 2 successful teams in the IPL. Mumbai Indians takes on CSK, Chennai Super Kings. And that will going to commence in the evening. But here is a CSK, not the Chennai Super Kings, but it's a classic Karkal. Classic Salmar Karkal are playing against team Padutirupati. Again outside the line of off stump, and batsman tried to hit the ball pretty hard. By doing that, he hit that one a little bit early. Kiran doesn't get hold up that stroke properly. No run scored. Prashant Rai, in fact, is the batter. Rupesh, right arm over, they get balls. It's going to be a wide. Umpire Dikshit. Of course, we are seeing that flying fielders. But here is the umpire, the flying umpire, Dikshit. Absolutely spreading his wings with his own style. And again, second time, the Billy Borden of Mangalore. And 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Rupesh, right arm over the wicket balls. Swings, and it's going to be a maximum or not, wait and see. Lovely catch taken in the mid wicket. We are not having that kind of view from the community box what really happened in the deep. It might be taken just inside the boundary line. Just I want to see it in a replay. Short pitch delivery, almost dragged the ball from outside the line of off stump. Hit that one pretty well, but he's choosing one of the longest part of this cricket ground. And oh my goodness, absolutely fantastic catch. Good judgment. You have to put his eyes not only the ball, but he have to see the line, the boundary line as well simultaneously. Great judgment taken by the fielder at mid wicket, and umpire, after getting some clarification, has given him out. It's 8 for 1. 8 for 2, little correction. Wicket number 2 is back in the pavilion.
Welcome to Ratish, our scorer, the experienced scorer joining this Tank Cobra Trophy 2025 Season 4. So two brothers out there in the middle, Kiran and Karthik. And wait and see how well these brothers will going to help Classic Salmara Karkal to get some good score. The partnership is very important. After losing 2 wickets, wait and see. 8 for 2. Rupesh. Right about. Oh, the opportunity, the tough one here for the bowler. Because the new batter Karthik hit that one pretty hard. Back to bowler. Little time for the reaction. Just a fraction of second. Ball is came into him. Reacted quickly but not good enough to take the catch. After that fingertips. Ball went past his trying hands. 9 for 2. This time he lofted. Handsome looking drive. And that ball is hitting the commentator's box. And almost looks like the cameraman of King Sports. Maybe ball will go into coming to his camera. But luckily that ball just going a little bit high. Left off our commentary box and missing the cameraman as well. It's 15 for 2 in the over number second is in progress. Lovely shot came from the bat of Kiran. Again drives firmly down to deep long on. The fielder is there in the deep long on. He fields the ball, returns the ball. Ample time for the batter to complete the single. 16 for the loss of 2 wicket. The over number second is in progress. Rupesh final time in this over. Again lovely shot. Exquisite extra cover drive, but protection is there in the deep extra cover. The batter have to settle for the single. With the addition of the single. 17 after completion of over number 2. By losing 2 wickets, they're going exactly 8.5 runs per over. And very good start here from both the teams. Picked up 2 wickets, the fielding team. And at the same time, batting team scoring 8.5 runs per over. Time is exactly 12 past 15 in the afternoon. It's very hot condition here in UCG. The lots of undrawn cricket, the historical cricket ground. And the month of March, everybody knows that it's going to be very hot. One of the hottest condition what Mangaloreans are feeling here. And the record, almost 40 plus degrees Celsius recorded so far in the month of March, which is the highest ever in the history. That much of hot temperature. But now it's almost a 24 to 35 degrees Celsius temperature recorded. And bowler brought into attack here from the Machli end. Pratik. This time appeal for leg before wicket. The certainly ball is going to miss the off stump because of that leg cutter. Ball is Hello. Food court onto fruits, sweet corn, watermelon juice, and enjoy soft drink ready jana sir. Daikon pura jana chuka. Over to you, Satish sir. Thank you. This time wicket number 3 is back in the pavilion. Bowled out. Great one there from the bowler. So brother departs. We thought that these two brothers will going to add some runs, but unfortunately, Karthik, the brother, is back in the pavilion. And it's 17 for the loss of 3 wicket. A new batter in is one more big striker of the ball, Varun Shanbag. One more big name as far as Karkala is concerned, the classic Karkala is concerned. Experienced campaigner. The good striker of the ball. Got a lot of individual achievement in that underarm cricket. Again, almost drags the ball. Didn't quite middle that one properly. Then they picked up a single. He's off the mark with a single. With that single, Cobra moves on to 18 for the loss of 3 wicket. Again, wanted to go for the reverse sweep. The wicketkeeper missed it and wait for the umpire decision. By call by umpire Dhanush. And at square leg umpire Dikshit. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress.
This is turning out to be a good over. Oh, ball him! What a delivery! Fantastic Yorker and delivery there from young man Pratik. He's absolutely got a big fish in the net. What a delivery coming from the hands of Pratik. Even the Varun is acknowledging that delivery. He is appreciating the bowler. It's absolutely the good spirit of the game, because it's an unplayable Yorker and delivery, isn't it? Right on the block hold, Varun just wanted to get the ball into the onside region, but it's too late when he tried to bring his bat into the line of the ball. Beautifully bowled, well executed. Yorker and delivery there from Pratik to dismiss the danger man. 19 for 4. One more experienced campaigner, Girish, more experience behind him. Girish, the wicketkeeper batter for the side of Classic Salmara for a long time. Very, very busy customer, and good runner between the wicket coming for the second, asking for trouble. It is not a good judgment of the runs. Of course, you are the good runner between the wicket, no doubt at all, but selection of the second is absolutely wrong. No second at all in that occasion. Unfortunately, the Girish is also back in the pavilion. Now they are looking in a deep trouble. Classic Salmara, Karkal, CSK are looking in trouble. It's 20 for 5. Half of the batsmen are in the hut. Nitish, the new batter in. All Classic is needed here is the partnership. Nothing much wrong with that run rate. 3 overs completed. It's 20 for the loss of 5 wicket. Bowler Srinivas brought into attack. One more experienced campaigner, Srinivas Pai, brought into attack, and the batter Kiran drives that one firmly down to deep long along the ground. Addition of that single, scoreboard moves on to 21 for the loss of 5 wickets. Scoreboard is moving after a long time. The bowler, the batter Nitesh will be the striker. Round the wicket, Srinivas. Flighted delivery, toss up delivery, but the batter managed to get that one at last moment. Played it in the full, in the bottom of the bat comes into play to get the single down to mid wicket. 22 for the loss of 5 wicket. A good comeback here by the team. Padutirupati, there's some catch, it is a call, but ball will go into landed safely between mid off and the long off. Didn't quite get hold of that one properly. Kiran, the batter, just wanted to go for the big shot. And scoreboard now moves on to 23 for the loss of 5 wicket in the over number 4 is in progress. Srinivas, right arm round the wicket. Oh, what a catch! What a fantastic catch! He's taken a stunner. Unbelievable. Well, the batter hit the ball pretty hard back to Srinivas, and ball almost stuck into the hand, isn't it? That's why always you are saying that you need to attempt for everything. This is what we can say that. Have a look at the replay. Hit that pretty well, and have a look at the reaction there from Srinivas. Got his left hand right into the line of that stroke and got that one spectacular caught and bowled to dismiss the one more wicket. The Kiran back in the pavilion. Correction, the batter back in the pavilion is Nitesh. Is back in the pavilion. It's 23 for the loss of 6 wickets. Wickets are tumbling like a house of cards. The new batter in is Manjunath with that very attractive orange cap. And orange cap in the sense. Oh, what a delivery. Excellent one. Ball hit the stumps. I don't know what really happened. Yes, it is. The ball hits the stumps but bails. This is not the first time I'm saying that. This is second time today. Ball hits the stumps but bails which is not dislodged.
And this is a little bit disappointment here for the bowler. What could be a wicket here for him is unlucky. Again, lovely delivery there from Srinivas. Fantastic over. The great over. Only 3 runs and picked up a wicket after completion of 4 overs. Searching for the right track. CSK 23 for the loss of 6 wicket. One of the lowest score we are witnessing today. In the first inning score, we are witnessed 40 plus runs every matches. But this is the one. The batters of team Classic Salmar Karkal are struggling to get the runs against a disciplined bowling performance by the bowlers of Padu Tirupati. One more experienced campaigner, Vignesh Karkal, brought into attack from Machli end. Last over. Lofted, catch it is a call. Sheen was coming from the deep long off. And he drops the hat, but he catches the ball. And it's not necessary that you have to hold your cap while trying to take the catch from deep long off. He managed to complete the catch from the long off. A little bit confusion from the commentary box because the color of the cap and the color of the ball is the same. Once it looks like the ball which is dropped. But hat which is dropped from his head and catch which is taken cleanly. 7th wicket back in the pavilion. Prashant is a new batter in. Oh, and that will going to be a opportunity for the stump out. But when the wicket keeper uprooted the stumps, the batter's back foot little bit, the batter managed to drag his back foot into the crease. Otherwise, it's going to be a close one for the umpire. But Dikshit knows that when the bails are off, the back foot off for the Prashant, the new batter, inside the line. No damage done. 7th wicket back in the pavilion. Teams are looking in deep trouble. The Classic, they are facing that last over, the 2 balls, wicket and dot ball. 3rd time in this over. Vignesh from the Machli end. Right arm over the wicket balls. This is going to be a very good delivery. Typical reaction of the tail-ender, number 9 batter. Missing the line completely. Vignesh showing all his experience. This time too much. Outside the line off stump, it's gone. Direct it. There's a sharp shooter from the short 3rd man hitting the stump. The batsman not in the picture. Wicket number 8 is back in the pavilion. Now CSK are looking in trouble. It's 24 for loss of 8 wicket. Tank Cobra presenting this season 4 Tank Cobras trophy 2025. And almost we can witnessing some successful matches. 3 matches which is completed. This is the match number 4. Experienced campaigner coming to the middle. Ganesh, the top leg spin bowler. He can be very handy down in the order from the bat. Again, played it nicely in the gap towards the cover point region for easy single with that addition of that single scope on Namuza into 25 quarter century. It's not an easy quarter century. It's going to be a struggled 25 for the team Classic. Again, wanted to go for the mighty drive. Doesn't get hold up then properly. Vignesh will not going to bother about that single. With the addition of that single scope on Namuza into 26 for the loss of 8 wicket. Last delivery of Classic, and Ganesh will going to face that last delivery of their innings from the Machli end. Coming down the track, using his feet, but straight to the hands of Srinivas. Down at deep long off. That's it. Classic Salmara Karkal, they're going to finish their innings of 5 overs quota with the 26 for 9.
and set a target of 27 for the team Padu Tirupati. All we can see that the bowlers did a great job of Padu Tirupati after winning the toss, elected to bowl first. The bowlers justifying the decision of the captain, and they are putting some pressure onto the batters by picking up the wickets in a frequent intervals. And quite disappointment, we can see that scoreboard, no one scored a double figure here for the Classic. The highest score, which is a 9 by Kiran. Otherwise, we can see all the single digits. And the bowlers, of course, did a great job for the team, especially Srinivas. He's looks so good in this over. Picked up a wicket. The Vignesh is also bowled very well. The last over picked up 2 wickets for just 3 runs. And Karthi picked up 2 wickets in 2 overs. The expensive over, only bowled by Pratik, was considered 11 runs for 1 wicket. And first good over bowled by the bowler as well, by Ashlesh. That's it. 27 the target for the team Padu Tirupati. హలో, వరద పాండురంగ క్రికెటర్స్ అని डेडली पैंथर्स कोडियाल या 2 टीम कैप्टन अने टॉस आक स्टेज आले का वरद पांडुरंग क्रिकेटर्स आणि डेडली पैंथर्स कोडियाल 2 टीम कैप्टन अने टॉस आक स्टेज आले का. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. Thank you, Sujit. Before the innings will going to start here of Padu Tirupati, time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो 27 रनों का लक्ष्य इस वक्त पड़ू तिरुपति के लिए सीएसके ने रखा है. और जहां तक सवाल है, सीएसके का पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 रन निर्धारित 5 ओवर में उन्होंने बनाया. 27 रनों का लक्ष्य इस वक्त उनके सामने रखा है, पड़ू तिरुपति के सामने. और उनके पारी की शुरुआत होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज विनायक जो कि सामना करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, चूंकि वाइट का इशारा लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई. और वाइट के रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो वरुण गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइट का इशारा. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. अगर 27 रनों के अंदर रोक कर रखना है पड़ू तिरुपति के बल्लेबाजों को, सीएसके को पहले ओवर से घातक गेंदबाजी करनी होगी. और इस बीच वरुण उस घातक गेंदबाजी की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद स्वीप करना, रिवर्स शॉट खेलना चाहता. गेंद पहुंची इस वक्त गली पर. 1 रन का इजाफा और 1 लेग पाई का इशारा. और लेग पाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और संघर्ष इस वक्त जारी है पड़ू तिरुपति और सीएसके के बीच में. और अगली गेंद वरुण की गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहता, अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस वजह से कोई क्षति नहीं. स्कोर रुक चुका 3 रन. और वरुण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, लंगोन पर गेंद जाती हुई और गेंद लंगोन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. लंगोफ से फील्डर जरूर दौड़ कर आया था लंगोन पर. जीतोड़ कोशिश
उन्होंने जरूर की गेंद को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता वह वरुण के बल्ले, माफ कीजिए श्रीनिवास के बल्ले से वरुण की गेंद पर। अगेन स्विंग्स एंड दिस टाइम आई थिंक it just fell short of a fence. No, in fact it's gone all the way. गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है। स्लॉग स्वीप शॉट के तौर पर यह शॉट को खेला था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके छक्के के लिए। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 13 runs on the board and this is a fantastic start for Tirupati, just chasing the victory target of 27 in 5 overs. They are 13 without loss after first over. तो गणेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज विनायक इस वक्त सामना करते हुए और गणेश फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोल पर विनायक ने और गेंद इस वक्त लंगोल सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। जिस तरीके से हताश मनोभावना यहां पर गेंदबाज के चेहरे पर नजर आई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मौका जरूर था। तो देखिए यहां पर किस तरीके से स्ट्रोक को इस वक्त उछाला था उन्होंने और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद को रोकने की, पकड़ने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन नाकामयाब और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर। सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की जरूरत है विजय के लिए। 2 लगातार छक्के विनायक इस वक्त जड़ चुके हैं, जबकि श्रीनिवास एक छक्का और एक चौका यहां पर जड़ चुके हैं और विजय के अति निकट आकर रुक चुका है इस वक्त पड़ू तिरुपति। जस्ट 2 runs रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री। पहले 2 गेंदों में गेंदबाज गणेश 2 छक्के इस वक्त प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया और इसे 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। Now just a single run required for Padu Tirupati for victory. और सिर्फ औपचारिकताएं ही, फॉर्मेलिटीज इस मैच में अब बाकी रह गई है और गणेश गेंदबाजी करेंगे इस वक्त श्रीनिवास को। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार इस बीच गणेश ऑफ स्टंप से बाहर और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और यहां तक सवाल है। यह गेंद का उछाला लंगोन पर 1 रन के लिए। दैट्स इट, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर पडू तिरुपति बाय 10 विकेट्स, डिफीटिंग सीएसके एंड विद दैट 10 wickets comprehensive victory with exactly 3 hours to spare in their innings. They back the complete points. तशीची आज पुढली मॅच आसा मॅन ऑफ द मॅच वरद पांढरे क्रिकेटर्साच्या गुरवणला मॅन ऑफ द मॅच घेतस अंडर नामाचे एक स्टार बॅट्समॅन पुरे जणांना क्लॅप मार्का म्हणून नेमून घेतस। तशीची ह्या मॅच डेडली पॅन्थर्स टॉस विन जावन फील्डिंग घेतला। डेडली पॅन्थर्स टॉस विन जावन फील्डिंग घेतला। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಡು ತಿರುಪತಿ। So man of the match of this match award goes to Srinivas. तशीच पडू तिरुपती क्रिकेटर्स कारकळा या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच घेवच्याक जीएसबी अंडर एम क्रिकेटाचे टायगर स्टेजर येऊ का। So Srinivas adjudged man of the match for his all-rounding performance. So next match, the match number 5 is now going to start. तशी पुढली मॅच आहे मॅन ऑफ द मॅच अंडर एम जीएसबी क्रिकेटाचे टायगर पडू तिरुपती क्रिकेटर्साचे शिंदी
स्टेज आहे मॅन ऑफ द मॅच घेऊ का? GSB क्रिकेटाचे टायगर म्हणून नाव टाका. तशी मॅन ऑफ द मॅच घेतर दोन तरुण का? प्रसाद मिल्साच्या ओनर जाऊन आशिल्ला हाती प्रसाद नायक आणि मॅन ऑफ द मॅच दिसताची व्हिडिओ काढ हॅलो. तशी फूड कोर्ट आणतो जेवण रेडी झालेलं असा. ದನ್ಪಾರ್ಚ ಜೋವಾನ್ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪೈ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂಗಲ ಜೋವಾನ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಸರ್. ದೈಕೋರ್ನ ಪೂರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ आणि स्पेक्टेटर्स आना फूड कोर्ट आवचन जेवण करका म्हणून निमून घेतस. वेज बिर्याणी, गोबी मंचुरी आणि मशरूम आंध्र चिल्ली या 3 ಐಟಮ್ जेवणाक ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಸರ್. ಇಕೋರ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಲೇ ಆಗಿದೆ. I request the extra player of Deadly Panthers as well as Sri Varada Panduranga please to be reported here. Tell the player's name. ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀ ವರದಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. So Gurudatta and Shiv Prasad, the openers for Sri Varada Panduranga, and their innings now going to start. तो इस वक्त श्री वरदा पांडुरंगा की ओर से आरंभिक बल्लेबाज गुरुदत्त और शिव प्रसाद. और जहाँ तक सवाल है वरदा पांडुरंगा का, तो पहला मैच उन्होंने जीता था जबकि डेडली पैंथर्स को हार का सामना करना पड़ा था अपने पहले मैच में. और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज वेंकटेश, और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का. तो मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज वेंकटेश ओवर की मैच की पहली गेंद लेकर तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज वेंकटेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गुरुदत्त जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. दोपहर के 12:43 यहां पर बच चुके हैं. धूप बिल्कुल प्रखर मैदान पर छा चुकी है. और पहली गेंद मैच की ये गेंद फुल टॉस जस्ट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर साइड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. It might be, no, in fact it's gone over the fence. No, in fact once again it might be considered of just inside the fence by the foot of the fielder. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. पैर से गेंद को ढकेला था और फील्डर के लिए सौभाग्यवशात गेंद सीमा रेखा को पार नहीं कर सकी. और दोबारा जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. तो इन 3 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. और यहां पर इशारा हो चुका है चौके का. तो शायद गेंद वहां पर सीमा रेखा को टकराई थी. तो 4 रन घोषित और इस चौके के साथ
गुरुदत्त अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. इट्स 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और ड्राइव किया, उछाला लॉन्ग ऑफ पर, एंड वंस अगेन अ बाउंड्री, कपल ऑफ बाउंड्रीज एंड अ कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर गुरुदत्त. तो 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और वेंकटेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. 2 लगातार चौके प्रदान करने के बाद सहज रूप से दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर. और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए गुरुदत्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. और अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड. ये 2 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. वेंकटेश अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा. 1 more run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 without loss. और गुरुदत्त इस वक्त एक बार फिर से सामना करेंगे वेंकटेश की गेंदों का. और वेंकटेश ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, अपील, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा कि जी नहीं, तो नकार दिया. शायद गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर कुछ हद तक निकल रहे थे और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. तो 1 रन का इजाफा हो चुका है. 11 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस. और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो वेंकटेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं. सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. पावर प्ले के अंतर्गत लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन. और गेंदबाज ये गेंद इस बार उछाला है गेंद को लॉन्ग ऑन पर, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली क्लीन हिट. जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्पॉट, एंड ही जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ शिव प्रसाद के बल्ले से. और लंगोन सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है इस वक्त छक्के के लिए. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. रन 17 on the board. Next one just gone for a big one, not connected that one properly, and the scoreboard stays at 17 without loss. Last ball left in this over. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Last time in this over, lost it. This time he got the distance. Yes, it does. It's a biggie. This is an outstanding strike. लेग कटर गेंद को इस वक्त ऑन द स्पॉट कनेक्ट करते हुए उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए शिव प्रसाद ने. और इस बेहतरीन छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा श्री वरदा पांडुरंगा made a terrific start. It's 23 runs scored after first over. And this is an absolutely terrific start in any cricketing point of view as far as the 5 overs format is concerned. 23 रन अपने पहले ओवर में वेंकटेश इस वक्त प्रदान कर चुके हैं. निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा काफी महंगा ओवर उनका समाप्त हो चुका है यहां पर. और अब गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए टैंक कोब्रास एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शशांक. और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ बल्लेबाज गुरुदत्त इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए. और सिर्फ 4 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन नेक्स्ट कवर और मिड विकेट. और ओवर की पहली गेंद लेकर शशांक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. बल्लेबाज गुरुदत्त इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम शशांक टू गुरुदत्त. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ पर. और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए.
What a fantastic strike, effortlessly played that one, square of the wicket, just wide of the long off fielder, and he just got the distance at last. 29 on the board. They are heading towards to a big total at this situation. Varada Panduranga looking in a commanding situation. 29 without loss after the completion of 1.1 over. और निश्चित रूप से गुरुदत्त और शिव प्रसाद छक्कों की और चौकों की बौछार यहां पर लगाते हुए, और शशांक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर रहा, और गेंद सीधे इस वक्त पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. मैच नंबर 5 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर. जस्ट सिंगल ही गॉट, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 30 on the board, yet to lose any wicket. Shiv Prasad back on strike. Slowly and steadily this opening partnership is now building up here for Sri Varada Panduranga, and they are heading to a huge total. और शशांक अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त शिव प्रसाद के लिए गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए. वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 32 on the board, yet to lose any wicket in the over number 2 in progress. और शशांक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार गुरुदत्त के लिए. इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन गेंद लगभग कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और अपील को नकार दिया अंपायर ने सही तरीके से. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रनों पर. 32 on the board. 9 runs already came from this over so far. इस बार गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट पर, लेकिन फीडर मौजूद. जस्ट सिंगल ही गॉट. In fact, in comes a throw into the hands of the bowler from the deep mid wicket feeder, and the batsmen are finally satisfied with the single. 33 on the board. शशांक इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद शिव प्रसाद के लिए, गेंद को उछाला, फील्डर वहां पर शायद मौजूद है, और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है शिव प्रसाद का. ऐसा कहना पड़ेगा. Not quite get that one right from the middle of the bat. और वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपने आगे की ओर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को लपकने में सफल. और एक छक्का जरूर गेंदबाज शशांक ने अपनी पहली गेंद पर प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद के 5 गेंदों में बेहतरीन वापसी होकर चुके हैं. तो 10 रन पिछले ओवर में बने, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर. It's 33 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. Still, Varada Panduranga are looking in a comfortable situation, except they lost their first wicket in the face of Shiv Prasad in the last delivery of the previous over. Akshay, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मछली एंड की ओर से अनिल किनी, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी, इस वक्त डेडली पैंथर्स की ओर से गेंदबाजी का क्रम इस वक्त जारी रखते हुए. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गुरुदत्त इस वक्त सामना करते हुए. निश्चित रूप से कमबैक करना इस वक्त डेडली पैंथर्स के गेंदबाजों को तो इन बचे हुए 3 ओवर में काफी किफायती, काफी नपी तुली गेंदबाजी यहां पर उन्हें करनी होगी, और विकेटें भी ज्यादा से ज्यादा उन्हें उखाड़ने होंगे अगर कम से कम स्कोर के अंदर वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाजों को उनको रोक कर रखना है. तो देखते हैं अपने इस मकसद में किस हद तक यहां पर गेंदबाज डेडली पैंथर्स के कामयाब होते हैं. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अनिल किनी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरुदत्त के लिए पहली गेंद ऑफ कटर गेंद. इस बार मौका जरूर था, शायद नयन फील्डर थे इस वक्त मिड विकेट पर, और फील्डर नयन के हाथों से गेंद इस वक्त छूटते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. काफी मुश्किल सा मौका था, लेकिन यहां पर बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करते हुए 34 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर. फील्डिंग में जमावट इस वक्त अनिल करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा तैनात, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद, और यहाँ पर कोई डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, कुछ हद तक सीधा, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फीडर इस वक्त मौजूद नहीं. और इस बीच अनिल की गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा अंपायर का,
और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए अनिल किनी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए जस्ट अ सिंगल, इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। और सिर्फ एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 36 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल गुड गोइंग ऑन हियर फॉर टीम श्री वरदा पांडुरंगा और अनिल किनी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। गुरुदत्त का जहां तक सवाल है, बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हैं गुरुदत्त, बैटिंग ऑन 19 इंक्लूडिंग 2 4s एंड 1 6। निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ श्री वरदा पांडुरंगा, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, अपील फॉर लेग बिफोर, इनफैक्ट अंपायर डिनाइड दैट। गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए लेग बाई का इशारा, और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बेहतर ओवर अब तक अनिल किनी का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ सिंगल्स के रूप में पहले 4 गेंदों में रन इस वक्त प्रदान कर चुके हैं। और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में हाफ स्टॉप गेंदबाज द्वारा, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और अनिल किनी अंतिम बार मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अक्षय के लिए, यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। गुड पीस ऑफ वर्क मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर, प्रिवेंट द बैट्समैन टू टेक ओनली इन अ single to end the over, and 3 overs completed. Still they are looking in a good situation. Varadah Panduranga 40 for the loss of 1 wicket with 2 overs to go in their innings. So what a fantastic cricket tournament is now progressing in the name of Tank Cobras Trophy Season 4 2025. Not in cricket but in the social work, Tank Cobra contributing a lot from the long time. इस बीच ये गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट पर, और गेंद इस वक्त 1 रन मात्र मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रन पर 41। लेफ्टी बॉलर नयन कंटिन्यूइंग हिज सेकंड डिलीवरी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, दिस टाइम टू गुरुदत्त, और ये गेंद फुल टॉस, लेफ्ट साइड, आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, वन मोर बिगी came from the bat of Gurudutt, and he's just looking on fire. The scoreboard is now raising up to 47 now, और गुरुदत्त इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा शीट एंकर्स रोल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए श्री वरदा पांडुरंगा के लिए 26 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। अगेन दिस टाइम टू हायर, मच स्ट्राइकर, एंड दिस टाइम I think so, he's got the distance again. 50 comes up, consecutive sixes for Gurudutt. He is moving on to 32 now. 53 on the board, 53 रन बन चुके, 2 लगातार छक्के गुरुदत्त के बल्ले से लगते हुए। पिछला स्ट्रोक काफी ऊंचा जरूर था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके 6 रनों के लिए। गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर जाकर टिप्पा खाते हुए। नयन अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद स्क्वायर, दिस टाइम चांस बट नो वन इन दैट एरिया,
One bounce collected by the deep cover point fielder. And before that, the batsman have got plenty of time to come back for the second run. Square of the wicket गेंद को उछाला था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे काफी पीछे, और 2 रन बल्लेबाज के पास प्राप्त करने का मौका. गुरुदत्त is now moving up to 34 now with that couple run. और एक बार फिर से नयन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. नयन अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. Lofted high in the air. This time chance for the long off fielder. और long off fielder इस वक्त इस कैच को लपकने में सफल. जैसे स्ट्रोक गुरुदत्त ने लगाया, वो खुद जान गए कि गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार नहीं करेगी, और हताश मनोभावना के साथ उन्होंने अपना सर झटका इस वक्त, और उनका पूर्वानुमान, उनका अंदाजा यहां पर सही निकला. लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपक लिया सीमा रेखा के अंदर. तो 34 रनों की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है गुरुदत्त का. गुरुदत्त इज आउट फॉर 34. फैंटास्टिक नॉक केम इन फ्रॉम हिम. एंड अ सेकंड विकेट लॉस्ट इन द टोटल ऑफ 55 फॉर टीम Sri Varada Panduranga. Now they are looking in a good situation, in fact. 55 for the loss of 2 wickets with the 7 balls to go in their innings. New batsman Dhanush is now comes out to the middle. और इस वक्त तो सामना करते हुए नयन की गेंदों का. तो 2 लगातार छक्का प्रदान करने के बाद नयन पिछले गेंद पर गुरुदत्त का बेशकीमती विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और इस बीच अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. इस बार lofted too higher by Dhanush, and this time I think it's taken inside the fence. और धनुष ने जैसे ही स्ट्रोक लगाया, ऊपर की ओर गेंद को देखा और दौड़ना शुरू किया इस वक्त पेविलियन की ओर, क्योंकि वो खुद जान गए थे गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार नहीं करेगी, और लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया है. तो 2 लगातार छक्के प्रदान करने के बाद गेंदबाज नयन 2 लगातार विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर. It's 55 for 3 after 4 overs with just 1 over left in their innings now. जी नेक्स्ट मॅच पडतिरुपती कारकळाच्या आणि टँक कोब्रा बी टॉस पडतिरुपती विन जाऊन फील्डिंग घेतला. So Tirupati are won the toss and they elected to field first against Tank Cobra B in the next match. और जहां तक इस मैच तशी कंट्रोल जेवण जायनी जलतीतलो घेऊन एक फुटकोट आणतो, जेवण कोण एवका म्हणून नेमून घेतला. फुटकोट जलतीतलो की बंद केला रे आमकाय सुलभ जाता. So back to this game, last over remaining, and the last over is now going to start in their innings. और गेंदबाज नारायण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मछली एंड की ओर से ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, और रन्स यहां पर मिलेंगे वाइड के रूप, और इसी रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56. अब तक 56 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. और नारायण इस वक्त ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, तेजी के साथ 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 57 ऑन द बोर्ड for losing 3 wickets at the start of the 5th over. In fact, still 5 balls left in overall calculation in their innings. नारायण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए जस्ट अ सिंगल दे गॉट, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं. 58 for the loss of 3 wickets. Runs are coming quite freely now at this situation for the batsmen of Sri Varada Panduranga. और नारायण अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे तैनात. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे और रन आउट के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है. So 1 run added in this delivery and a wicket lost. 4th wicket down, 59 on the board. Now just 3 balls left in overall calculation in their innings. We're just waiting for the number 6 batsman of team Varada Panduranga. विनोद नंबर 6 बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज नारायण के बचे हुए 3 गेंदों का. और नारायण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए विनोद के लिए रन अप में कुछ हद तक बाधा. एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए
सिर्फ 3 गेंदें बाकी अब उनके पारी में। और नारायण अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, missing 2 for the leg stump, wide declared by umpire. 60 on the board for losing 4 wicket. Now just 3 balls left in their innings. और नारायण फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, अपील इस वक्त, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। प्लम्ब इन फ्रंट घोषित। हालांकि थोड़ा सोच विचार जरूर किया अंपायर ने, लेकिन आखिरकार अपनी उंगली उठा दी और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट and 1 more wicket fall on it. 60 for the loss of 5 wicket. 2 balls left now in their innings. वरदराज नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड की ओर, और वो इस वक्त नारायण के बचे हुए 2 गेंदों का सामना करेंगे। और नारायण अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। क्लीन पिकअप, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं, सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 61 on the board, 5 wickets lost and now just a last ball remaining in their innings. अंतिम गेंद बाकी और नारायण अंतिम गेंद लेकर तैयार। The last ball of their innings is now coming up. This time, driven that one, down, takes a cover. In fact, they got a single, come back for the second, in comes the throw, and the batsman won't survive. So final delivery is up, and 1 run added and a wicket lost, and now Sri Varada Panduranga finished well with 62 for the loss of 6 wickets in the stipulated 5 overs, and there's a huge target of 63 in front of deadly Panthers, and as far as the required run rate is concerned, exactly 13.60 runs per over, the required run rate for them. That means they have to score 63 runs in the stipulated 30 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them that means in 5 overs they have to score 63. And let's see can they reach the target or not. Meantime, the inning starts with just shot while और डेडली पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर डेडली पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. And once again, a testing time for the batters of team Deadly Panthers. And they have to chase one of the highest total of the day of this Tank Cobra Trophy 2025 Season 4. 63, the huge total, which is a huge target which is set by the team Sri Varada Panduranga. And the Tanks, the innings, there are some explosive knock coming from the blade of Gurudat, as always.
scored a 24 quick fire, 24 runs with the help of 3 6 and 2 boundaries. And then Shiva Prasad is also batted very well. The opening pair, he scored 12 runs in just 4 deliveries with the help of 2 6. And then some small contribution in the end as well by the batters. So altogether, it is a fantastic batting display there from Varatha Panduranga. And a lot of hard work is required from the batters of Deadly Panthers. If they wanted to climb the mountain of runs, they have to bat very well. And especially in this power play, and the 1 over power play is going to be a key for the success for the team Deadly Panthers. Have to get some score. The first ball. This time, Gauta played it nicely into the deeper mid-wicket region. 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. Just like I mentioned, they have to take this power play as the scoring one if they wanted to climb the mountain of runs. 15, 20 plus runs in the first over. The gate will going to open for the Deadly Panthers. And this is what Gautam have to do. The man in good form is definitely have to get some runs from his bat. He need to talk with his bat if they wanted to win this match. And a good start here from Gautam. And getting a start is not important, but after getting a start, converting that start into beginnings is so important for the batter like Gautam. And the ball which is went out of the park, and they're searching for the ball. The umpire getting another ball before the ball will go into land inside the ground. They want to take another ball. Right arm over, they get balls. Gautam drives that one, doesn't get hold up that properly, but good enough for him to defeat the bowler and played it back to bowler into the deep long off, straight deep long off region for a single. With that single, Cobra moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Little correction, 5. It's not a 6, it's a 5 on the board. And Venkatesh, the left-hand batter, right and left combination, always handy for any team. And wait and see how Venkatesh will going to get the start here for his team. Vishwas from the Machli end. Right arm over the wicket, slashes but doesn't get hold up that, and proper timing is not coming proper, but good enough. It's good enough for him to get the ball into the fence for 4 runs. The ball is which is hard enough, and of course UCG cricket ground, absolutely the quick outfield, the lightning fast outfield did the rest. And just going after that delivery which is wide outside the line of off stump. And the left hand batter Vinayak Venkatesh, correction, you know exactly this is a power play, have to go after the ball, and got a boundary for that. Again played it nicely into the deep square, like there's a chance of run, a wide throw coming from the fielder, and another extra runs in the form of power throw. It's not a good fielding there from the fielder, as he played it straight to the hands of fielder. The fielder couldn't manage to return the ball into the hands of the wicket keeper. Wide throw coming from the fielder. Couple of runs, 11 without loss of any wicket. Again, nicely driven, just to defeat the infield. And they wanted to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Couple of runs, which takes a total score into 13. A good start by the opening batter, and the kind of start which is required for Deadly Panthers. Both the batters are trying their level best. This time played it nicely wide of the fielder. 1 bounce into the fence for 4 runs. Absolutely fantastic timing. Just a roll of the wrist which comes into play. Is a very strong wristy player, Venkatesh. Off the toes, flicks it away with the timing, sheer timing in that stroke. 1 bounce into the fence for 4. And this is a good way to start here for the team Deadly Panthers. They really wanted to get some deadly start, and they got absolutely deadly start here with the 17 runs in the first over. Gate will go into open for the team Deadly Panthers because of that huge over. 17, which is deducted from 63. That means they have to get another 46 runs to win this match in remaining 4 overs. 24 deliveries, 46 runs required for the victory. Anything can be possible because the ball which is hard in the nature, the pitch is absolutely, it was helping the batters, friendly for the batters more than the bowlers. If they batted sensibly, it can be achievable. And wait and see. The second over, Dhanush brought into attack from the
Tank Cobra and right arm over the wicket. Oh, lovely delivery. Ball is almost skidding. And wicket keeper behind the stump misses the ball completely. Even that short third man, short fine leg fielder also missed it. By call by umpire Ravi Uppala. And with that addition of that extra score, but moves on to 18 on the board without loss of any wicket. Dhanush using his shoulders to get some off cutters. And ball is a little bit skidded and kept low for Gautam. The first delivery he faced. A little bit change in the field. Left and right combination always going to be a headache for the captain of the side. To change the field set every time when strikes are rotated. Now a square leg fielder has been asked to come inside the ring and getting that extra cover fielder into deep. In the extra cover, there is a deep cover, deep extra cover. Long off. Very interesting to see that lot of protection is given in the offside region rather than the onside region for the left-hand batter. This time, chipped it away. The wide of the fielder. Before the fielder will go in to return the ball. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. Excellent running between the wicket. And especially the Gautam is running towards a dangerous end. He's calling his partner for the second run and responded very well. 20 without loss of any wicket. In the over number second is in progress. A lot of shouting we can see here. Is there some confusion here? Maybe that they are claiming that that will be a boundary, but it's fine. Just a couple of runs. The Venkatesh will go into face the next delivery from Dhanush. Third time in this over. Bright sunny afternoon. Exactly 1:15 in the afternoon. Hot condition. Going to be a punishable not from the batter but from the umpire, because of that line which is gone outside the line of leg stump with that extra score, but moves on to 21. The Deadly Panthers, after they lost their first match, the opening match, they desperately wanted to open the account in the points table. This time chipped it away, but out of the reach of the fielder at long off. Wideish long off fielder had to cover the ground from long off to wideish long off. Ample time for the batter Venkatesh to complete that 2 valuable runs there. 23 on the board. The placement is so good in that occasion, even though the Venkatesh couldn't manage to get that one from the middle of the bat, but it's good enough for him to get the placement right. And the bowler, we can see that he's targeting that line which is outside the line of off stump, not giving opportunity for the batter to go for any big shot. There's lovely delivery. This is a good line. When you are angling over the wicket for the left-handed batter, this is a line is absolutely perfect one. Pitching in the midland off stump, getting away from the right and left-hand batter. Missed it completely. No, this is not a good line. Even the Venkatesh trying for everything for that ball. You know exactly if you connect the ball, he can at least get the boundary for that. But wide signal by umpire rightly so. 24 without loss of any wicket. Chasing 63 to win this match. Again, one more wide. Little margin for error going down the leg side. With the addition of that extra score, but moves on to quarter century. 25 runs came in very quick time. 9 balls, they got 25. They have to continue that kind of exhibition of the batting, the remaining overs. Oh, this is going to be a delivery which is outside the line of off stump. And that might be the big miss there from Venkatesh. So far, excluding some wides in this over, I think the bowlers really kept that line very well. Dhanush avoiding the boundaries and sixes. Again, going to be a 4th wide of this over. The runs are coming in the form of extras here for Deadly Panthers. 26 on the board. So far in this over, if you can see that, there is no big boundaries, there is no 6. But I think some couple of runs and some extras. The first over, they conceded 17 runs. That means altogether 9 runs coming from this over. Again, played it very nicely in the gap. The fielder is there in the deep. Wanted to come back for the second. In comes a throw. In comes a throw, but couple of runs which is completed. With that couple of runs, Cobra moves on to 28 on the board.
So second over also a little bit productive over, not a huge one. 11 runs coming from that over, and 28. Still a long way to go for the team. Another 35 runs required for the victory in 18 balls. 3 overs, 35 required for the victory. Just under 12 runs per over. Guru brought into attack and welcome with a beautiful shot. That was absolutely gorgeous. Effortless there from Gautam, isn't it? If you see that stroke, how effortlessly played. Just that timing. Nothing else in that stroke, isn't it? Quite easily done. And ball is went a long way down to wide-ish long on for a 6. 34 on the board. Flicks it off his legs down to mid-wicket. They wanted to come back for the second, asking for trouble. Gautam doesn't want to take the risk because when you are in a good nick, throwing the wicket in the form of run-out is always going to be dangerous. 35 on the board. Yes, absolutely. Yesterday when Kohli played that similar kind of cricketing stroke against against Johnson of Kolkata Knight Rider. The effortless flick of the wrist, the stroke which is played by King Kohli. Oh, this time something is happening. I don't know why he is appealing. Why is appealing? Shiv Prasad. Of course, the ball, maybe the ball hit the stump, but the bail switch is in a position. The bail switch is not dislodged, and Shiv Prasad is absolutely not really aware of that, seeing that ball hits the stump, but bails are not dislodged. That's why umpire Ravi Uppala is not given an addition there. Again, a little bit comedy of error in the middle, and one more single. It's 36 on the board without loss of any wicket. Some lucky escape. This is the third time you're seeing in this match. I have to check the bail's weight outside the line of off time. One more wide. Maybe if the ball, of course, the tennis ball is using for this match, so that if the bails, which is definitely going to a little bit hard, and the weight of the tennis ball is not good enough to dislodge the bails, but is good enough. Timing here from the batter, Gautam, is absolutely doing a good job here for his team. One more fantastic straight hit over the head of the bowler. Is just clearing the man. The long off fielder trying his level best to get into that catch, but ball is defeating him into the fence, into the gallery. The second sixer of this innings, of this over, in fact, as Cobra jumps into 43. Now just 20 runs away from the target. And 13 balls remaining. Match is widely open. Gurudutt to Gautam. Gautam again wanted to go for the expansive drive. Just tried to post the ball. The good comeback here by Gurudutt, but not good enough. 15 runs coming from this over. Have a look at the 3 overs. 17 in the first, 11 in the second, and now 15 in the third. That means the team Deadly Panthers absolutely giving some deadly reply from the bat by the opening batter. Especially the Gautam is looking so good so far with the 2 massive sixes, and Venkatesh is also giving a fantastic stand in other end, support from other end. The 43, which is a total score, 20 required from 2. The required run is exactly 10 runs per over. So, to come back very important here for the team Varada Panduranga. Raki brought into attack from Tank Cobras end. And wait and see how well the Venkatesh will go into take this man. Unbeaten 43 run stand for the first wicket. Might be the one of the highest. The last wicket is in the previous innings also. They got a partnership of 33 runs, but now it's a 43 runs partnership for the first wicket. One of the highest stands in the day number 1. Of course, the day-night cricket tournament of this Tank Cobra trophy for the first wicket from this batter. Lofted catch, it is a call. Definitely one of them will going to take this catch or not. Wait and see. Ball is just clearing the man, and ball went into the fence for a 6. He can't believe his eyes. Venkatesh is not really getting that one from the middle of the bat, mind you. It's not a sweet part of the bat, but a flow of the bat is taking the ball into the fence,
clearing the man just in that deep long on. And one shot of 50, 49. And that six really going to release the pressure straight away from the batter. 14 to get from 11. Raki. Venkatesh. This time opportunity of run out. Direct throw. Batsman is in trouble. Umpire asking for the third umpire. The team Varada Panduranga desperately wanted this man. But have to wait here. Umpire referred for the third umpire to see whether the batter is safe or not. Undrum throw. The very good throw coming from the fielder. This has been a very close one here for the third umpire to decide. Dhanush, the qualified umpire of Karnataka State Cricket Association, here in our commentary box. The batter is safe, not safe, not safe. He's short of his crease, is gone. So this is what happening whenever there will be a direct hit. The most of the time we can see that the batter is in trouble, and same thing is happening here is also. The great job done by the fielder, Dhanush, I think so. He's got a 100-run throw. That was a very good technique. If you see that when you are close to the stumps, try to hit the ball. I think the ball can miss the stumps. But if you got a 100-run throw, I think it's a better option. And to hit the stumps, there's a great technique is implemented by Dhanush to dismiss the danger man Venkatesh back in the pavilion. But he's got a valuable 25 runs before he's back in the pavilion. He did the great job from his bat for his team. 49. Shashank is the new batter in. Rakesh, can he put some breakthrough here? Wait and see. Third time in this over. 14 still they have to get in remaining 10 balls. But Gautam back on strike. This time Gautam hit that one. Will there the fielder, there the mid wicket? Yes it is. Opening batters are back in the pavilion at the wrong time. Without completing the job, both the opening batters are back in the pavilion, and Raki providing that vital breakthrough for his team. Again, the partnership of 49 runs. But it's same that 49 runs, both the opening batters are back in the pavilion. Now, the match looks like is very interesting. 9 balls remaining and 14 runs required for the victory. 2 new batters out there in the middle, and always we are seeing in cricket, whenever the new batter coming to the middle is always the right time for the fielding team to tighten up the screws. Rakesh. 4th time in this over. New batter experienced Shivanand. 14 to get from 9 deliveries. The match is going to be anybody's game. Again hit that one pretty well in the gap. Mid-wicket fielder. Very good. Oh, my goodness. It's unforced error from the fielder. All happening. This is going to be a big miss by the fielder. What could be a certain single in the hurry of returning the ball. Ball is just slipped out of his hands. And 50 comes up here for the deadly Panthers as well. They got a 51 now. But still they have got a deficit of 12 runs. They have to get in remaining 8 deliveries. Rakesh again. 5th time in this over. Oh, that might be the difficult chance here for the wicketkeeper behind the stump. Held the edge. And very lucky for Shivanand as he got the single for that. With that single scope, but moves on to 52. 11 to get. 7 to go. What a match. But this is turning out to be a great over, even though first delivery, the batter dispatched that one for the maximum. And after that, they got run out. Danger man Venkatesh back in the pavilion. And very next delivery, Gautam is also back in the pavilion. And that's why this match is widely open now. So this is going to be a great match between two very good teams. Last time in this over, Rakesh to the new batter. Shashank. Oh, much required dot delivery. Great one there from Rakesh. Holding is now in the difficult condition and takes this last over.
to 11 runs. The 11 runs required from last over. And deadly Panthers, after getting such a good position, they got all the momentum till the start of the fourth over. But in that fourth over, they lost the momentum because they lost two settled batsmen back in the pavilion. But match which is not yet over, it can be possible. I don't think it's going to be a big ask. 11 runs in the last over. It can be achievable. But the way that Padu Tirupati bowlers are back in the game, they were the Panduranga little correction. They made it very tough now because sending that two settled batsmen back in the pavilion. Now all after that last over, who will going to handle the pressure of bowling this last over? Varadraj, the bowler, representing for Varada Panduranga, and Varada, the bowler, have to depend that 11 runs in the last over. Can he manage to do the magic here? But Shivanand, as experienced campaigner, have to convert this experience into performance if they wanted to win this match. The wait and see. 6 ball, 11 required. Here you go, first ball. Outside the line of off time, punishable from the umpire, rightly so. With that extra, now run required 10, ball remaining 6. 4 difference between run and ball. One big shot can change the complexion of this game. This time, hit that one, but I think he missed that. He hit the stumps. My goodness, Varada doing the good job. At one stage looks like when Shivanand going across the line, tried to swing his bat, missed the line completely. You miss high it. Varada have absolutely hitting the stump, the batter missing the ball. And the wicket number 3 is back in the pavilion. Now 5 balls remaining, 10 runs required for the victory. What a match. One of the best match I want to tell you in this day match of Tank Cobra Trophy 2025 Season 4. 10 required from 5 balls and the batter coming to the middle. Samarth. Can you justify his name? Samarth. Definitely. The Samarth, maybe the Tank captain of thinking that in this position, Samarth has got the potential of doing the job for his team. Wait and see. 10 to get from 5. Varad got a wicket in the first ball. Second time in this over from the Machli end. Right arm over the wicket bounce. This time catch it is a call and oh, dropped. It's absolutely a big miss there by Varad. Now Shashank coming to the bat, coming into the strikers and 9 required from 4. So turning out to be a great over so far there from Varad, handling the pressure. So all we can see that the batter is under pressure, the bowler is under pressure, everyone is under pressure. This is why more than the talent, the situation like this, the level of confidence is definitely comes into play. The 4 balls remaining, 9 runs required for the victory. How strong you are mentally to handle the pressure. This is going to be key for the success in these 4 balls. Right arm over the wicket bounce. Short pitch, lofted very high, but not good enough. The fielder is underneath it, mid-wicket fielder. Oh, second attempt. Ball is absolutely popped up from the hands, but he kept the eye on the ball. In the second attempt, he completed the catch. Short pitch delivery. Shashank played it very high. This is what I'm talking about, the pressure. If he is in the first over, if he is in the second over, without any pressure, he can dispatch the ball out of the park. But here Shashank is under pressure that he have to send this one into the out of the park. He played it too early and played it very high and pays the penalty. Now 3 balls, 9 required for the victory. After getting such a good position, the momentum, what we are talking about, never to lose. That loss, the losing the momentum,
that when both the batters are batting very well, the opening batters scored a 49 runs for the first wicket. After that, they lost 4 wickets for just 5 runs. This is what the cricket is all about. The beauty of the cricket. When you're coming to the UCG cricket ground, you can get so many histories. Losing the momentum, what we are talking about, when the team looks like the team will going to win the match very easily. The 1 hour changing the complexion of the game. But match which is not yet over. 3 balls remaining, 9 runs required for the victory. 1 big shot can change the game. This time, bowler's back drive, firmly driven, but not more than a single. Varad will not going to bother about that single. 8 required from 2. This man, Samarth, has got some potential of hitting a big shots here, but he have to deliver. 8 required from 2 balls. The choice for the batsman, whether he is deal with a 2 boundary or he can deal with the 6 and a couple of runs. But all up to the batsman's mindset. But even though I think the bowler did a great job so far, handling the pressure very well. Varad, decider delivery. This time, decider delivery and swings it hard, and he got the distance. This is what I'm talking about. The Samarth is a man you can remember for a long time. This time he swings it away, short pitch delivery. Of course, on the middle stumper, played it across the line and got the flat 6 down to deep square leg. 61 for 4. 2 runs required from last ball. If Samarth will not go into do the job here, that 6 will not going to be that much of important. Because if he wanted to get some weight on that 6, he have to get the 2 runs here. Last ball, 2 runs required for the victory. Pressure is building up now. Decider, the match decider delivery. Here we go. 2 to get from last. Right arm, over the wicket, driven, up and over. This is a good enough. Deadly Panthers absolutely winning that deadly match against team Varada Panduranga. Celebration is on, why not? This has been outstanding victory for the Deadly Panthers. Chasing a monumental. They're chasing that monumental of 63 runs. Once it looks like it's not so easy to chase down. But what we are seeing that Samarth is giving the finishing touch by hitting a 6 and couple of runs in the last 2 deliveries and completing the job for his team. But we need to appreciate the innings of Venkatesh as well as Gautam, who really laid the foundation in the beginning. Scored respectively 18 and 26 runs. And for the first wicket stands of 49 runs, really changing the game. But what the effort which is done by Rakesh in the 4th over. But the Varad couldn't manage to keep that 2 deliveries of the last over, which is finished by the batter Samarth. Exactly, he is justifying his name, Samarth, and sending in a right position by the captain of the side to do the job. And that's it for the match number 5, one of the best match we have witnessed. Deadly Panthers winning this match with the fantastic performance. So man of the match, and it's nevertheless, when you're chasing a big total, is always the contribution from the batter, isn't it? And especially 2 batters are managed to get some good score. Venkatesh is the man, scoring 28 runs. So he is judged as the man of the match for his wonderful innings. So I request Venkatesh, please go and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. Thank you. It's time to change in commentary box as well before the match will go into commence between Tank Cobra B versus team Padu Tirupati. Time for Gopi to take over the microphone after the lunch break. Thank you. హలో 10 జిల్లాల
एक एक्साइटिंग मैच आहे. मॅच विनिंग परफॉर्मन्स दिला तसला वेंकण्णा स्टेजर येऊन मॅन ऑफ द मॅच घेवका म्हणून निमून घेत तसं अंक आमगेल टीमाच्या डॉक्टर विवेक पै आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड देऊ का. सीनियर प्लेयर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट म्हणून वेंकण्णा सीनियर प्लेयर म्हणून दाखवून डेडली पॅन्थर्स मॅच ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद सतीश. So what a fantastic match ended just short while ago, which won by Deadly Panthers against one of the Paruranga. Now the next match starts. First ball, reverse shot, played that one delicately into the gap as well. और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. तिरछे बल्ले के साथ विद रिवर्स शॉट गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ थर्ड मैन पर और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ द रन अकाउंट बिगिन फॉर बालू एंड द रन अकाउंट बिगिन फॉर टैंक कोबरा बी. इन फैक्ट इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और गेंदबाज अगली गेंद बेहतर गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा चूके पूरी तरह गेंद स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. Extra quick delivery from the bowler and he just got rid of the batsman. Much straighter line and the ball passed batsman's barren leg and stuck to off stump. And the first wicket gone. Balu departs. It's 2 for the loss of 1 wicket. और निश्चित रूप से यहाँ पर पहला विकेट इस वक्त टैंक कोबरा भी खो चुका है. और जहाँ तक टॉस का सवाल है पड़ू तिरुपति के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. अश्लेष जो कि विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं बालू का. और इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का. मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है. और मुकाबला इस वक्त जारी है इस बीच टैंक कोबरा बी और पड़ू तिरुपति के बीच. नए बल्लेबाज पवन का आगमन होता हुआ अश्लेष की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. मछली एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अश्लेष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. बल्लेबाज को दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा. विकेट उखाड़े गए विकेट कीपर द्वारा. लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 on the board. Yet to lose any wicket in the over number first in progress. Match number 6 in progress of this prestigious cricket tournament. Tank Cobras Trophy Season 4 2025. और इस बीच अश्लेष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद oh bowled out. Just wanted to work it away on the onside. और ऐसा कहना पड़ेगा पवन इस गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए और गेंद के बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई मिडल लेग स्टंप पर. बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और पवन स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद किस तरह उनके बल्ले को चीरती हुई स्टंप्सों पर जा टकराई है. दूसरा विकेट गिर चुका है टैंक कोब्रास बी का. पवन departs and now they are looking in trouble. It's 5 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. We are just waiting for the number 4 batsman of टैंक कोब्रास बी. और जहां तक टैंक कोबरा का सवाल है पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था तो इस वजह से उन्हें इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है. तो पड़ू तिरुपति का जहां तक सवाल है अपने पहले मैच में वो विजय दर्ज कर चुका है. अगर इस मैच में वो विजय दर्ज करता है तो प्लेऑफ पहुंचने की उनकी साध्यताएं उज्जवल हो जाएंगी. और देखते हैं यहां पर इस मैच में कौन सी टीम विजय दर्ज कर पाती है. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार गेंद को उछाला इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं. और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता और थ्रो किया जाता स्टंप सेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. couple of runs added to the total. 7 on the board for losing 2 wickets in the over number first in progress. और लक्ष्मीश अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं अंतिम बार इस ओवर में. फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर अश्लेष bowls. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. जस्ट अ सिंगल ही गॉट and with that single run the scoreboard moving up to 8 on the board for losing 2 wicket and a first over has been came to an end. So first over
This is not a good start for the batting side. Tank Cobra B. They managed to score 8 runs, but they lost their 2 top enders wicket. And still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in their innings. रुपेश नायक का गेंदबाजी शुरू करते हुए टैंक कोबरा एंड की ओर से, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे टैंक कोबरा बी के बल्लेबाज सूरज के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार लक्ष्मीश, माफ कीजिए, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए, और रुपेश पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, गेंद घुमाव लेते हुए स्पिन लेते हुए गली पर पहुंचे। 1 रन का इजाफा हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड जस्ट शॉट व्हाइल अगो। और रुपेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, पूरी तरह स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को मोड़ना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन नाकामयाब, और गेंद लगभग विकेट कीपर के हाथों में फील्ड कर ली गई। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है टैंक कोबरा का, तो कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें यहां पर पार करना होगा। अगर एक चुनौती भरा स्कोर उन्हें यहां पर खड़ा करना है तो बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज रुपेश गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछाला स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए इस वक्त स्ट्राइट हिट एरिया पर, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सूरज के बल्ले से लगता हुआ, विकेट से हटते हुए गेंद को उछाल दिया गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्राइट हिट एरिया पर, और फील्डर वहां पर मौजूद थे, थोड़े से स्क्वायर गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक सूरज के बल्ले से लगता हुआ। अगली गेंद इस बार सीधी रफ्तार के साथ गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए, विकेट से हटते हुए गेंद को कट करना चाहता, गेंद के उछाल को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। रुपेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर की दाईं ओर से गेंद निकली शॉर्ट थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड, 2 wickets lost and 2 overs completed. Still the batsmen of Tank Cobra be searching for the right track, and still in overall calculation it's going to be 3 overs left in their innings. So third over starts from the मछली एंड, और पहली गेंद लेकर तैयार, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ खेला जरूर, लेकिन स्वीपर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर सिर्फ 1 मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सूरज और लक्ष्मीश पारी के भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए और अपने टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए। और गेंदबाज प्रतीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, निशाना चूका, और इस बीच 1 रन का इजाफा 22 के रूप में। जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए 22 के रूप में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। प्रतीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, गेंद को उछाला इस वक्त लंगोफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते और इस गेंद को लपकने में सफल बेहतरीन तरीके से, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सूरज द मैन डिसमिस्ड, गेंद को उछाला जरूर काफी ऊंचा, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और लंगोफ पर जो फील्डर थे उन्हें हालांकि दौड़ जरूर लगानी पड़ी अपनी बाईं ओर, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को वो लपकने में सफल, और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 3rd विकेट डाउन, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ इन फैक्ट फॉर टैंक कोब्रास बी। इट्स 16 for 3.
प्रसाद नए बल्लेबाज के रूप में, प्रसाद नायक नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और गेंदबाज प्रतीक मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा क्विकर, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर का, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज एक रन तेजी के साथ लेग बाई के रूप में पूर्ण कर चुके, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, जहां तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है तो 40 का आंकड़ा यहां पर कम से कम पार करना होगा टैंक कोबरा बी के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए क्विक पेस ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स एंड इज गॉन। इन फैक्ट he got just shot out of his crease at the last moment. In fact, his back foot just shot out of his crease and a fantastic work made by wicket keeper behind the stumps. तो बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद को कलेक्ट करते ही उन्होंने विकेट इस वक्त उखाड़ दिया, और बल्लेबाज का बैक फुट क्रीज से कुछ इंच बाहर रहा, और ऐसा कहा जा सकता है 1 से 2 इंच बाहर रहा, और इस बीच बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं अपना विकेट बचाने का, और चौथा विकेट गिर चुका है 17 for 4. The problems are now more building up for the batsmen of Tank Cobra B at this situation. In these critical circumstances, the man, number 6 batsman, is now comes out to the middle. आदि भट्ट इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव टेकन ब्रिलियंटली। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द एक्स्ट्रा कवर फील्डर, और जो फील्डर थे काफी लंबे कद के थे, हालांकि ऊपर की ओर ज्यादा उन्हें छलांग भी नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ हाथ उन्होंने अड़ाए कुछ हद तक उछलने के बाद, लेकिन गेंद को सही तरीके से लपकने में सफल, और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में आदि भट्ट का विकेट गिर चुका है। 3 overs completed, 17 for the loss of 5 wickets. The problems are now more building up for the batsmen of Tank Cobras B. Now just 2 overs left in their innings in overall calculation. So Pawan Pai, the number 7 batsman, is now comes out to the middle, और गेंदबाजी शुरू करते हुए श्रीनिवास, और चौथा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स यानी टैंक कोबरा एंड की ओर से, और सामना करते हुए इस वक्त प्रसाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन यहां पर चुरा लिया बाई के रूप में, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर। रन से चाहिए इस वक्त टैंक कोबरा बी के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को खेलने के प्रयास में चूके, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद इस वक्त गेंदबाज श्रीनिवास फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोर पर, फील्डर शायद वहां पर मौजूद है लेकिन थोड़े से पीछे, और आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को जब तक वो फील्ड करके थ्रो करे गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट का, तो विकेट यहां पर गिर चुका, लंगोर पर इस कैच को सफलतम लपक लिया गया था, और इस बीच जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट का, तो विकेट नंबर 6 गिर चुका है। 6th wicket down, 18 for the loss of 6 wickets. One more batsman is now comes out to the middle, number 8 batsman, और इस वक्त तो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त। बैट्समैन नेम वासुदेव। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर,
and a wide declared by umpire. Single run added, 19 on the board for the loss of 6 wickets. Still a ball left in this over और श्रीनिवास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को खेला straight into the hands of mid wicket, but the ball came after first bounce. Over number 4 completed, 19 on the board, 6 wicket lost, and now just a last over left in their innings. विघ्नेश शनाई गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ टैंक कोबरा बी की पारी में ओवर की पहली गेंद लेकर विघ्नेश गेंदबाजी शुरू करते हुए starts off with the wide and with that single run the scoreboard moving up to 20 on the board for losing 6 wicket. अब तक पहले 4 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है पड़ू तिरुपति के गेंदबाजों ने और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर ब्रिलियंटली सेव करना चाहा था लेकिन इस वक्त गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। जीतोड़ कोशिश इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जरूर की थी लेकिन गेंद उनके हाथों को चीरती हुई निकल गई इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन से बाहर छक्के के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक प्रसाद के बल्ले पे लगता हुआ। हेलो प्रसाद नायक अन्नी अनेक 6 मारणारी विजयराज पै हांगा लेकर 1000 रुपये गई। प्रसाद नायक अनेक 6 विजयराज पै लेकर 1000 रुपये। तो प्रसाद के लिए इनाम 1000 रुपए अगले छक्के के लिए घोषित किया गया है विजयराज पै इनकी ओर से और देखते हैं यहाँ पर प्रसाद छक्का लगा, बोल्ड आउट, जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन एंड लॉस इज ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। सो प्रसाद डिपार्ट्स लेकिन एक छोटी मगर बेहतर पारी उन्होंने खेली। 7th विकेट डाउन, 26 for 7, 4 balls left in their innings. New batsman, number 9 batsman Raghav is now comes out to the middle और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद निकल चुकी है, 1 रन का इजाफा। 27 now for the loss of 7 wickets और राघव ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और इस बीच विघ्नेश अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार, मछली एंड की ओर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन हिट वेरी हार्ड बट कांट फिनिश द गैप एज वेल और गेंद सीधे पहुंच चुकी है डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। 8th विकेट डाउन, 27 for 8. The wickets are falling like a pack of cards at this situation in the innings of टैंक कोब्रास बी। सिर्फ 2 विकेट इस वक्त सुरक्षित, 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। विकास पै नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज विघ्नेश, यह गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक विकास द्वारा लॉन्ग ऑन पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 28 for the loss of 8 wickets and now just a last ball left in their innings. अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी का और विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे उस अंतिम गेंद को बल्लेबाज राघव के लिए। The last ball of their innings is now coming up. ये गेंद इस बार उछाल दिया लॉन्ग ऑफ पर, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर दूसरा रन तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त रेफर किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर दूसरा रन बल्लेबाज पूरे कर चुके हैं या नहीं और तृतीय अंपायर देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं।
तो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त पड़ू तिरुपति के गेंदबाजों ने दी, फलस्वरूप इस वक्त कम से कम स्कोर में टैंक कोबरा बी के बल्लेबाजों को रोक कर रखने में सफल। और देखना ही है कि इस वक्त पड़ू तिरुपति के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक जो तय करते हैं यहाँ पर टैंक कोबरा बी के बल्लेबाज उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। हॅलो, नेक्स्ट मॅच टँक कोब्रास ए आणि जय हिंद क्रिकेटर्स कारकाळा दोन टीमाच्या कॅप्टन आणि टॉस आहे का? He's gone. Just a single run added in the final delivery of their innings. So 29 the score, scored by the batsmen of Tank Cobra B, and the target for Padu Tirupati is exactly 30. They have to score in the stipulated 5 overs with a run rate of exactly 6 runs per over. 30 balls and 30 runs needed for Padu Tirupati for victory, and they got 10 wickets in hand for them. The present equation shows for them, and their inning starts within just शॉर्ट वाइल। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर पड़ू तिरुपति की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಹಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ಎ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಕಾಮ್ ಬಾಕ್ಸ್. Thank you very much, Gopi. And we are into the innings of Padu Tirupati. Not a big total to chase down, just a 30 to win the match in 5 overs. That means asking run rate of exactly 6 runs per over. 30 balls and 30 runs required for the victory. Signal coming from umpire Dhanush towards our scorer Ratish. And at square leg, in fact, it is a backward point. And strikers umpire Dikshit. And the bowler will go in to start the proceedings. Lakshmish, the Vinayak and Srinivas, the successful opening pair, are in the middle. Left and right combination. Vinayak will go in to take the strike. For him, the fielder in the deep, one at deep long off and one at mid wicket. And altogether 5 men in the onside, 4 men in the offside region. Here is the first ball. There's Sam sings it hard, and he got the distance. Magnificent struck. Unbelievable, isn't it? Almost you can see the line of the ball, which is outside the line of off stump. The batter's intention is very clear that he wanted to go after the bowler. It's a slower one, enough time for the batter to read the line of the ball, and he played cross-batted stroke with the sheer timing and power. And he got the distance as well. 6 in the first ball. Good start here for the team of Padu Tirupati. Lakshmish from the Machali end. Pass umpire Dhanush. Right arm over the wicket. Again the short pitch, the same treatment, but this time square of the wicket. And ball absolutely sailing into the branches of the tree. The 6 number 2 from the bat of Vinayak. He is in hurry. After wanted to finish the match as quick as possible. 12 in 2. And the 12, which is a just a number of Vinayak.
and already got a 12 in 2. Will it go into a hat-trick 6? Wait and see. Vinayak. Balls drives that one. And the Westfield dive by the fielder. The backup by the fielder. Not a good backup. Pretty ordinary effort. We can see the body language of Tank Cobras. They already given up this match. Winning and losing is a part of cricket, but it is not a good sign. Just seeing the fielders absolutely not doing right job for the team. 6, 6 and 4. 16 in 3. Again, it's going to be a mighty one. That's absolutely a monumental. Even though ball is landed inside the boundary line because of the branches of the tree, which is almost inside the playing area. And that was a huge one there from the huge man. Vinayak already scored 22 in 4. And, well, it wanted to finish some things in 1 over. Tried to make some record. Again, driven off stop by the fielder at short mid-wicket. Oh, direct it. I think he's in trouble. He's in trouble, but he's also walking. You know exactly. No need to wait for that. Even Dhanush knows that. But sometime when you're having an advantage of the technology, why not? You need to take that. And straight away he's referred for the third umpire to watch whether the batter is safe or not. But body language of the batter saying that he's short of crease, absolutely a short of crease is gone. So entertainment innings, which is comes to an end. He played some enterprising cricketing strokes. Small cameo of 22 runs in 5 balls, which is comes to an end. Here from Vinayak, it's good enough for his team to win the match quite easily. The Vignesh is a new batter in. One more big striker of the ball. The experienced campaigner. He's got an opportunity to come in the number 3 position. But only 8 runs away from the victory. I'm not sure whether you're going to get the chance to bat or not. Because the Cynic, the one more big name in the form of wicketting is concerned, will going to take the strike of the last delivery of the power play over. And Lakshmish will going to deliver the last delivery of the power play over. 22 already in 5. Right arm over the wicket. Swings it hard. What a magnificent stroke. You can't get better than that, isn't it? As far as the slog sweep is concerned. Almost he drags the ball from outside the line of off stamp. One of his favorite, Srinivas, loves to play that shot, and his score jumps into 26 in 1 over. And all we can see, that's just 4 runs away from the victory. They wanted to finish the things too early. One of the fastest finish of this tournament. When Gopi is having a mic, I think the one match which is finished in 2 hours. And he's continued that commentary after that. But I am just wanted to see whether Gopi is coming to the mic or not. This time, that's it. The huge one. Vignesh finished the match in a style with a huge 6. Comprehensive victory in 7 deliveries. This has been outstanding batting display from the batters of Padu Tirupati. They're winning this match by 7 deliveries and 9 wickets. Huge one. And the very fastest match of the day, which is finished just right now. The man of the match which goes to, it's not for the batter, 100%, because the restricting the opposition for the 30 runs means it's always the big contribution from the bowler. So man who picked up 3 wickets for just 1 run in 1 over. The Pratik is the bowler, will going to be the man of the match for his wonderful bowling display. 1 over, no maiden, 1 run, and picked up 3 wickets. So that I request Pratik of Padu Tirupati, please come and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage at right of our commentary box. We'll take a short break in our commentary box. After the short break, myself will be in the match number 7.
फुडली मॅच जाल्लेल्या टँक कोब्रा वर्सेस पडू तिरुपती मॅचाच्या मॅन ऑफ दी मॅच प्रतीक लायक एक बौलिंग घाल न्हू तांगेल टिमाक एक लो स्कोरिंग रबेलेल्या I request extra player of both the teams please be reported here immediately. The extra player of Tank Cobras B as well as A, little correction, and extra player of team Jai Hind Games Club. Yes, we have Jai Hind Games Club extra player, just waiting for the Tank Cobras extra player here in our commentary box. All set now for the first over. Sujit will going to start the proceedings from the Machli end, and the batter in front of him will going to take the strike. Anirudh and Karthik. Karthik will be the striker. Sujit will be the bowler. From the Machli end, here he go. The first ball. Starts with the no ball. It's gone far away outside the line of the pitch. So that umpire Ravi Uppala called that no ball rightly. So free hit delivery. Straight away for Karthik. One without loss of any wicket. Bowler Sujit have to survive from this free hit delivery. Karthik, good striker of the ball. Swings and missed. Good survive from Sujit. You know exactly the batter definitely will going to try for the big shot. Pitching it a little bit short and good enough to defeat the bat of Karthik. No run scored. Second time. Balls dries nicely and well fielded by Vivek. Dr. Vivek just moving very quickly to his right and stops the ball. And meantime, both the batters completed the single. Two without loss of any wicket in the over. Number first is in progress. Sujit again with a short run up. Anirudh the batter. This time a lovely delivery indeed. Anirudh misjudging the line. The well within the reach of the batter. The last moment he left the ball, not offering any strokes, and wicketkeeper behind the stump. Bunty did the rest back to bowler. No run scored. Fourth time in this over. From the Machli end, right arm. Ball more. This is absolutely disappointment here for Anirudh because ball which is outside the line of leg stump. He misses the bat. Ball hits his leg. After hitting his leg, ball went into the stumps. This is a quite unusual and disappointment dismissal here for the bat. Anirudh, have a look at that one. This is disappointment. The face of the batter because it's not a wicket-taking delivery. But seeing that Sujit is did a great job that
The bowler is absolutely exposing his stump. Try to play that inside-out cricketing stroke. He's just following the batter. Bowled around his legs. And after ball hits his legs, he fell into the stumps. And he's back in the pavilion. It's 2 for 1. Jai Hind. I have lost huge wicket in the form of Anirudh. Replacing him is a new batter coming to the middle. Srinivas with the jersey number 2. As Sujit, the successful bowler, will going to continue from the Machli end. Pass umpire Ravi Uppala. Again, played it straight to the hands of the fielder at Cow Point region. No runs scored. Anirudh, the fielder down at Cow Point region, fields the ball. Back to bowler. The great over is in progress here from Sujit. Right arm over the wicket. This time appeal for leg before wicket, which might be the ball is just a little bit pitched outside the line of a leg stump. It might be the leg cutter is tried for the bowler. Umpire not interested. Good over. Great over there from Sujit. Outstanding first over. Power play over. We are seeing so far high scoring overs. But this is a 1 over in the power play. Sujit bowled brilliantly with a couple of runs after he bowled a no ball in the first ball. Everyone thought it might be a big over, but he's come back very strongly. He came back very strongly and bowled some excellent line and length. Picked up 1 wicket as well. Good start here for the team Tank Cobra A. It's 2 for 1 after completion of over number first. Bright sunny afternoon. Time is exactly 2:15 after that lunch break. Everybody knows that after the lunch break, definitely it's a lazy afternoon. And we can see there's some good number of crowds enjoying the game of cricket here in this beautiful UCG cricket ground, with under the shelter of huge trees surrounded this cricket ground. Has made this cricket ground more beautiful. And this prestigious Tank Cobras Trophy Season 4 under progress. Dilip brought into attack from the Tank Cobra end. Right arm over the wicket. Karthik, and this time umpire saying the ball is going to miss the leg stump. Maybe that was a half cutter bowled by Dilip, which pitched on the stump, middle stump. But because of the turn of the ball, it might be the benefit is given for the batter. That ball is just going down. And Dilip to continue. Again, swings and missed. Umpire will go in to call that wide. And with that extra score, moves on to 3 for 1. The over number second in his progress. Dilip, after that, power play, spread out field. Again, lovely line, great line. This time, Nagraj trying for the run out. Now, umpire is raising his finger rightly so. Excellent piece of fielding there by Nagraj at short mid wicket. Fields the ball, returns the ball quickly to the hands of the bowler. And this time, umpire has got evidence enough that the batter is short of his crease. So, straight away, in a naked eye, he's raised his finger because the batter is short of his crease. And the wicket number 2 back in the pavilion. Srinivas departs. It's 3 for 2. Jai Hind, the games team, are looking in trouble. After that, getting some inspiration from Sujit as he bowled a fantastic first over. Now Dilip is also continuing from the Tank Cobra end. Bowled so far the good line and length. So, new batter in is Raghavendra. Will go into face Dilip. Bowled him, cleaned him up. Magnificent delivery. Excellent. That is a Jaffer from the bowler. What a delivery that one. Absolutely unplayable. The batter has absolutely got a bad technique of playing the ball, isn't it? When you are playing your first ball, you need to be a little bit careful. You can't play across the line. If you want to play across the line, you need to get your eye in. Playing the first ball, such kind of cricketing stroke, they need to pay the penalty for that. All in sudden, the competition between run and the wicket. It's 3 for 3.
never looks like it's going to be a cricket scoreboard. It's like looks like the kabaddi scoreboard. 3-3. I mean, 3 runs and 3 wickets. Back in the pavilion, Radhakrishna, little master, but has got a potential of handling the pressure. Dilip is on fire. 4 time in this over. Right arm over the gate. Nicely played it down to cow point region. Oh, opportunity! This is the one more big wicket is back in the pavilion. Can you believe this? Wickets are tumbling. No run at all. No run at all. If you tell you, Radhakrishna, absolutely right call from him to say no for that one because they lost 3 wickets. Going for the risky run, I don't think it's going to be a smart thinking from the batter, but it's a bad thinking there by Raghavendra. As he trying for little correction, Shivaraj, the batter, is looking for the single when the ball is in the hands of that cow point fielder. Excellent piece of fielding by Rajat at cow point region. He is one of the experienced campaigner in the side. Picks the ball, returns the ball quickly to the hands of the bowler. And he is not in the picture in that occasion. 3 for 4, just like I mentioned, it is a kabaddi scoreboard. 3-4. And a lot of hard work is required from the batters of team Jai Hind. They wanted to back in the game. Now it's going to be disaster. And even the wicketkeeper and the short third man leg fielder has also missed it. They wanted to come back for the second, but they're not wanted to take any risk. And 2 runs added to total in the form of wides. With that wide scoreboard now moves on to 5. First time the scoreboard is defeating that number of wickets. 5-4. Again, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire. Well within the reach of the batter. Wicketkeeper fails to collect the ball. Quicker and faster one with that extra by scoreboard. Now moves on to 6 for 4. Dilip to Radhakrishna. Again played it to square of the wicket. Chance of run out. And it is not a good end to throw. Rajat might be try for in the non-strikers end. The opportunity is created. Anyhow, good over. One more tidy over. Dilip completed his second over. Completed his first over and 2 overs which is comes to an end after completion of over number 2. Searching for the right track. Team Jai Hind games team are 7 for 4. They're struggling in the middle, going exactly 3.5 runs per over. You are watching match number 7 of this prestigious Tank Cobras Trophy. 2025 season 4 is in progress. 2 teams are battling here for the victory. Tank Cobra A, they won their opening match, inaugural match, defeated formidable deadly Panthers in the opening match. Even Jai Hind also, they won their first match. Jai Hind, they are searching for their first victory. They lost their first match of the league stage match. Sohan appealed for leg before wicket. Umpire not interested, and leg by call by umpire. It might be the ball is going to miss the off stump because of that extra deviation in the ball. And 8 for 4 in the over number 3rd is in progress. Again off the back foot, played it a little bit square off the wicket for a single. Fumble from the fielder. And Gaurav, the fielder down at backward point region. And, recovered quickly after that misfield. 9 for 4 in the over number 3 is in progress. Very hot sun. It's not a good condition. It's absolutely very high humidity we are witnessing in this UCG ground. Radhakrishna tried to play across the line. Missed it completely. Against the spin, he wanted to get the ball on the onside region. Missed it completely. No run scored. Sohan. Oh, lovely delivery. Beautifully bowled, isn't it? Different one. Wrong one here from Sohan. Is bowled off cutter along the carpet.
And Radhakrishna have to play that one back to bowler. No other option at all. Again played it the square of the wicket. Nagaraj, the fielder, down at cow point region, rushing towards the ball. And scoreboard now moves on to 10 for 4 in the over number 3 is in progress. Go on. Expose his stumps. Try to play inside out cricketing stroke. This is once again the Gaurish. It's absolutely giving the opportunity to the bowler to hit the stumps, isn't it? Showing all the stumps means bowler absolutely know where to pitch the ball. And that was absolutely perfect incoming delivery coming from the hands of the bowler. Over number 3 which is comes to an end. 3 gone. After completion of over number 3, it's a 10 for 5. Over completed. 3 overs completed. It's 10 for 5. So Vivek brought into attack. Dr. Vivek Pai. So new batter in Vijit, is a tall man. Have to get some partnership badly for the team, Jai Hind, the games team. They're struggling to get the runs against a disciplined bowling performance by the bowlers of Cobra. Again starts with a beautiful delivery, slight a bit of inside the line. And the smallest little master Radhakrishna couldn't manage to reach that delivery by Vivek. Drives straight to the hands of the fielder, Nagaraj. Oh, the brother missing the throw of his elder brother. And absolutely, it's a good scenario as Nagaraj returns the ball to the hands of Vivek. But Vivek, it's a half volley. It's a very difficult throw for the bowler to pick that one. And played it again. Nagaraj is in a picture. Just a single. With the addition of that single, score moves on to 11 for 5. One more tidy over is in progress so far. And Vijit, the batter, will go to take the strike. Lofted, and looks like that will going to be a maximum. Yes, it is a tall man. Vijit, so easy for him, effortless. Absolutely effortless stroke. And effortless decision which is coming from Divit. Quite interesting decision, we can see that from umpire. To 17 for 5. Maybe getting some inspiration from Dikshit. Long off. The fielder there in the long off, and they will going to save that one. Only a single. 18 for 5. Last time in this over. Oh, there's going to be a punishable from the umpire, David, because need to be get some inspiration, because we have 3 Ds in the umpiring panel: Dikshit and Divit and Dhanush. Again, played it very nicely in the long on region for a single. With that single, over number 3 completed, 4 completed, it's 20 for 5. For 5, and still they're searching for the right track and struggling in the middle. And the previous over, the first, one of the best over in the innings of team, the games team, Jai Hind games team. They got a first better over. The previous one consists of 9 runs in that over of Vivek, because of the 6 which is coming from the blade of Vijit. The last over, and bowler will go into ball that last over from Machli end, Anirudh, and Radhakrishna will go into face Anirudh. Long off, long on, deep cow point, mid wicket, deep square leg, in front of square. The one fielder at cow corner, short fine leg, short mid wicket,
Short cover point and backward point. This time up and over, chip the ball very nicely. And a long chase here for Vivek to run back towards the deep cover point region before throw coming from him towards strikers, and ample time for Radhakrishna to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Cobra moves on to 22 for the loss of 5 wickets in the over number last is in progress. Radhakrishna swings and looks like the ball is defeated. It's bad chance of run out in a non-strikers end by call by umpire. And ball is absolutely has got an extra bounce, and the ball maybe hit some part of maybe the stone there in the pitch. Defeats the bat by call by umpire. 23 for 5. Last 4 balls remaining. Oh, this time played it quite a strange cricketing stroke by Vijit. Then completed 2 valuable runs and getting some important runs from the bat by Vijit. 25 comes up at last for Team Jai Hind. 25 in the last over. 3 balls remaining. Aniruddha wanted, Vijit, let's be correction, wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that one properly. But there will be a single anyhow. 26 for 5. Last 2 balls remaining in their innings. Radhakrishna will going to take the strike. Swings and missed. Exposes stumps. Looking for the improvising cricketing stroke. But the leg cutter coming from the hands of Aniruddha is good enough to defeat the bat of Radhakrishna. But no other option at all. He just wanted to get some big shot in the last over. Pays the penalty. The 6th wicket back in the pavilion at the score of 26. Aniruddha, Radhakrishna departs after scoring some 6 runs in 14 deliveries back in the pavilion. Ravi Kiran means rays of sun and played it nicely. They wanted a long off region. They wanted to come back for second, asking for trouble. Looks like the batter is maybe he's just short of crease or not. Wait and see. Umpires goes upstairs, asking for the 3rd umpire to give the decision. If the batsman is not out, then couple of runs. If the batter is out, then 1 run will be added to total. Let's wait and see. Is gone. That means only 1 run in the last delivery of the final over. And 27, 27 which is the total score, and 28 target for team Tank Cobras A to win this match. And wait to see how well the team Jai Hind will going to restrict them, and wait and see how quickly the Tank Cobra will going to chase this run. So we'll take a short break here, and after a short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश। 28 रनों का लक्ष्य इस वक्त टैंक कोबरा के सामने रखा है जय हिंद क्रिकेटर्स ने और उनकी पारी की शुरुआत होती है। पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 1 रन 90 लागत से नुकसान के पहले ओवर में। और मछली एंड की ओर से गेंदबाज राधा कृष्णा गेंदबाजी करते हैं और रजत के लिए नॉन स्ट्राइक पर मौजूद प्रसाद, और अगली गेंद लेकर इस वक्त राधा कृष्णा। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, ऑफ कटर गेंद थी, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई। इस वक्त रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 7 का द्वितीय अर्ध यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन। इस बार गेंद को अपील को पुरस्कृत इस वक्त करते हुए उंगली इस वक्त उठा दी अंपायर ने। Absolutely plumb in front. The first man departs. Rajat the man departs. Tank Cobra are now lose their first wicket. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कॉन्सेंट्रेट कर कर आते हुए, और इस गेंद पर बल्लेबाज ने आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, चूंकि और गेंद उनके बैक लेग पर टकराया और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उन्हें आउट घोषित करना है। फर्स्ट विकेट गॉन, इट्स 1 for 1। विजय राज का आगमन होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज के हैसियत से, और गेंदबाज राधा कृष्णा इस वक्त पिछले गेंद पर रजत का विकेट प्राप्त कर चुके हैं। इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज विजय राज के लिए, जो कि नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछाल दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है इस वक्त टैंक कोबरा के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 28 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और जहां तक सवाल है जय हिंद गेम्स क्लब के गेंदबाजों का, तो पहली ओवर से उन्हें घातक गेंदबाजी की जरूरत है। उनके गेंदबाजों को, अगर टैंक कोबरा के बल्लेबाजों को 29 रनों के लक्ष्य के अंदर उन्हें रोक कर रखना है तो। और राधा कृष्णा पहली बार, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त सामना करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन इस वक्त कुछ हद तक शायद गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए लाइन के बाहर टिप्पा खाए थे, और इस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए बल्लेबाज, माफ कीजिए, गेंदबाज राधा कृष्णा माफ कीजिए, जो गेंदबाज हैं, बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए 4 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। और राधा कृष्णा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला इस वक्त, गेंद लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो प्रसाद का स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन, और गेंद लंगोन सीमा रेखा से बाहर, तो छक्का इस वक्त जुड़ चुका है। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रसाद के बल्ले से लगता हुआ, और इस बीच राधा कृष्णा अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। प्रसाद छक्का झड़ने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास यहां पर प्राप्त करते हुए, और राधा कृष्णा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि ओवर की समाप्ति 8 रन पहले ओवर में बने। 1 विकेट खोने के बाद टैंक कोबरा ने बनाए हैं यहां पर 28 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। अब ठीक 20 रन चाहिए, बचे हुए 24 गेंदें यानी 4 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 5 रन प्रति ओवर। 20 required in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries, and this is going to be really testing time for the bowlers of Jai Hind the Games Club at the situation. स्ट्रीट स्प्रिंट मंजेश्वर आणि नाशिक सारमाल कारकल 2 टीमांनी टॉस येवका म्हणून विनंती. तो इस वक्त गेंदबाज
अनिरुद्ध गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए। अगला मैच क्लासिक का सालमार कारकल और कास्ट्री फ्रेंड्स मंजेश्वर के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट निवेदन दरख्वास्त करता हूं कि टॉस के लिए कृपया स्टेज पर संपर्क करें। और पहली गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से रोक ली गई है। शायद वहां पर बेहतरीन फील्डिंग फील्डर ने की। जिस तरीके से गेंदबाज ने ताली बजाई तो इस वजह से अंदाजा वहां पर लगाया जा सकता है कि गेंद को बेहतर तरीके से सीमा रेखा के अंदर रोका गया था। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अनिरुद्ध इस वक्त प्रसाद सामना करने के लिए तैयार। अनिरुद्ध की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और अनिरुद्ध गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विजय राज के लिए गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन फीडर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। करारा प्रहार जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 11 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इन द एयर, चांस एंड Teo dropped that one. He dropped that one. Straight forward chance gone in vain. गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में लपकने में असफल। और बल्लेबाज यहां पर जीवदान के साथ साथ 1 रन प्राप्त करते हुए। और ऐसा कहना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी इज नॉट गॉन इन वेन। और गेंदबाज अनिरुद्ध अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया टॉप एज, एक बार फिर से स्क्वायर लेग फील्डर के लिए इस वक्त मौका। इस बार कैच छूट चुका है। इस बार कुछ हद तक मुश्किल सा कैच अपने पीछे की ओर जाते हुए गेंद को उन्होंने लपकना चाहा लेकिन गेंद उनके हाथों से चूकती हुई और आखिरकार ये मौका भी गंवाते हैं। तो दोनों बल्लेबाज 2 मौकों में यहां पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं पिछले 2 अंतिम गेंद में। और अनिरुद्ध इस ओवर में अंतिम बार प्रसाद के लिए। यह गेंद इस बार उछाला एक बार फिर से, लेकिन नहीं, इस बार फील्डर काफी पीछे। जस्ट अ सिंगल। 6 singles considered by the bowler Anirudh in this over. And after 2 overs, 14 on the board. 6 runs came from this over. 14 for the loss of 1 wicket. After 2 overs and 14 more runs, now they have to score for victory in remaining 3 overs. तो 18 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए। इस श्रृंखला के लिए हर छक्के के लिए 300 रुपए का नगद पुरस्कार टैंक कोबरा द्वारा घोषित किया गया है। और वो 300 रुपए हर छक्के के लिए सेव लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रदान करेंगे। टैंक कोबरा फॉर नोबल कॉस्ट के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। और पिछले साल 45,000 रुपए जो इकट्ठा हुए थे इन छक्कों की बदौलत, वो 45,000 रुपए एक कॉलेज के छात्रा के लिए, कॉलेज की लड़की के शिक्षण के व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रदान किया था। 45,000 रुपए, 45,000 donated by all the members of Tank Cobra for the education of a college girl last year. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन सामाजिक कार्य, सोशल वर्क टैंक कोबरा करते हुए, और निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी टैंक कोबरा के द्वारा ऐसे सामाजिक कार्य हो और उनका भविष्य यहां पर उज्जवल रहे। इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। गेंद को उछाला, उतना आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक जरूर नहीं था लेकिन प्लेसमेंट सही। इस वक्त कोई फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट पर मौजूद नहीं। 4 रनों के साथ गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके। 18 ऑन द बोर्ड, 10 रिक्वायर्ड, 17 बॉल्स रिमाइनिंग। और राघवेंद्र इस वक्त अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। प्रसाद सामना करते हुए। ये गेंद धीमी गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा। 19 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket in the over number 3 in progress. That's better. In the air, straight into the hands of mid wicket. And that is the
एंड ऑफ प्रसाद। द गेंद को उछाला जरूर लेकिन उतना ऊंचा नहीं कि गेंद इनफील्ड क्लियर कर सके। डीप मिड विकेट पर अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए इस कैच को लपकने में सफल। तो प्रसाद की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। प्रसाद स्कोर 13 runs including 1 6 and a 4 and he's backing to pavilion and a wicket loss. It's 19 for 2. Prasad departs. डॉक्टर विवेक का आगमन यहां पर होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और सामना करेंगे इस वक्त राघवेंद्र का जो गेंदबाज है मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर था ना। डीप मिड विकेट ये गेंद बाउंड ऑफ हिज लेग्स। इस बार द बॉल टर्न्ड अ लॉट एट द लास्ट मोमेंट देन द बैट्समैन एक्सपेक्टेड और गेंद काफी घुमाव लेती हुई अंदर की ओर आए। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था चूंकि और गेंद उनके पैर और बल्ले के बीच से निकलकर सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए। बाउल्ड अराउंड हिज लेग्स। बिल्स आर डिस्टर्ब्ड। वन मोर विकेट फॉलन। कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर राघवेंद्र and now he is on a hat trick and now Vivek departs in his very first delivery for Golden Duck. नागराज का आगमन होता हुआ नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विवेक तैयार। विवेक इनफैक्ट राघवेंद्र इज नाउ ऑन अ हैट्रिक और देखना है कि राघवेंद्र गेंदबाज अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं नहीं। हैट्रिक बॉल कम्स। ये गेंद उछाल दिया गेंद को डीप मिड विकेट पर। फील्डर मौजूद वहां पर एक रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वहां पर स्ट्राइकर के बल्लेबाज कुछ खास दिलचस्पी उन्होंने नहीं उठाई दूसरा रन न पूर्ण करने में। सिंगल रन एडेड। 20 runs ऑन द बोर्ड। स्टिल 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर। राघवेंद्र अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार विजय राज के लिए यह गेंद ड्राइव करना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में जगह नहीं बना पाए। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर Raghavendra comes bowling to Vijay Raj. ये क्या quick piece of work and a wide declared by umpire. बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 now for the loss of 1 wicket. Still 7 runs required for victory. अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार। Lofted and this time he's got the distance. So the scores are now level. 27 on the board. 3 overs completed. And now just the last 1 run required for victory. 2 ओवर का खेल बाकी। देखते हैं यहाँ पर और कितने गेंद बल्लेबाज लेते हैं उस 1 रन को बनाने के लिए। 4th over starts in their innings. विनय स्टार्टिंग फ्रेश ओवर। 4th over starts और पहली गेंद लेकर तैयार। सिर्फ एकमात्र रन चाहिए विजय के लिए टैंक कोबरा को इस बार जो विजय दर्ज करने के लिए। पहली गेंद द फर्स्ट बॉल कम्स। This time driven that one down to mid wicket side at misfield and they completed a single run. That's it. Comprehensive victory for Tank Cobra by 7 wickets defeating Jai Hind Games Club, and with that 7 wickets comprehensive victory, they back the complete points. So the match number 7 of this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy Season 4 2025 has been came to an end. So man of the match of this match award goes to Prasad, who batted very well, scoring 13 runs
And Prasad is now adjudged man of the match. I request Prasad of Tank Cobras, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. Prasad of Tank Cobra adjudged man of the match. Next match, match number 8 is now coming up between the teams of Karkala and Manjeshwar. Will clash each other in the next match. And we are just taking a short break and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English. In the next match, we're going to commence. Thank you. हॅलो या मॅच कार स्टेट फ्रेंड्स मंजेश्वर टॉस विन घेऊन फिल्डिंग घेतला. तशीच अंगशिल्या जेवण जैनातील प्लेयर्स जेवण जैनातील प्लेयर्स आणि ऑर्गनायझर्स आणि पार्टिसिपंट्स स्पेक्टेटर्स दैकोन जेवण कर का आणि एक 10-15 मिनिट भितर काउंटर क्लोज जाता. संदेश Thank you very much. And signal coming from Dhanush is the start of the match number 8. And team Karshet Manjeshwar takes on Classic Salmara Karkala CSK. And I request extra player of a fielding team, please be reported here. Karshet Manjeshwar ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಶೆಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. The first ball, right arm over the wicket, bowls nicely driven towards a wideish long on. And before the fielder from cow corner will go into field the ball, ample time for the batter to complete the single. So first run here for the Classic Karkal. Karthik is off the mark, 1. Nitish second time in this over. To Varun Shanbag. Varun will go into face his first delivery. Played it down to mid-off, not for run.
No run scored. So Nitesh ball that delivery which is coming into the batter, the off cutter. And Varun played that one to mid-off region, not for run. Third time in this over from the Machli end. Right, Amovika drives that one nicely down to long off region for a walkable single. With that addition of that single scope, but moves on to 2 on the board. Both the opening batters are off the mark with a single. And over number first is in progress. Power play over is in progress. And so far, 3 very good deliveries from the bowler Nitesh. Again, a lovely shot. Played it nicely with the square of the wicket. Chase here for the fielder from the cover point. And before the throw coming from the deep, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. And with that 2 valuable runs, Karthik, his individual score now moves on to 3. Total score 4 on the board. 4 without loss of any wicket. This time, nicely driven. It's going to be good enough. From the power play, there will be no fielder in the deep in the onside region in the square leg. Once he defeats the infield, ball with the direction of the wind is absolutely lightning fast outfield here in USG cricket ground. Went into the fence very quickly for 4 runs. Not a good line to ball when you are not having enough fielder in the deep. 8 without loss of any wicket. This time reverse sweep comes into play. Again the defeats the infield. Again the chase here for the fielder. 3 fielders behind the ball, but ball winning the race against that 3 fielders. So back-to-back 2 boundaries here for the batter. Karthik is getting some important runs from his bat after completion of first over. Good start here for classic Salmara Karkal. 12 without loss of any wicket. Every 6 there will be a 300 rupees and from Tank Cobra, and this is with the noble cause Save Life Charitable Trust, that all amounts will go into that trust for the noble cause. In the last year they donated 45,000 rupees for the education of financially background college girl, and with the absolutely with a good concept from Tank Cobra. They are organizing fantastic cricket tournament. Season 4 is in progress. The match number 8. And the second over will go into start from Tank Cobra and chipped it away towards the cover point region. The fielder is there in the deep in the cover point before we'll go into run across his left to field the ball. Ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. With that couple of runs, Cobra moves on to 14 on the board. Sandeep brought into attack. Sandy with the jersey number 18 round the wicket to Varun. This time try to york the batsman. The batter taking that one in the pull. Low full toss, lovely shot. Again the efforts which is not good enough. And one more single, one more boundary there. Takes the total score into 18 now. And welcome to Trivikram. My good friend, the very good Kannada commentator. He will going to join in our commentary box as well as a co-commentator. 18 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Sandy round the wicket. Varun swings and swings it hard. What a shot! That was a perfect on drive. Little margin for and Varun just stretching his front foot and played that exquisite slog shape shot down to deep square leg boundary for a maximum right from the middle of the bat. Perfect position, picking up the line and land so quickly and dispatched that one into the deep square leg boundary for a 6-24 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Sandy round the wicket bowls. This time it's going to be a punishable. It's all happening when the batter is going to hit you. The very next ball, we can see that the bowler is under pressure. And with that under pressure, just we can see the result, the wide delivery, 25.
without loss of any wicket. Sandy. Again, the second wide, and one more wide outside the leg stump. And Dikshit. And spreading his wings and saying that will going to be a wide. This time it's going to be one more. Varun Shanbag is on fire. What a shot. That was absolutely a huge one. The ball is gone many miles out of the park. You can't bowl to his arc. When the ball is in an arc, the ball will going to disappear out of the park. This is what Varun Shanbag is knowing for. He's failed to contribute in the first match, but he's such a good striker of the ball. Once he get his eye in, he's unstoppable. 32 already on the board without loss of any wicket. Again, the bowler is under tremendous pressure. One more wide, third wide of this over. With a lot of exercise which is given for Dikshit in the hot condition by the bowler. 33 without loss of any wicket. This time he didn't time it well. But the fielder will not going to get there or not. Yes, he got that catch in the wideish long on. Shanbag is not happy with himself. You know exactly. He can dispatch that one out of the park. But he's a little bit early into the strokes. Extra bounce. He's really missing the timing of that stroke. And pays the penalty. But a very good innings of Varun Shanbag, which is comes to an end. And bowler at last taking his long breath. Sandeep. 20 boundaries and 43 sixes so far in this tournament. And just I wanted to calculate. The Gopi is a very good statistician as far as the calculation is concerned. 43 sixes into 300 rupees. Per 6, 300 rupees. 12,900 already in the 6, which is Tank Cobra has announced 300 per 6 and already 43 sixes. Now it's going to be a one more wide. And Dikshit absolutely a busy customer in the middle more than the batter. And again signal it's a wide. 35 for the loss of one wicket. Sandy. Again bowls outside the line of leg stump, going to be one more wide. The absolutely disaster and indisciplined bowling performance here from Sandy. 25 runs already scored in this over. Again the batsman wanted to go for the mighty drive. Prashant missing this golden opportunity. So what a over here for the team Classic. They got some runs in this over with the help of some massive sixes and some extra in the form of wides. Altogether the massive over which is comes to an end of Sandeep, they consist of 25 runs in that over. 37 for the loss of one wicket after completion of over number 2. Sumit is a new bowler in. Will go into bowl the third over from the Machali end. Time is exactly 5:03 in the afternoon. And you are watching the match number 8 of the prestigious Tank Cobras Trophy 2025 Season 4 in progress. The tournament which is not only supporting the cricket but along with that they're doing some social work outside the line of off stump. Lovely delivery to start with. The line which is so good for the right-hander batsman, pitching in the middle. Slight a bit of away going delivery leg cutter from bowler Sumit. The batter missed it completely. Karthik. This time going to be a wide. Lot of extras we can see in this particular innings. 38 for the loss of one wicket. Sumit. Right arm round the wicket. Pass umpire Dhanush. This time hit that one pretty well. And the flatter version, that ball went into the fence for a 6. The Karthik joining the party. This time the ball almost coming around the legs of the batter. The batter has got enough time to swing his arm. And he just muscles that one into the mid-wicket for a 6.
44 for the loss of 1 wicket. The classic Karkal are cruising towards a huge total. Needed to be. They are absolutely a must-win match for them. They lost their first match very badly. Appeal for something. Pitching outside the line of leg stump. It's very difficult to give the leg before. Of course, it's going to be leg by. In fact, and Cobra now moves on to 45 for the loss of 1 wicket in the over. Number 3 is in progress. Round the wicket, right arm. Again, it's an appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Good comeback here by the bowler. Prashant will going to take the strike. Round the wicket, Sumit bowls. Again, going to be a one more extra. This is going to be a record number of extra, I want to tell you, in this particular innings. 46 for the loss of 1 wicket. Lovely delivery. This is a flighted one. They need to be brave enough if one were giving the more flight in the delivery. A different one. Leg spinner, typical a flighted leg spin delivery. The no run scored. Oh, lovely delivery. Beautifully done by the wicketkeeper behind the stump as well. Caught. The wicketkeeper is very confident. Umpire Dixit having big smile and have a look at the wicketkeeper. He's almost, yes, asking. He's telling that I wanted to go for the third umpire. But the wicketkeeper can't go for the third umpire. Squalag umpire have to go for the third umpire. And now Dixit is saying that it's not good enough to call for the third umpire. And now Dixit explaining that what really happened there. Might be the some part of his boot is inside the line. What umpire is talking with the fielders. So 46 for loss of 1 wicket. 3 overs completed and 2 overs remaining. Anant will going to bowl the last but one. That is penultimate over. 46, which is a total score. And the team Karshit Manjeshwar have to bounce back with some good overs. But what we are seeing that the 6, which is absolutely coming in a big numbers here, and Dixit on his own style signaling that is going to be a 6. And 43 for the loss of 1 wicket. The 6 number 44, which is registered. And scoreboard jumps into 52. The 50 comes off here for the Karshit Manjeshwar. They got a 52 for the loss of 1 wicket. This time he wanted to go for the one more. But who is going to take the catch here? The mid-off fielder completed the catch. Narasimha down at short mid-off region. It's not an easy catch when the ball is high up in the air. The fielder have to get his eye in to deal with some rays of sun as well. And all we can see that Narasimha making no mistake at all. Taken that very good catch. The 52 for the loss of 2 wicket. The new batter in, just number 11. Kiran coming to the middle. The Karthik, after contributing a valuable runs from his bat, 23 valuable runs, is back in the pavilion. Lovely delivery. If the flighted one, extra bounce. The good enough for the new batter Kiran. Is completely beaten by the flight of the delivery. Again, simple delivery, but we can see that consistency in that line and length. The batter again missed it completely. Very interesting bowling action as well as the line. This is going to be a wide. They wanted to go for the extra run as well. Wide plus 1, 2 to the total.
With that addition of that extra scoreboard, moves on to 55, 54 on the board, lead correction. This time hammers that one. That was a clean hit, as clean as a whistle. And absolutely fantastic struck coming from the blade of the batter Prashant Pai. And score straight away into 60 for the loss of 2 wickets. So 60 for 2. So far 62, which is the highest total score in the day. And it might be the big one. This time it's going to be a chance. No chance. One bounce or lovely stop by Gautam. The big man did a great job in the deep, stopping certain boundary for his team. Excellent technique there from Gautam to stop the boundary. After completion of over number 4, total score 61 for the loss of 2 wickets. 62, correction. 62 for loss of 2 wickets. Last over remaining in the innings of CSK. CSK, it's not Chennai Super Kings, but this is classic Salmara Karkala. CSK. So from the Machli end, the bowler brought into attack to bowl the last over, Subramanya. And the batter in front of him is jersey number 11, Kiran. Have to open the account from his bat. Oh, have to open the account, and what a way to open the account with the huge 6 down to deep square leg boundary. This is an absolutely massive one. What a shot, absolutely majestic stroke which is coming from the blade of the batter Kiran. That ball went many miles out of the boundary line. And the highest total score of the tournament, 68 now for Classic. Now it's a 69 on the board. Prashant, the batter, little correction. Kiran, the batter who hit the 6. Again played it very nicely and clearing the mid wicket. Little bit correction. The previous one, Prashant hits the 6. Now Kiran joining the party. Hit that one down to mid wicket for a 6. Slight bit of confusion in the name. But anyhow, 75. One of the highest total score of the tournament. The confusion because the both are having a same jersey number. 1-1-11. This is what the confusion for our scorer, for everyone. Again played it very nicely down to the square leg. The runs are coming like a fast flowing waters of the rivers in the last over. And with that boundary score, moves on to 79 for the loss of 2 wickets. Subramanya absolutely furnished by both the batters. Again played it very nicely. This time the fielder is there in the deep. At deep square leg in front of square. With that addition of that single score, moves on to 80 for the loss of 2 wickets. Lovely delivery indeed. Faster and quicker one. That's it. Classic. There will be an absolutely classic batting performance there from Classic Salmar Kharkal. They finished their innings with an 80 in the stipulated 5 overs, one of the highest score of the tournament by Classic Kharkal. And they set a target of 81 to win the match for the team Manjeshwar Karshit. And wait and see how Manjeshwar Karshit will going to climb this mountain of runs. And wait and see how well the bowlers will going to depend the effort of the batters of Classic. We'll take a short break, and after a short break, the first time I would like to invite Trivikram for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. It's over to Trivikram. Thank you. Hello. Next match, Giant Cricketers Karkala and Deadly Panthers Cordial.
या दोन टीमा कॅप्टनाने टॉसाक स्टेजाला येऊ का? जय हिंद क्रिकेटर्स कारकाळा आणि डेडली पॅन्थर्स कोडियाल या दोन टीमा कॅप्टनाने टॉसाला येऊ का? Thank you. Little bit correction. The language is going to be in Hindi from Trivikram. Thank you. जी हाँ, स्वागत है सभी को इस बार टैंक कोब्रा ट्रॉफी सीजन 4 में। और इस वक्त आप देख रहे हैं काफी शानदार मैच इस बार क्लासिक क्रिकेटर्स और कार्शिक फ्रेंड्स मंजेश्वरा के बीच में। देखना होगा क्या इतने बड़े लक्ष्य को आसानी से बेचते हैं या स्ट्रगल करते, देखना पड़ेगा इस बार। और बल्लेबाजी के लिए कार्शिक फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से कार्तिक और दूसरे छोर पर तो हाँ, इस बार बल्लेबाजी के लिए कार्तिक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हॅलो डेडली पॅन्थर्स कोडियाल आजी कॅप्टन गौतम काही असणारी टॉस येऊ का? जय हिंद आज कॅप्टन तुमका रखतस नितेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और गेंदबाजी में वरुण शानबाग इस बार गेंदबाजी करते हुए। क्या देखना पड़ेगा कार्तिक का पहले ओवर में कितने छक्के झटका देंगे और रन्स के करीब कितने तेजी से पहुंचेंगे इस बार, देखना पड़ेगा। काफी खूबसूरत सा ये वातावरण इधर उर्वा के क्रिकेट मैदान पर। और पहली गेंद इस बार वरुण सामना करते हुए कार्तिक। पहली गेंद इस बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक रन टीम के खाते पर जाते हुए बिना गेंद गवाए। दूसरी बार उठाकर मारा गेंद को, गेंद हवा में लेकिन नो मैंस लैंड पर गिरता हुआ। और इसी के साथ एक रन आसानी से लेते हुए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट किया आसानी से। और अगर इसी तरह स्ट्राइक रोटेट करके खेलेंगे तो मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर स्ट्राइक रोटेट किया तो गेंदबाजी में जो गेंदबाज हैं उनको बहुत सा तकलीफ सहना होगा, क्योंकि बल्लेबाज अगर बदलते रहेंगे तो गेंदबाजी करने में भी उतनी ही मुश्किलता होते हैं। और इस बार गेंद हवा में, विकेट गिरने की संभावना है इधर। और विकेट चटकाते हुए इधर वरुण शानबाग। जाना होगा वापस इधर नीतीश को पेविलियन के ओर। ललचाया इधर, काफी फ्लाइटेड सा डिलीवर था, लेकिन लालच बुरी है। इसी के साथ जाना होगा वापस बल्लेबाज को पेविलियन के ओर। इसी के साथ एक विकेट गिरता हुआ, टीम का स्कोर बढ़कर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज गौतम, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। देखना होगा क्या गौतम इस मैच पर अपने टीम के लिए कैसा प्रदर्शन दिखाएंगे। काफी हद तक उम्मीद है इन पर, इन खंडों पर बहुत सारे उम्मीद है। क्या देखना पड़ेगा, इस उम्मीद पर ये खरे उतरते हैं, क्या देखना पड़ेगा इस बार। गौतम, काफी खूबसूरत शॉट, अपील और रनआउट की संभावनाएं थी, लेकिन सही समय पर कार्तिक का क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। और एक रन टीम के खाते पर जुड़ते हुए लेग बाय का इशारा अंपायर का। टीम का स्कोर बढ़कर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कार्तिक जो सामना करते हैं वरुण को।
देखना होगा क्या इस ओवर में अभी भी बड़ी हिट आनी बाकी है, क्या इस ओवर में भी एक दो बड़ी हिट आएंगे, क्या इस बार उठाने का कोशिश था लेकिन वाइड संपर्क नहीं हुआ बल्ले से और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 4 रन आ चुके हैं टीम के स्कोरबोर्ड पर। इस बार गेंद हवा में सीधा उठाया लेकिन उधर विकेट गिरता हुआ जाना होगा वापस कार्तिक को पेविलियन के ओर। वरुण का बहुत आक्रामकता का गेंदबाजी इस बार मछली एंड से खूबसूरत सा ये गेंदबाजी का प्रदर्शन। इधर दूसरा बैट्समैन भी वापस पेविलियन की ओर जाते हुए। नए बल्लेबाज इस बार महेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए काशिद फ्रेंड्स मंजेश्वरा की ओर से। आखिरी गेंद इस ओवर के वरुण द्वारा। देखना पड़ेगा क्या इस ओवर में अभी भी बड़ी हिट नहीं आई है, काफी हद तक जरूरी है ये एक बड़ा शॉट, लेकिन इस बार काफी खूबसूरत सा शॉट लेकिन डॉट होते हुए इधर बल्लेबाज। इसी के साथ पहली ओवर के समाप्त होने पर टीम का स्कोर बढ़कर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी हद तक बड़े टारगेट इधर दिया है। 81 is a target, the highest target ever in this tournament so far. बहुत बड़ा लक्ष्य इधर पेश किया है CSK क्लासिक सारमार कारखला की टीम ने। और गेंदबाज इस बार Prashant is a new bowler from CSK this time. Prashant Pai will be the bowling. This time ball is in the air. Gained हवा में. Wicket गिरता हुआ जाना होगा वापस इधर गौतम को पेविलियन के और। बड़ी हिट की बहुत जरूरी थी लेकिन इस हिट को वो अपने टीम के खाते पर जोड़ नहीं सके। हालांकि उनका एक विकेट टीम के स्कोरबोर्ड पर नजर आता हुआ। बल्लेबाज वापस जाते हुए इस बार और नए बल्लेबाज इस बार कास्ट्रेट फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से मनोहर। साझेदारी इधर बहुत जरूरी है लेकिन साझेदारी के साथ भी रन्स भी उतने ही आवश्यकता है। अगर रन्स कमाएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी इस बड़े लक्ष्य। और गेंद हवा में इस बार पहली गेंद को हवा में उछाला लेकिन आते ही जाना होगा वापस पेविलियन के और। पहली गेंद पर अपने विकेट गंवाते हुए इधर मनोहर हवाई फायर से करना चाहते थे शुरुआत लेकिन उतना अच्छा संपर्क ना होने के कारण सीधा हाथ पर दे बैठे गेंद और विकेट अपने गंवाते हुए। इस बार नए बल्लेबाज काशिक फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से नरसिम्हा। काफी अनुभवी खिलाड़ी नरसिम्हा इस बार क्रीज पर आते हुए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इधर महेश जो है खड़े हुए हैं। नच्चन एक सिक्स मारलारी 5 रुपये डेडली गौतम लेकारी। इस बार पहली गेंद पर रनआउट की संभावना इधर विकेट छटकाते हुए जाना होगा इधर। ना कोई तालमेल दिखाई देते हुए इधर दोनों बल्लेबाजों के बीच में बिना बात किए हुए दौड़ पड़े इधर विकेट गंवाते हुए नरसिम्हा और महेश के बीच में। और महेश को वापस पेविलियन की ओर जाना पड़ेगा और इसी के साथ एक और विकेट गिरते हुए नए बल्लेबाज इस बार संदीप बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए काशिद फ्रेंड्स मंजेश्वरा की ओर से।
आखिरी 3 गेंद बचे इस ओवर के। प्रशांत द्वारा 5 विकेट गिर चुके हैं। इस बार गेंद हवा में, हवाई फायर, पहली गेंद सीधा सीमा रेखा के पार, 6 रन अपने खाते पे जोड़ते हुए आते ही आक्रामकता अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए इधर बल्लेबाज, खूबसूरत सा ये शॉट, 6 रन, अविश्वसनीय शॉट इधर संदीप द्वारा। टीम का स्कोर बढ़कर 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इधर भी मारना चाहते थे लेकिन क्लीन बोल्ड कर दिया, विकेट गिरा। इधर आकर ही आक्रामकता से दिखाई दे रहे थे, काफी खतरा महसूस कर रहे थे सीएसके की टीम, लेकिन विकेट गिरा इधर और काफी हद तक मामला शांत होते हुए जाना होगा वापस इधर संदीप को वापस पेविलियन के। और इसी के साथ नए बल्लेबाज सुधीर, कास्ट्रेट फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से। इस बार गेंद वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर के सामना करते हुए सुधीर। इस बार गेंद हवा में, खूबसूरत सा शॉट है लेकिन 6 रन अपने खाते पे जोड़ते हुए खूबसूरत सा शॉट इधर सुधीर का, लेकिन इधर रन्स बहुत जरूरी है और भी आवश्यकता है रन्स का। पेविलियन से ही सेट होकर आ रहे हैं इधर बल्लेबाज, सिक्सर मार रहे आते ही। खूबसूरत सा ये नजारा, बहुत ही अच्छा ये बल्लेबाजी इधर सुधीर द्वारा। काफी आसान नहीं है कि आते ही आप छक्का जड़ दे एक सेट बॉलर को जिन्होंने 2 विकेट चटका चुके हैं अपने टीम के, लेकिन आते ही चौका मारना एक बहुत ही मुश्किल का काम है। और इसी के साथ गणेश इस बार नए बल्लेबाज, गेंदबाज, काफी अनुभवी खिलाड़ी है सीएसके के ओर से इस बार सामना करते हुए। और एक अनुभवी खिलाड़ी नरसिम्हा। देखना होगा क्या नरसिम्हा इस ओवर में बड़ी हिट लगाते हैं या ऐसे ही मुरझा जाते हैं, देखना पड़ेगा। इस बार नरसिम्हा पहली गेंद सामना करते हुए इधर रिवर्स खेलने की कोशिश को, बहुत ही खूबसूरत सा शॉट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 रन अपने टीम के लिए बटोर पाएंगे। चौके की बहुत जरूरत है, छक्के की बहुत जरूरत है, लेकिन इधर तालमेल बनाते हुए एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए इधर नरसिम्हा। इस बार भी रिवर्स खेलने की कोशिश थी लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ पाए गेंद को बीट होते हुए इधर। बहुत ही खूबसूरत सा कमबैक इधर गणेश द्वारा। और एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन सिर्फ 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। इस बार बल्लेबाजी के लिए सुधीर उठाया गेंद को सीधा हवा में, इधर कैच पकड़ते हुए जाना होगा वापस सुधीर को पेविलियन की ओर। खूबसूरत सा शॉट था लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया और विकेट को गवा बैठे अपने। विकेट गवाया सुधीर ने और वापस जाते हुए इधर सुधीर और नए बल्लेबाज रविराज। ये भी इस मैदान पर काफी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, काफी हद तक आक्रामक भी साबित हुए अपने इन अनुभव से, लेकिन देखना होगा क्या रविराज अपने इस टीम को किस तरह आपातकाल में रक्षा करेंगे। अभी भी बहुत से रन बनने बाकी हैं अपने टीम के लिए। इस बार खूबसूरत सा शॉट, डॉट होते हुए उधर फील्डर हर जगह मौजूद। रन्स चुराना बहुत मुश्किल है इन हालातों में, लेकिन हवाई फायर बहुत जरूरी है
लेकिन हवाई फायर होते ही काफी हद तक कैचेस हमें नजर आए हैं और इसी के साथ ओवर के समाप्ति। टीम का स्कोर बढ़कर 21 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। नए गेंदबाज इस बार सीएसके के ओर से किरण। किरण इधर गेंदबाजी के विभाग से आते हुए और सामना करते हुए इधर रविराज मंजेश्वर के ओर से इस बार काफी लकी इधर साबित होते हुए रविराज बिल्कुल नहीं पढ़ पाए गेंद को। सिंगल लेने की चाहती लेकिन बैट और विकेट के बीच से गेंद निकलते हुए विकेट कीपर बीट हुए और इसी के साथ एक रन आसानी से अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए। और इस बार नरसिम्हा बहुत से खूबसूरत शॉट, लेकिन हवाई फायर की बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ जमीन पर खेलते हुए इधर दोनों बल्लेबाज काफी हद तक इधर स्ट्रगल करते हुए। इस बार और एक खूबसूरत सा शॉट, लेकिन सिर्फ सिंगल्स में ही खेलते हुए। सिंगल्स में ही खेलेंगे तो काम नहीं बनता, क्योंकि हवाई फायर जरूरी है, अत्यंत जरूरी है इस समय पर। और आखिरी के 2 गेंद बचे इस ओवर के। नरसिम्हा इस बार सामना करते हुए किरण को। इस बार गेंद हवा में, सिर्फ एक रन बटोरते हुए इधर दोनों बल्लेबाज। रविराज जस्ट सिंगल। Score moves on to 26 with the loss of 7 wickets. The new bowler, Manjunath from CSK. This time, Raviraj beautifully struck to the single. Just a single coming onto the scoreboards. 27. 27 is the score. This time, wanted to go for a beautiful shot, yet चौके की बहुत आवश्यकता है, छक्का मारने का भी बहुत आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ सिंगल्स या डबल्स के लिए खेलते हैं इधर दोनों बल्लेबाज। इस बार विकेट गिरता हुआ जाना होगा नरसिम्हा को वापस। वो भी दंग रह चुके हैं इधर इस अपने अनलक को देखते हुए। बॉल को निकल लेना चाहिए था पैरों के बीच से, लेकिन हाथ को टक्कर खाकर सीधा विकेट पर गेंद जाते हुए और विकेट गंवाते हुए इधर नरसिम्हा। नए बल्लेबाज कास्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वर के ओर से सुमित भट्ट, the new batsman. काफी अच्छा गेंदबाजी का प्रयास इधर, डिसिप्लिन्ड
गेंदबाजी अगर ज्यादा एक्स्ट्रास ना होते इधर मंजेश्वरा की टीम्स ने ना दिया होता तो इधर इस बार मैच को जीता इनके हाथों में थी, लेकिन इधर कैच वापस जाना होगा इधर रविराज को पेविलियन के और एक विकेट इधर गवाते हुए कार्स्ट्रेट फ्रेंड्स मंजेश्वरा। सुब्रमण्य ने बल्लेबाज इस बार देखना होगा क्या करेंगे ये। आते ही जस्ट सिंगल, 2 रन की आवश्यकता, 2 रन के लिए दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज इधर सही समय पर दोनों पहुंच चुके और 2 रन अपनी टीम के खाते पर जोड़ते हुए इधर काफी हद तक आसानी से जीत हासिल कर गया इधर सीएसके ने। खूबसूरत सा ये मैच, बड़ा लक्ष्य दिया था लेकिन काफी हद तक स्ट्रगल और फाइट किया इधर कार्स्ट्रेट फ्रेंड्स मंजेश्वरा ने और एक आसान जीत इधर सीएसके को अपने हाथों पर मिलते हुए। थैंक यू। So the next match will be between Jai Hind cricketers as well as Deadly Panthers. त्रिविक्रम या पुल्ली मैच मैन ऑफ द मैच कौन हो? Varun of CSK adjudged man of the match. Varun. I request Varun please go to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Varun of CSK adjudged man of the match of the previous match. दुर्गाला बाचा राजेश की मामा स्टेज आ रहे हो का एक मैन ऑफ द मैच बीच ऐसा मैन ऑफ द मैच राजेश की पुल्ली मॅचच्या कार्स्ट्रेट मंजेश्वर सालमार क्लासिक कारकाळाच्या मॅन ऑफ द मॅच वरुण शानबागानं येऊ का स्टेज आ रही
धन्यवाद त्रिविक्रम। तो जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 9 का, सो मैच नंबर 9 of this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy season for 2025 now going to start between CSK versus Jai Hind. So news is here from the center that the captain of Jai Hind, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the openers of Deadly Panthers at the crease. Gautam and Manju. The match starts between Deadly Panthers versus Jai Hind Karkala, and the bowler starts the fresh proceedings is Radhakrishnan. The first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त राधाकृष्ण तैयार, जबकि गौतम इस वक्त सामना करते हैं। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और इस वक्त डेडली पैंथर्स की पारी का पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त राधाकृष्ण। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड करके थ्रो की जाए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकफुट गेंद को पंच किया था इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है डेडली पैंथर्स के लिए। और राधाकृष्णा इस वक्त गेंद को इस वक्त उन्होंने खेल दिया कवर पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा, 3 रन बन चुके। डेडली पैंथर्स के लिए इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उन्हें एक मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया, जबकि दूसरे मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था। तो इस वक्त पहले मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरा मैच अंतिम गेंद पर उन्होंने रोमांचक विजय दर्ज की थी। और यहाँ पर इस मैच में अगर वो विजय दर्ज करते हैं तो प्ले ऑफ पहुंचने की साध्यताएं उनके उज्जवल हो जाएंगे। तो इस वक्त राधाकृष्णा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद उछाला, इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते, मिस जजमेंट शायद होगा, और हो चुका है, मिस जजमेंट हो चुका है इस वक्त। जिस तरीके से मूवमेंट इस वक्त देखा गया फील्डर को, उससे पहले ही अंदाजा लगाया गया कि ये कैच पकड़ना उन्हें मुश्किल होगा, तो यहाँ पर अंदाजे के अनुसार इस कैच को वो छोड़ चुके हैं, और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करने में सफल। ये गेंद स्वीप करना चाहा, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त। सम्स को कवर करते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद अपनी दिशा को कुछ हद तक बदलते हुए सीधे जा टकराई, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद लेग स्टंप पर बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और पहला विकेट गिर चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। द मैन डिसमिस्ड इज मंजुनाथ फॉर 2। शिवानंद कामत, द नंबर 3 बैट्समैन, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार राधाकृष्णा की गेंदों का। राधाकृष्णा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मैच नंबर 9 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है। और राधाकृष्णा ये गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, मिड ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची, लेकिन जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। राधाकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी करेंगे गौतम के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, लेग स्टंप पर आती हुई ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति राधाकृष्णा की, जिसमें सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किया, और 1 विकेट यहाँ पर गिरा है बोल्ट आउट के रूप में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन जोड़ चुका है इस वक्त डेडली पैंथर्स मेड अ मिक्स स्टार्ट, इन फैक्ट द मैन टू स्कोर 7 runs on the board after completion of first over for losing 1 wicket. For this prestigious cricket tournament, Tank Cobra Trophy Season 4 2025, for every 6 there will be 300 rupees cash prize declared from Tank Cobra to Save Life Charitable Trust for noble cost. And last year 45,000 rupees donated to the education of a college girl. Fantastic social work making by all the members of Tank Cobra.
We wish all the members of Tank Cobra for a bright future. So absolutely fantastic social work from Tank Cobra. We're expecting some more social work in the forthcoming days from Tank Cobra, from the members of Tank Cobra. This time, इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अनिरुद्ध गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। शिवानंद ने पहले गेंद को ड्राइव जरूर किया, लेकिन खाली क्षेत्र चुनने में सफल। इस बार शिवानंद ने उछाला है, मौका एक कवर फील्डर के लिए, और इस कैच को वो इस वक्त लपकने में सफल हो चुके हैं। हालांकि फील्डर जो थे अपने पीछे की ओर दौड़ कर रहा, विघ्नेश जो फील्डर थे अपने पीछे की ओर, उन्हें दौड़ना पड़ा जरूर 5-6 कदम, लेकिन गेंद पर अपने नजरें गड़ाए रखी और इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल। दूसरा विकेट गिर चुका, 7 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर, एंड अनिरुद्ध नाउ गॉट द ब्रेक थ्रू। वेंकटेश यानी वेंकी नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, और इस वक्त तो स्ट्राइक रेंज की ओर कदम बढ़ाते हुए अनिरुद्ध फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निश्चित रूप से जहां तक एक साझेदारियां है, पार्टनरशिप का सवाल है, तो टैंक माफ कीजिए, तो डेडली पैंथर्स को इस वक्त एक साझेदारियां ने पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। और अनिरुद्ध अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर हैंड पर, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे, काफी धीमा थ्रो, बल्लेबाज यशस्वी तम 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुका और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अनिरुद्ध अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए, बेहतर कैच हो सकता था अगर इस कैच को लपकते हो कवर पॉइंट पर, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न इस वक्त किया जरूर कवर पॉइंट के फील्डर, अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को लपकना चाहा, गेंद पर पहुंच भी गए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती भी और बल्लेबाज 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अनिरुद्ध अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बोल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, लूजर डिलीवरी बट कुडंट गॉट द एडवांटेज ऑफ दैट डिलीवरी। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, ढीली गेंद थी, ऐसा करने पड़ेगा, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर खेल गए और गेंद उनके बल्ले को बीट करते हुए सीधे टॉप ऑफ द लेग स्टंप पर जा टकराए, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए। और एक और विकेट यहां पर गिर चुका। द मैन डिपार्टेड इज गौतम and the 3rd wicket gone for Deadly Panthers. Now they are looking in trouble. It's 10 for 3. तो समर्थ का आगे होता और जहां तक समर्थ का सवाल है, पिछले मैच में डेडली पैंथर्स के पिछले मैच में उन्होंने अंतिम 2 गेंद पर 8 रन जब बनाने थे, तब एक छक्का और एक कपल लगाकर अंतिम 2 गेंदों में अपनी टीम को एक रोमांचक जीत दिलाई थी। यहां पर क्रीज पर आ चुके हैं, बल्लेबाजी के लिए सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त अनिरुद्ध गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, लगभग गेंद पैरों के बीच से निकली, इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर की समाप्ति अनिरुद्ध की, सिर्फ 3 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, कंसीडर्ड 3 रन्स एंड गॉट द विकेट ऑफ 2 विकेट्स फ्रॉम शिवानंद एंड गौतम and a fantastic over came from Anirudh. 1 over no ball and 3 runs and 2 wickets. The impressive figures from the bowler Anirudh. और देखते हैं यहाँ पर मछली एंड की ओर से कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। दिन धीरे धीरे शाम की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ, लगभग 3:50 दोपहर के बज चुके हैं। धूप का प्रकोप कुछ हद तक कम जरूर हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी अब भी करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला के मैचेस का, तो 9वां मैच इस श्रृंखला का 9th मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025 is now progressing here. What a fantastic tournament organized by all the players of the members of Tank Cobras. और इस बीच गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस वक्त खाली क्षेत्र पर जा चुकी है,
गली के फील्डर दौड़ कर आए, बिना बल्ला हाथ में नहीं, लेकिन ऐसे दौड़े जैसे 100 मीटर के रेस में दौड़ रहे हो। और जहां तक सवाल है रनों का, तो 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं अपना बल्ला यानी बैट खोने के बाद, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 ऑन द बोर्ड रन्स इस वक्त चाहिए डेडली पैंथर्स को। वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो गेंदबाज रवि किरण गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश के लिए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला लेकिन सीधे पहुंचे इस वक्त पॉइंट पर, रनआउट का खतरा। ओ इस बार काफी वाइड थ्रो इस वक्त, स्टंप से दूरी पर निकलता हुआ गेंदबाज के पहुंचा बाहर, और 1 रन यहां पर मिला ओवर थ्रो के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर। सम फनी थिंग्स आर हैपनिंग हियर इन दिस ग्राउंड। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, और रवि किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, काफी लंबा स्ट्रोक, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। समर्थ के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, और इस छक्के के जरिए, इस स्ट्रोक के जरिए वो साबित कर चुके हैं कि वो कितने समर्थ है छक्का लगाने में। और इस छक्के के साथ जो समर्थन ने लगाया है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हाफ माइंडेड होकर गेंद को छोड़ा जरूर, इस दुविधा में पड़ गई थी कि गेंद को खेलना चाहिए छोड़ना चाहिए। अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया, लेकिन गेंद काफी हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, सही गेंद घोषित, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट। और इस बीच रवि किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। 1 ball left in this over, so still a ball left. That means 2.5 overs completed in their innings, और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रवि किरण तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश। रवि किरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट मछली एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ड्राइव करते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑन पर पहुंची, 1 रन का इजाफा, सिंगल टू एंड द ओवर। 3 overs completed, 21 for the loss of 3 wickets. हॅलो चेक. फूड कोर्ट आणतो हुन समोसा आणि बोंडालाय रेडी झालेला सर. हुन समोसा आणि थंड बोंडालाय दईकोरनो पूरे प्लेयर्स आणि स्पेक्टेटर्स फूड कोर्ट वचून समोसा आणि बोंडालाय घेऊ का मोंडन घेऊन जातोस. So 3 overs completed, 21 on the board, 3 wickets lost, और चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ उनकी पारी में। राघवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। So 4th over starts in their innings, और जहां तक सवाल है राघवेंद्र का, तो राघवेंद्र इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश इस वक्त सामना करते हुए। पहली गेंद ड्राइव किया, लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज के पीठ पर गेंद टकरा चुकी है, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 for the loss of 3 wickets at the start of the 4th over. Still 11 balls left in overall calculation in their innings, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट पर, और गेंद इस वक्त फील्डर जब वो लॉन्ग ऑन और डीप विकेट के दरमियान सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 23 रन, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और राघवेंद्र अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, जस्ट अ सिंगल ही गॉट,
और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. 9 balls left still in overall calculation in their innings. और राघवेंद्र अगली गेंद लेकर तैयार, ऑन साइड पर गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस बार भी सिर्फ एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. दिस इज एन एब्सोल्युटली fantastic running between the wicket, just trying to put pressure on to the fielders, and they succeeded in this occasion, adding a couple of runs to their total, and with that couple run the scoreboard moving up to 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और गेंदबाज राघवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. अगली गेंद इस बार उछाला, दैट इज एन क्लीन हिट, इट्स गॉन द रूफ ऑफ commentator box stand for a massive one. This is an outstanding struck, just stand and delivered. और गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए इस वक्त उछाल दिया, इस वक्त सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर छक्के के लिए बल्लेबाज समर्थ ने छक्का नंबर 2 उनके बल्ले से लगता हुआ और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. तो इस ओवर में अंतिम बार राघवेंद्र यानी राघव गेंदबाजी करने के लिए तैयार समर्थ के लिए. इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ फील्डर और लॉन्ग ऑफ फील्डर इस कैच को लपकने में सफल हो चुके हैं. इस बार भी छक्का लगाना चाहा था लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर गेंद टकराए और एक बेहतर जजमेंट के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने इस कैच को लपका. सो 4 overs completed, 33 for the loss of 4 wicket. And now just a last over remaining in their innings. मैच नंबर 9 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ मुकाबला इस वक्त जारी है डेडली पैंथर्स और जय हिंद क्रिकेट क्लब के बीच. विश्वास गेंदबाजी शुरू करते हुए नए बैटर नरेंद्र का इस वक्त आगमन हो चुका. फिलहाल स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त वेंकटेश और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए विश्वास. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मछली एंड की ओर से दाहिने हाथ राउंड द विकेट. पहली गेंद वेंकटेश के लिए ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया इस वक्त. सही गेंद, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट मेड बाय द बैट्समैन. गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है लेकिन गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. मिस जजमेंट कर बैठे बल्लेबाज इस गेंद पर. अगली गेंद इस बार गेंद को छोड़ दिया और इस बार वाइड का इशारा. 34 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट. जस्ट 5 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन. और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा. 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. विश्वास अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा. 3 wides इन ए रो. 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. That's better, but this time he's got that one into the vacant area and it's gone from the fence for a maximum. इस बार सही गेंद जरूर फेंकी थी गेंदबाज ने लेकिन इस गेंद को इस वक्त डिस्पैच करने में सफल. डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए बल्लेबाज वेंकटेश ने ये छक्का लगाया है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रन पर. 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 balls लेफ्ट नाउ इन द इनिंग्स इन ओवरऑल कैलकुलेशन. और गेंदबाज विश्वास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा. 43 on the board. Still he is searching for his right length and line at this situation. Bowled 4 wides in this over. Scoreboard moving up to 43 on the board. और विश्वास इस बार उछालना चाह चुके. एक और वाइड. 44 for the loss of 4 wickets. 5 wides bowled by
Vishwas in this over. Also, he conceded 1-6. This bar drive Kaiser not connected that one proper left fielder after it they completed one. In fact, chance of a run out. Direct hit and it's gone. Direct hit इस वक्त लग चुका है. मिड ऑफ फील्डर का फेंका गया. वाह, वाइडिश मिड ऑफ से इस थ्रो को फेंका गया था. स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता और वेंकटेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. 45 ऑन द बोर्ड, 5 विकेट्स लॉस्ट. नाउ जस्ट 3 balls left in their innings. कार्तिक शनय नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए और इस वक्त सामना करेंगे विश्वास की गेंदों का. काफी लंबा ओवर विश्वास का इस वक्त प्रगति पर. 5 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं और 3 गेंदें अभी भी बाकी उनके इस ओवर में. विश्वास के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. विश्वास इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कार्तिक के लिए अगली गेंद. ये गेंद उछालना चाहा, ढीली गेंद थी लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल. जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड. और विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेटों के पीछे रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बार फिर से विश्वास की गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को. इस वक्त फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग जरूर लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए. सिंगल रन एडेड टू द टोटल. 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. लास्ट बॉल रिमाइनिंग देयर इज. अंतिम गेंद लेकर विश्वास इस वक्त तैयार. बल्लेबाज नरेंद्र इस वक्त सामना करते हुए विश्वास की गेंदों का. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. विश्वास टू नरेंद्र. लास्ट बॉल. इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची. क्लीन पिकअप, चांस ऑफ रन आउट, मिसेस. In fact, they come back for the second. In comes the throw, and this time, just we have to wait for the umpire decision. Once again, it's going to be a third umpire. तो विकेट इस वक्त उखाड़े गए और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है अंपायर ने और देखते हैं यहां पर क्या नतीजा निकलता है तीसरे अंपायर द्वारा. ही इज गॉन. इन फैक्ट जस्ट अ सिंगल रन एडेड एंड 1 more wicket loss. 6 wicket down and the innings is up. They finished with 47 for the loss of 6 wicket scored by deadly Panthers. Another target for Jai Hind Karkala is 48. They have to score for victory in 5 overs. That means in the stipulated 30 delivers, they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And as far as the required run rate is concerned, exactly 9.60 runs per they have to score for victory. 48 in 5 overs. They have to score for victory and the inning starts with just short pile. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर जय हिंद की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. హలో, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పడు తిరుపతి క్రికెటర్స్ కార్కళ आणि कार स्ट्रीट फ्रेंड्स मंजेश्वर या 2 टीमा कॅप्टन आणि टॉस स्टेजला येऊ का. पडू तिरुपती क्रिकेटर्स कार्कळा आणि कार स्ट्रीट फ्रेंड्स मंजेश्वर 2 टीमा कॅप्टन आणि टॉसला येऊ का. तशीच फूड कोर्ट आणतो समोसा आणि थंड बोंडाला रेडी केलेलं असं. पूरे प्लेयर्स आणि स्पेक्टेटर्स फूड कोर्ट वचून समोसा आणि बोंडाला घेऊ का म्हणून निमून येतस. पडू तिरुपतीच्या कॅप्टन विग्गून येता शिम्मीन येऊ का म्हणून नाके. गड्डा पासूनच्या त्रास घेऊ का म्हणणार काही. हॅलो, तशीच SVT मॅट फ्रेंड्साच्या प्रेसिडेंट व्यंकटराय शेणे मुनमाम आणि सेक्रेटरी गणप माम दोघांनी स्टेजवर येऊ का. मुनमाम आणि गणप माम दोघांनी स्टेजवर येऊ का म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करतो. सच
तशी जी आमगेल गेस्ट जावन आशिल्ला राजेश केळी मामू टॉस घालता सची नेक्स्ट मॅच आता मला फ्रेश So thank you very much, Gopi. And 48, which is going to be a target for the team, Jai Hind Games team. And we'll wait and see how well Jai Hind will going to get this total. It's a competitive total in the board. 48 definitely is going to be a good total to depend if they bowl well. And Shashank will going to start the proceeding. The first ball starts with the warm-up delivery of the evening. And warm-up for the umpire Ravi Uppala in the evening as well. The first run in the form of extra, one without loss of any wicket. Right arm over the wicket bounce, and again that ball is dipping down the leg side outside on the left stamp and going to be a boundary here. So boundary signal, the good start here for the team Jai Hind, and through Karthik has bowled first delivery which is down the leg side. It's going to be a wide. And 5 without loss of any wicket. Wide plus 4. And wide in the first delivery and then boundary in the next one. 5 on the board. First ball wide, second ball 4. For total 5 on the board. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, just outside the line of off stump. Slight a bit of deviation, Lekater, and Karthik completely misreading the turn of the ball. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 5 without loss of any wicket. Shashank. Bowls, beautiful shot, played it nicely into the wideish long on. There is no fielder at all in that division. Absolutely perfect placement. Quite deliberately the batter Karthik almost dragging that ball from outside the line of off stump, slight a bit of outside the line of off stump, and good enough for Karthik to get that one right from the middle of the bat. Good striker of the ball. Karthik picks up a second boundary of this over. It's 9 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Shashank away from us. Bouncer Karthik again wanted to go for the one more expansive drive. This time timing which is totally missing. And too early into that stroke in the negation by Karthik. Scoreboard remains on 9 without loss of any wicket. Shashank balls. This time ball is definitely going to miss the leg stump, surely. And leg by call by umpire Ravi Uppala. With the addition of that extra leg by Cobra moves on to double figure. 10 without loss of any wicket. Anirudh facing his first delivery of this first over of the power play. This time he wanted to go for the one more mighty drive
Again, he missing the timing completely in that last delivery of the over. 10 runs coming from that first over. And a very good start given by the opening batters. 2 boundary coming from that over. Altogether 10 without loss of any wicket in the over number first, which is comes to an end. So 48 is the target. 38 required from 24 deliveries. 24 deliveries and 38 more runs required for the victory for the team. Jai Hind Games team, and all we can see that both the teams are searching for the victory. And Deadly Panthers, especially after that 2 matches they played, out of that 2 they won 1 match, they lost 1. Great chasing by Deadly Panthers in the previous match. Now they are defending this total 9. The bowler, the left arm bowler, brought into attack. Oh, this time short pitch delivery, and Karthik couldn't manage to connect that one properly. The short pitch delivery, and Karthik just wanted to hit that ball towards the mid wicket, but played it down to mid wicket along the ground for a single. It's 11 without loss of any wicket in the over number. The second is in progress. Nayan from the Machli end. Again wanted to go for the big shot. Anirudh, this time opportunity of run out in the non-strikers, and Anirudh not interested, but Karthik is very much interested for that run. Ball almost after hitting the hands of Gautam behind the wicket. Ball went towards the third man. There is a certain single there, but Anirudh is not interested for that run, and no run scored. It's a good start there from Nayan. Third time in this over. This time again ball clearly missing the leg stump, and the Gautam absolutely wanted to make the run out in the non-strikers end. Karthik is out of the crease, but he is not taking a risk of overthrow. Gautam not interested. Fourth time in this over. Nayan. Again, wanted to go for the reverse. They're going for the quick single. And that will be a no signal coming from umpire, means it's from the bat of the batter. One more addition. With the addition of that singles, Kobanna moves on to 12 on the board. The fantastic over is in progress. The 5th time in this over. Again, the low full toss tried to york the batter. Karthik couldn't manage to get the enough bat onto that. Very decent over indeed there from Nayan so far. 3 runs coming from last 5 deliveries. Then the team Jain desperately wanted one big shot here if they wanted to chase this big total. 13 without loss of any wicket. Anirudh will go to take the strike. 9 balls. What we are talking about. Needed one big shot, but it's not good enough to get past the fielder at extra cover. Just a single. It's not a good running bit in the wicket. So good over there from Nayan, which is comes to an end. Just 4 runs coming from that over. Excellent over from the point of view of Deadly Panthers after completion of over number 2. It's 14 on the board without loss of any wicket. 34 more runs required for the victory in remaining 18 balls. 11.33 runs per over, the required run rate. It might be a big ask, but not impossible in cricket. The small format of a game, we can say any score, it's not dependable unless you are going to bowl the last delivery of the inning with the 8 to 9 runs required for the last ball. You can say that the bat team is safe, unless the no depending team is safe in this the present cricket. It's almost the batter's paradise here in UCG cricket ground. One big over can change the complexion of the game. And bowler brought into attack, Narayan, one of the most experienced campaigner as far as a UCG cricket ground is concerned, one of his home ground. And starts with the delivery, which is going to be a delivery which is umpire absolutely said that was well within the reach of the batter. Anirudh couldn't manage to watch the ball clearly, missed it completely. Second time.
This time again outside the line of off step. Anirudh. Suicider. It's all happening when it's hard to combine the runs. The batter is absolutely under tremendous pressure of chasing a total score of 48 to win the match. They misses the ball but not watching the ball. Wanted to go for the single. No run there at all. Faced the penalty. Anirudh, the struggled innings which is comes to an end in the form of run out. It's 14 for 1. So match number 9 of the prestigious Tank Cobras Trophy 2025 Season 4 is in progress. It's a new batter, Srinivas. Will go into face Narayan. Drives nicely but straight to his partner Karthik. He hit the ball pretty well back to his partner Karthik. He tried to avoid the stroke. Not to hit him, but ball hit him. Just a single and Srinivas is off the mark. 15 for the loss of 1 wicket. Narayan. Balls this time outside the line of leg stump. Batter almost going to that ball. Wide signal by umpire, rightly so. With that extra score, but moves on to 16 for the loss of 1 wicket in the over number. Third is in progress. Full toss and lofted but straight to the answer fielder at mid wicket. And Karthik is not really getting that proper connection and he's choosing one of the longest part of UCG ground. As far as the dimension of this UCG is concerned, he's choosing the mid wicket. It's not so easy to get the distance. Of course, you need to get the proper connection. The one more wicket back in the pavilion. One more good over which is in progress for Deadly Panthers. 16 for 2. Raghavendra, new batter in. Over number 3 is in progress. Narayan, so far excellent over is in progress. Oh, what a delivery. That was a fantastic one. Perfect one to ball to the fresh leg. The new batter is completely beaten by the flight in the delivery. Half cutter from Narayan is putting his all experience, getting that good line and length. 16 for 2. Again, one more delivery which is again missing the leg stump clearly. One more over which is comes to an end after completion of over number 3, chasing 48 to win this match. Still the team Jai Hind struggling in the middle. 17 for 2, 31 required. For loss of 2 wicket after completion of over number 3. 2 overs remaining, 12 balls remaining and another 31 runs required for the victory. 15.5 runs per over, the required run rate. Huge ask in front of Team Jai Hind. Venkatesh brought into attack to ball that third over. Fourth over, correction. Good contribution from Venkatesh from the bat as well. And even Samarth is also scoring 16. Both of them contributed with the 16 runs each. Venkatesh in his second innings, which is absolutely very good one from his bat for the team. Now he wanted to contribute from the ball, from the Machli end, and starts with a dot delivery. And wicketkeeper Gautam completely missed that delivery, but good backup by the backstop fielder at short fine leg region. No runs scored. 17 for 2. 11 to go. 31 required for the victory. The huge ask. Again played it down to deep long on.
Little correction down to mid-on region, in fact, and Nayan the fielder fields the ball back to his back to the bowler. 18 for 2. 30 required from 10. That means every ball required 3 runs. Bowled him, cleaned him up. The baser off. He's tried to play across the line off the delivery. Maybe the ball after hitting his back leg and then fell into the stump. Just have a look at that one replay. Shuffled across, tried to go for the on drive across the line, and ball just hitting the bails, hitting the stump, and the bails are off. 18 for 3. Venkatesh to Radhakrishna. Oh, that will going to be a Spectra white. So with that excess, Cobra moves on to 19 on the board for the loss of 3 wickets. Full toss and lofted that one, but not more than a single. Excellent piece of fielding there by the field. They wanted to come back for the second, and they managed to complete that second because throw which is coming towards the striker's end. So that Radhakrishna managed to complete that couple of runs easily in the end. With that couple of runs, Cobra moves on to 21 on the board. 27 more runs required for the victory. 8 balls remaining. Lovely delivery, good line. Radhakrishna wanted to play that one square of the wicket, missed it completely. 7 balls, 27 required for team Jai Hind. Games team are looking in more trouble now. Venkatesh from the Machli end. This time appeal for leg before wicket. Umpire says not out. It's absolutely it's a bat which is involved rather than the pad. One more over which is comes to an end. Over number 4 gone. It's 22 for the loss of 3 wicket. And last over remaining. Sometime the bowler coming right in front of umpire after that follow through. It's not so easy for the umpire to see the line of the ball when you are coming in front of umpire. After the follow through, always you need to take your left. And if you take your right, means you are right in front of umpire. So some news we have to see from IPL. The match will be played between SRH versus Rajasthan Royals. And Sunrisers Hyderabad are 130 for 2. Oh, the huge score in 9.4 overs. The 67 from head is absolutely dominated. And Ishan Kishan is batting on 33. And then Abhishek Sharma scored a quick fire 24 runs in 11 deliveries. Altogether, that was some firework in that second match of the IPL. This time, Radhakrishna going very high. And who will going to take the catch? A long on fielder, Venkatesh. So takes a catch comfortably. And that brings the 5 balls remaining now. 26 required for the victory. The bowler, the experienced campaigner Anil brought into attack. Vijit is the new batter in, the young man. The previous match he's contributed some runs from the bat with 1-6. The 5 ball, 26 required, needed some firework. Anil. Right arm over the wicket. This time going to be a wide. The batter just tried for the switch it, but ball is almost missing that line which is outside the line of off stump too much. 23
26 required, 25 required. Now 24 required. 24 required from 5 balls. Needed 1 or 2 big shot here. Vijit will going to try for that. Bowled him, cleaned him up. This time he bowled that absolutely perfect line on the middle stump. Vijit just tried to go for the big shot, expose his stumps. The face the penalty. Now 4 balls remaining. 24 runs required for the victory. Last opportunity for the team Jai Hind. Needed 4-6 from 4 balls. Ravi Kiran is the new batter in with the jersey number 27. Outside the line of off stump, and 3 balls remaining. 24 required, just a formalities left in this game. Excluding wides and no balls, everything is over for the team Jai Hind. Again, a ball just passing between bat and pad. Opportunity of run out in the non-striker's end. So now, looks like last 2 balls remaining. And another half of the job required. 24 required from 2 balls. So Deadly Panthers, after that, they start with the defeat in the first match of the tournament. Then they are quickly back in that right track. This is going to be the second victory they are looking for. But it's not a good journey for the team Jai Hind. Outside the line of off stump. So third match for Jai Hind, but unfortunately again they fails to open the accounts in the points table. Last delivery of the match. Lofted, but not good enough. The fielder there, the deep long on, takes a catch. That's it. Huge victory of 23 runs for the team Deadly Panthers. With that huge victory, they registered their second consecutive victory in the league stage matches. Out of 3, they won 2, lost 1. But Jai Hind, a lot of hard work required for the team Jai Hind. They lost their 3rd consecutive matches of this Tank Cobras Trophy 2025 Season 4. Now it's a time for the break, and after the short break, and again the Trivikram will going to take over the microphone here in our commentary box. Thank you very much. So time to announce the man of the match. Is a consecutive second time. The Venkatesh once again is the man of the match for his all-round performance. Scored 16 valuable runs and picked a valuable 1 wicket with a very good economy. So that I request the Venkatesh of Deadly Panthers, please go and collect your man of the match from our chief guest in our main stage. Thank you. हॅलो मुन्नाम एक 2 मिनिट स्टेजला येऊ का एक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड देऊचा का बट मग मॅन ऑफ द मॅच दिताना सम बैसायची फोटो यो बैशील पडले तरी आंकड डेडली पॅन्थर्स कोडियाल हाज्या मॅन ऑफ द मॅच वेंकय्यಣ್ಣ स्टेजर येऊन तुमगे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करको म्हणून घेता सर हमका एसवीटी मॅट फ्रेंड्साच्या प्रेसिडेंट जावन आशिल्ला मुन्माम एदरे येऊन मॅन ऑफ द मॅच दिवको म्हणून घेता या टुर्नामेंटाच्या सेकंड मॅन ऑफ द मॅच वेंकय्यಣ್ಣला ओजी वेंकय्यಣ್ಣ बैक टू फॉर्म आयला म्हणून पुरे फॅन्स बनतासाची
Hello. This match, Padu Tirupati cricketers won the toss and chose to field first. Over to Combox. Yes, got it. जी हाँ, स्वागत है सभी को इस बार इस मैच में। बल्लेबाज कार स्ट्रीट फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से हेमंत और कार्तिक प्रभु उतरते हुए और सामने करेंगे ये पड़ु तिरुपति क्रिकेटर्स कारखड़ा को। और Ashlesh, the new bowler, will be bowling to Karthik. Karthik इस बार उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वर के ओर से क्या देखना पड़ेगा इस ओवर में, कुछ बड़ी हिट आएंगे अपनी टीम के लिए। और पहली गेंद डालते हुए इधर आश्लेष पड़ु तिरुपति क्रिकेटर्स के ओर से। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव, विकेट कीपर विघ्नेश के नेतृत्व में। और पहली गेंद इस बार देखना होगा। इस बार उठाकर मारने की कोशिश थी लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, सिर्फ डॉट गेंद। पहली गेंद डॉट होते हुए इधर और बड़ी हिट बहुत आवश्यकता है इस बार। विकेट, काफी शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं जज कर पाए उधर कार्तिक। इसी के साथ अपने विकेट गंवाते हुए जाना होगा वापस पवेलियन की ओर। खूबसूरत सा गेंदबाजी इधर गेंदबाज आश्लेष द्वारा। और इसी के साथ विकेट कीपिंग में जो मौजूद विघ्नेश, उनका भी अनुभव काम आते हुए। और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत सा अपील, विकेट अपने टीम के लिए चटकाते हुए इधर आश्लेष, विकेट गिरता हुआ। इसी के साथ नए बल्लेबाज मनोहर, कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से अगले बल्लेबाज मनोहर। ये भी पिछले मैच पर आते ही छक्का जड़ने के लिए गए थे लेकिन भाग्य का ना साथ होते हुए विकेट गिरा था इनका। क्या देखना पड़ेगा इस मैच में भी उनका वही आक्रामक अंदाज बरकरार है, देखना पड़ेगा इस बार। आश्लेष गेंदबाजी करते हुए और अपने पहली गेंद सामना करते हुए इधर मनोहर। इस बार उठाकर मारने की कोशिश थी लेकिन क्लीन बोल्ड। विकेट गिरता हुआ, आक्रामक गेंदबाजी इधर आश्लेष द्वारा। पहली गेंद पर अपने विकेट चटकाते हुए विकेट गिरता हुआ इधर मनोहर का। वापस जाना होगा इधर मनोहर को पेविलियन की ओर। काफी तेज गेंद, बिल्कुल नहीं पड़ पाए उधर बल्लेबाज और पेविलियन की ओर जाते हुए। नए बल्लेबाज इस बार कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर। This time, beautiful shot. Will have doubles easily taken. Nitesh, the new batsman. Nitesh, the new batsman here. आते ही 2 रन अपनी टीम के खाते में जोड़ते और इस बार
और एक अपील, लेकिन नाखुश अंपायर। काफी करीबी मामला था लेकिन अंपायर नाखुश होने के कारण जस्ट अ डॉटेड डिलीवरी। इधर काफी आपातकाल का समय काशिद फ्रेंड्स मंजूशरा के ओवर मंडराते हुए, क्योंकि वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। सिर्फ 3 रन हो चुके 2 विकेट के नुकसान पर। काशिद फ्रेंड्स मंजेश्वरा उभरना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा क्या इस ओवर में एक बड़ी हिट आ सकता है। और इस बार गेंद हवा में जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड पर गेंद गिरते हुए सुरक्षित लौटेंगे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर बढ़कर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज इस बार सुनील कामत, काफी अनुभवी खिलाड़ी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी काफी महारत हासिल इनको। देखना होगा कैसे हेमंत सामना करेंगे इनको। ये भी काफी अच्छे खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, बहुत अच्छे प्रदर्शन कर चुके हैं ये। लेकिन इस बार विकेट गिरता हुआ वापस जाना होगा इनको। पहली गेंद पर विकेट चटकाया इधर सुनील ने। काफी खूबसूरत गेंदबाजी, आक्रामकता पूर्ण गेंदबाजी करते हुए पडु तिरुपति क्रिकेटर्स के गेंदबाज 3 विकेट चटका चुके अपने टीम के लिए। सिर्फ 3 रन बने हैं। इसी के साथ नए बल्लेबाज नरसिम्हा। इस बार नरसिम्हा को गेंदबाजी करते हुए एक इधर विकेट चटकाते हुए जाना होगा वापस नरसिम्हा को पेविलियन के। और ये गेंदबाज काफी अनुभवी गेंदबाज है, जानते हैं हम इनको। पिछले जो जीपीएल के मैच पर एक गेंद में 6 रन की आवश्यकता थी, एक गेंदों में 6 रन मारकर अपने टीम को विजय के ओर ले जाने वाले बल्लेबाज सुनील कामत कारखाला, काफी अनुभवी खिलाड़ी, इस बार विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज इस बार काशिद फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से सुधीर। ये भी काफी अच्छे करेक्शन में दिखाई दे रहे थे। पिछली मैच पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, क्या इस मैच में भी वही बरकरार रखेंगे, देखना पड़ेगा। इस बार और एक विकेट गिरते हुए 2 बॉल में 2 विकेट कंटिन्यूअस। Beautiful delivery. Wanted to play a reverse shot, yet couldn't time well, couldn't connect it. New batsman here is Ganesh Nayak. This time Ganesh जस्ट सिंगल। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 4 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दिस टाइम गेंद हवा में, हवाई फायर
सीधा सीमा रेखा के पार नीतीश आक्रामकता से बल्लेबाजी करते हुए खूबसूरत शॉट, 6 रन इसकी जरूरत थी, इसकी आवश्यकता थी, लगाया छक्का। ओवर के समाप्त होने पर टीम का स्कोर बढ़कर 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीम एक बहुत ही सटल और खूबसूरत एक टारगेट तैयार करने में सफल होगा, लेकिन अगर विकेट्स गिरे इसके बाद तो काफी मुश्किल की सिचुएशन या मुश्किल की घड़ी इधर मंडराते हुए इधर कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ऊपर। इसी के साथ नए गेंदबाज पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स के ओर से श्रीनिवास, ये भी काफी अनुभवी खिलाड़ी पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स के खेमे से। गणेश इस बार सामना करते हुए श्रीनिवास को। पहली गेंद इस बार हवा का फायर, लेकिन जस्ट सिंगल। स्ट्राइक को रोटेट किया, सिंगल लेकर सेट बल्लेबाज नीतीश को स्ट्राइक देते हुए इधर गणेश। इस बार एक हवाई फायर, लेकिन विकेट गिरता हुआ इधर जाना होगा वापस इधर नीतीश को पेविलियन के ओर। नए बल्लेबाज गौतम कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से। टीम का स्कोर 11 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गौतम इस ग्राउंड पर काफी खेल चुके हैं, काफी अनुभव है इनको इस मैदान का। क्या उस अनुभव के ऊपर खड़े उतरेंगे, क्या देखना पड़ेगा। इस बार गौतम जस्ट सिंगल, स्ट्राइक को रोटेट किया इधर और 1 रन इधर बटोरते हुए। और स्ट्राइक पर इस वक्त गणेश। अपील जरूर था, लेकिन 1 रन अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। टीम का स्कोर बढ़कर 13 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार गौतम उठाकर मारने की कोशिश जरूर थी, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ पाए गेंद को। डॉटेड डिलीवरी होते हुए last ball of the delivery, this time lofted beautifully, just a single and reaches into the crease yet in the time. Score बढ़कर 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा। आपातकाल का समय जरूर है, लेकिन आपातकाल में ही उमड़ना चाहिए, ये कहावत हमने सुने हुए। देखते हैं क्या इधर गौतम अपने टीम को किस तरह उठाकर विजय के ओर ले जाते हैं, देखना पड़ेगा। बड़ी टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है इस मैच में अगर जीतना चाहिए तो। नए गेंदबाज इस बार विघ्नेश शनाई, पड़ू तिरुपति क्रिकेटर्स कारकाला के ओर से। बेहद अनुभवी खिलाड़ी पड़ू तिरुपति की गेम में से। और गेंद हवा में, कैच की संभावना है, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड पर गिरते हुए सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया इधर इस बार स्टंप किया इधर। वापस जा रहे हैं गणेश पेविलियन के ओर। महेश क्लासिक खिलाड़ी कार्स्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए।
मंजेश्वरा कास्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के क्लासिक खिलाड़ी इस बार बल्लेबाजी में इस बार देखना होगा क्या आक्रामकता से खेल पाएंगे। खूबसूरत सा शॉट सीमा रेखे के पास जाते हुए लेकिन सिर्फ एक रन मिलता हुआ। सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया। टीम का स्कोर 16। बैटिंग करते हुए इस समय गौतम उठाकर मारने की कोशिश जरूर थी लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ पाए गेंद को। आखिरी गेंद बचे इस ओवर के विघ्नेश द्वारा, माफ कीजिएगा। दिस टाइम बॉल इज इन द एयर एंड विकेट फॉल्स। जाना होगा वापस इधर गौतम को पेविलियन के ओर। इसी के साथ ओवर समाप्त होते हुए टीम का स्कोर बढ़कर 16 रन 8 विकेट के नुकसान पर। द न्यू बैट्समैन नए बल्लेबाज इस बार कास्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा के ओर से सुमित भट्ट। काफी खूबसूरत साए खिलाड़ी दोनों, काफी अच्छे जोड़ी दिखते हैं अगर साथ में खेलते हैं तो। साझेदारी बहुत चाहिए इस बार। गेंद हवा में बिल्कुल है लेकिन विकेट गिरता हुआ। जाना होगा वापस महेश कामत को पेविलियन की ओर। रन्स बटोरने की इच्छा जरूर थी, कोशिश जरूर थी, लड़े इस रन्स को स्कोर करने के लिए लेकिन अंततः अपने विकेट गवा बैठे इधर महेश कामत। माफ कीजिए, गणेश बख्ता इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। इधर इस बार पहली गेंद सामना करते हुए इधर गणेश। अपील जरूर थी लेकिन गेंद बार की तरफ जरूर थी और इससे सही डिसीजन देते हुए इधर अंपायर काफी चौकन्ने हैं। अंपायर अपने निर्धार पर और डिसीजन देते समय इस बार उठाकर मारने की कोशिश जरूर थी लेकिन सही समय पर जज नहीं कर पाए गेंद को। जस्ट डॉटेड डिलीवरी। आखिरी की 3 गेंद बचे इस ओवर के। गेंद हवा में जरूर है लेकिन विकेट गवाते हुए ऑल आउट कास्टेड फ्रेंड्स मंजेश्वरा ऑल आउट होते हुए। द टारगेट इज 17। इस बार मैं स्वागत करना चाहता हूं गोपी को। హలో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ట్యాంక్ కోబ్రాస్ ఏ అని వరద పాండురంగ క్రికెటర్స్ గురువాయిన్ కేరే दोन के मैच कैप्टन అని స్టేజ్ అలాకి టాస్ ఒక ముందు రాహుల్
Dhanyavad Trivikram. So a small target in front of Padu Tirupati. Their bowlers bowled brilliantly, restrict the batsmen of Kastrit Manjeshwar for just 16 runs. And now the target for Padu Tirupati 17. They have to score for victory in the stipulated 5 overs, and as far the required run rate is concerned, exactly 3.40 runs per over. 17 रन इस वक्त बनाने हैं और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नरसिम्हा और इंतजार है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का पडु तिरुपति के। This is the 10th match of this prestigious cricket tournament. Tank Cobras Trophy Season 4 2025 is now progressing. A fantastic live coverage we are just watching here right from King Sports. और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, इस ढलते हुए शाम में भी ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए शाम के 4:50 यहाँ पर बच चुके हैं। इस मैच के बाद 2 लीग मैचेस और खेले जाने हैं, उसके बाद प्लेऑफ मैचेस 3 प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे। क्वालिफायर मैच नंबर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर मैच नंबर 2, उसके बाद ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल इस श्रृंखला का आज रात को खेला जाएगा। मेगा फाइनल विल बी प्लेड ऑन टुनाइट and we are expecting lots of cricketing actions in this ground in this UCG, lots of undrawn cricket. The first ball of the innings is now coming up और नरसिम्हा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए विनायका इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिलांके से नुकसान के श्रीनिवास अब सामना करने के लिए तैयार और इस बीच नरसिम्हा गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज नरसिम्हा और 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज नरसिम्हा तैयार। Lost it and this time I think it's got the distance. Yes it does. It's a big one. और अंपायर दिलचस्प बहुत ही दिलचस्प तरीके से छक्के का इशारा इस वक्त करते हुए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड। फैंटास्टिक स्ट्रोक इन द बैट ऑफ श्रीनिवास और सिर्फ 9 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए। तो टैंक कोबरा एंड की ओर से गेंदबाजी नरसिम्हा इस वक्त आगे बढ़ाते हुए श्रीनिवास के लिए एक बार फिर से तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। स्विंग्स एंड बाउंड्री, slog sweep shot and he finds the gap as well. 11 on the board. Now just 6 more runs now they have to score for victory. और जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करने की कोशिश में बल्लेबाज पडु तिरुपति के जितना जल्दी इस मैच को समाप्त करेंगे उतना उनका नेट रन रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस वक्त जीत के साथ साथ अपने नेट रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हुए इस बार अपील जारी है लेकिन गेंद लाइन के बाहर यहाँ पर टिप्पा खाती हुई और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और गेंदबाज नरसिम्हा अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव किया और मिस फील्ड एक्स्ट्रा कवर फील्डर द्वारा और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी इस वक्त 4 रनों के लिए। 15 on the board, just 2 to get, just formalities now remaining in this match. सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गई हैं और एक गेंद अभी भी बाकी। नरसिम्हा इस ओवर में अंतिम बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। 16 on the board. And now still 1 run required for victory. That's it. Just in 1 over finished the match in a style by the openers of Padu Tirupati and a comprehensive victory for them by 10 wickets with exactly 3 overs to spare. And with that victory, with that comprehensive victory, Padu Tirupati backed the complete points. So match number 10 of this prestigious cricket tournament, Tank Cobras Trophy Season 4 2025 has been came to an end. Now the match number 11 of this tournament is now going to start between Tank Cobra, the host team Tank Cobra versus Varada Panduranga. One more good match is now coming up and that match starts with a short while. Till then we are just taking a short break and we'll be back right after the short break with myself Gopi when the next match will going to begin right after the short break. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Hello. Food court antu Shreya Sweets angala chaat ready alala sa. सेव पूरी पानी पूरी फूड कोर्ट अंतु रेडी सा पूरे प्लेयर्स and स्पेक्टेटर्स अन्न फूड कोर्ट आवचुनु चाट का निम्गुन गेतस हागे कमेंट बॉक्स ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಾಟ ಒಟ್ಟು
एन्जॉय सॉफ्ट ड्रिंक्स आसा पूरा जणांना एन्जॉय सॉफ्ट ड्रिंक आणि श्रेया स्वीट्स चाट खाऊन एन्जॉय करता म्हणून निघून जातात. So man of the match of this match award go to Sunil, who bowled brilliantly. He claimed 3 wickets for conceding just 7 runs in his 1 over. 1 over, no better than 7 runs and 3 wickets. And because of this fantastic bowling spell, Sunil enjoyed the man of the match.
Right, the match starts. Match number 11 of this tournament. Tank Cobra will take over Varada Panduranga, and Varada Panduranga, after won the toss, they elected to field first, and because of that, their fielders are now spread it out onto the field, and the openers for Tank Cobra, the host team, the openers for them openers for them are Rajat and Prasad, and the bowler starts a fresh proceedings from that side end. That means from the Machali end, and the first ball of the match is now coming up. So the first ball of the match is now coming up. Here the bowler comes from his long run up. First ball. Oh, this one absolutely fantastic delivery from the bowler. He just got rid of the batsman in his very first delivery. और गेंद लगभग सीधे तौर पर आए थे. गेंद को साइड पर उछालने के प्रयास में चूके रजत, और गेंद सीधे इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए मिडल और लेग स्टंप पर जा टकराई, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है. रजत की पारी समाप्त पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और 0 पर पहला विकेट गिर चुका है. अगली गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेला नहीं, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 1 रनों पर, यानी रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. और निस्संदेह पहला विकेट खोने के बाद टैंक कोबरास के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव इस वक्त क्रिएट हो चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज काफी विश्वास के साथ लंबे रनअप के जरिए अपने ओवर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त शिव प्रसाद, वरदा पांडुरंगा के खिलाड़ी, और ओवर की अगली गेंद लेकर विश्वास लंबे रनअप के जरिए गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड बैन पर गेंद शिव प्रसाद के हाथ में पहुंची जरूर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड. First over in progress. And now the batsman Prasad is now going to face Vijay Raj, in fact going to face Prasad off the strike in the previous delivery. और गेंदबाज इस वक्त गेंद को उछालना चाहा इस वक्त विजय राज ने, लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, और गेंद इस वक्त मिड विकेट पर फील्ड करने गई है. जहां तक टैंक कोबरा का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत उनको यहां पर पहला विकेट अपने पहले ओवर में रजत के रूप में वो खो चुका है, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ लंगोन सीमा रेखा से बाहर, मछली के बैनर पर इस वक्त गेंद टकरा चुकी है, और मछली रेस्टोरेंट के फ्लेक्स पर इस वक्त गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ विजय राज के बल्ले से, और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 1 इन प्रोग्रेस. विश्वास इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में असफल, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. 7 ऑन द बोर्ड. मैच नंबर 11 of this 11th of this prestigious tournament started just short while ago. और विश्वास अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑन साइड पर आते हुए इस वक्त गेंद को खेलना चाहता है, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 8 on the board for losing 1 wicket in the over number 1 in progress. Still last ball left in this over. Lofted, this time chance for the long off feeder, and he took the catch successfully just inside the fence. Vijay Raj, the man departs, just gone for a mighty one this time, not succeeded.
And the long off fielder held the catch successfully just inside the fence. So good catch taken by the long off fielder. And the second wicket lost. And now Tank Cobra are now looking in trouble. First over completed. 8 runs on the board, 2 wickets lost for them. एक फोन मिळाला असा त्या कोणाला म्हणू गुर्तु काढू वर्क म्हणून निघून घेतला. तो दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ. सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. और गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यहां पर टैंक कोबरास की पारी में. धनुष फर्स्ट बॉल कम्स. लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा. couple of runs added to the total in the face of wides. With that ग्राउंडारी एक फोन मिळाला असा त्या कोणाला म्हणून सांगून एक त्याची गुर्तु काढू फोन वर्क म्हणून निघून घेता. 2 wide runs added to the total. 10 on the board. धनुष अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पर थो पहुंचा इस वक्त. लेकिन अंतिम क्षण में गेंदबाज इस वक्त विकेटों पर गेंद को लगा चुके और अंपायर के लिए तृतीय अंपायर के लिए कॉल किया गया. नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. Not out is the call and the batsman survived. तो धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद सामना करते हैं. जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट एट द लास्ट मोमेंट. मच स्ट्रेट अ लाइन फ्रॉम द बॉलर. गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. धनुष एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा. अपील जोरदार अपील लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस अपील को नकार दिया अंपायर ने. और इस रन के साथ लेग बाय का इशारा. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रनों पर. अंपायर कुछ कहते हुए गेंदबाज से और अंपायर रवि उपल. और जहां तक सवाल है इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं. और धनुष अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुधींद्र इस वक्त सामना करते हुए. यह गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन. मिसेस pretty slow one compared to the previous delivery bowled by the bowler धनुष. और इस गेंद पर रन से यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला. बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सुधींद्र के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. लेग स्टंप से बाहर. जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड. वाइड कॉल्ड बाय अंपायर. सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास. 13 on the board for losing 2 wickets. Absolutely fantastic atmosphere we're just watching in this UCG Urwa cricket ground under this prestigious cricket tournament. This time fantastic delivery, missing the line completely. और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए. रन से यहां पर नहीं मिलेंगे. बेहतरीन गेंदबाजी धनुष इस वक्त जारी रखते हुए. इस ओवर में अंतिम बार तैयार बल्लेबाज सुधींद्र के लिए अगली गेंद लेकर तैयार.
Bowled in, just gone for a big one. Losses of some. Much straighter line. The ball passed between the batsman's bat and leg, and struck to his off stump. Bills are disturbed. A fantastic delivery and a fantastic over came to an end from Dhanush. And after 2 overs, the struggling time is now continuing here for the batsmen of Tank Cobras. 13 for the loss of 3 wickets after 2 overs. दो ओवर की समाप्ति के बाद निश्चित रूप से टैंक कोबरा को इस वक्त चाहिए एक साझेदार यानी पार्टनरशिप। 3 बहुमूल्य विकेटें वो खो चुका है। रजत, विजय राज और सुधिंद्रा के रूप में नए बल्लेबाज गौरव का आगमन होता हुआ इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज राकेश इस वक्त मछली एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए। मैच नंबर 11 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत टैंक कोबरास ट्रॉफी सीजन 4 2025 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति यहां पर करता हुआ। और राकेश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपने ओवर की पहली गेंद प्रसाद के लिए। दिस टाइम इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही फाइंड्स द गैप एज वेल। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। बेहतर फील्डिंग इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा डीप स्क्वायर लेग पर जाकर गेंद को अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और थ्रो किया तुरंत घूमते हुए। और 1 रन का इजाफा हो चुका। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। और इस वक्त गेंदबाजी राकेश करेंगे जबकि नए बल्लेबाज गौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। और गेंदबाज राकेश इस वक्त तैयार। Here Rakesh comes. Right arm over the wicket. और पहली बार गौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। रनों के लिए अभी भी संघर्ष करते हुए यहां पर टैंक कोबरास के बल्लेबाज। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें इस वक्त पार करना होगा निर्धारित 5 ओवर में अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और राकेश यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। प्रसाद के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ मैसिव वन। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। धीरे धीरे बल्लेबाज प्रसाद अपना सही लय रिदम में यहां पर प्राप्त करते हुए। और राकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद टॉप है, चांस फॉर द एक्स्ट्रा कवर फील्डर, ही वोंट गेट दैट वन। जीतो कोशिश इस वक्त उन्होंने जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल। और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 22 रन बन चुके हैं। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन। और इस वक्त राकेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। विजय राज, माफ कीजिए, गौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगली गेंद। इस बार स्वीप किया, फुल टॉस गेंद थी खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन पूर्ण कर चुके हैं यहां पर। काफी मुश्किल के साथ गेंद को सीमा रेखा के अंदर जब तक रोका जाता 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट
स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। राकेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त गौरव एक बार फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। डॉट बॉल टू एंड द ओवर, 3 गॉन एंड आफ्टर 3 ओवर इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर टैंक कोब्रास। और 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। गुरुदत्त starts the fresh proceedings from the टैंक कोबरा एंड और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ टैंक कोबरास की पारी में। प्रसाद सामना करते हुए इस वक्त गुरुदत्त की गेंदों का। फर्स्ट बॉल कम्स, गुरुदत्त टू प्रसाद। अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रसाद के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया इस वक्त और 1 रन का इजाफा हो चुका है वाइड के रूप में। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और इस बीच राउंड द विकेट गेंदबाज गुरुदत्त गेंदबाजी करते हुए प्रसाद के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। अगेन ही बॉल टू फॉर साद लेग स्टंप, स्पेक्ट्रा वाइड। 1 more run added to the total, 26 on the board for losing 3 wickets। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में और गुरुदत्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ, लगन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। प्रसाद का स्ट्रोक काफी बेहतर रहा, हालांकि ऊंचा जरूर उन्होंने उछाला था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज प्रसाद निश्चित रूप से कहना पड़ेगा अपने टीम के लिए एक मुख्य भूमिका अदा करते हुए बल्लेबाजी में इस वक्त प्रसाद। ये गेंद इस बार लॉफ्टेड टू स्कोरर एंड टेकन इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर। दिस टाइम प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग, लेकिन पहले प्रयत्न में फील्डर के द्वारा गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर, लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने कलेक्ट कर लिया। हालांकि सूरज की प्रखर किरणें उनके आंखों को चुभी थी, लेकिन इसके बावजूद इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ वो लपकने में सफल अपने दूसरे प्रयत्न में। और प्रसाद की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। सो प्रसाद इज आउट फॉर 15 इंक्लूडिंग 2 sixes। He played a good innings and a wicket wicket lost for टैंक कोब्रास। It's 32 for 4। So Vivek Pai is the number 6 batsman. He now comes out to the middle और वो इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार। और गुरु इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। स्क्वायर लेग मिड विकेट, वाइडिश मिड ऑफ और गली इस वक्त मौजूद है, जबकि स्क्वायर लेग को हटाकर इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर को तैनात किया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। गुरुदत्त ऑफ कटर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और गेंद सीधे पहुंच चुके हैं विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गुरुदत्त, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक ऑफ कटर डिलीवरी, 2 consecutive डॉट बॉल्स टू फ्रेश लेग्स एंड रन से इस वक्त रुक चुके हैं 32 रनों पर। 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर। गुरुदत्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 ऑन द बोर्ड। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर
और गुरुदत्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गौरव। एक गेंद, लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और गुरुदत्त इस वक्त इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। काफी दिशा से भटकते हुए गेंद को इस वक्त फेंकी तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए 2 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुके हैं। 35 ऑन द बोर्ड। स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और गुरुदत्त इस ओवर में अंतिम बार। इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर या बाहर देखना पड़ेगा। गेंद बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। काफी दमदार स्ट्रोक था और आखिरकार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त छक्के के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ यहां पर विवेक के बल्ले से। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। 4 overs, 4th over comes to an end. 41 on the board. They're looking in a good situation for Tank Cobras after being a slower start. Now just 1 over left in overall calculation in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में टैंक कोबरास के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। भरम भरद्वाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। रामानंद भरद्वाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। सामना करते हुए इस वक्त गौरव। और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त भरद्वाज मछली एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। शाम का वक्त 5:25 यहां पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है। घने वृक्षों के परछाइयां धीरे धीरे पिच पर पधारते हुए इस बात का संकेत देते हुए कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जा रहा है यहां पर रोशनी मैदान पर कम हो रही है। सूरज मैदान के दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर रोशनी इस मैदान पर कम होते हुए। और इस बीच भरम भरद्वाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछालना चाहा इस वक्त गेंद पैरों पर टकराई। रन्स नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद। स्कोर रुक चुका है 41 रनों पर। स्कोर स्टेज एट 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। भरम अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ गौरव के बल्ले से। और बल्लेबाज के पास काफी समय था इस धीमे गेंद को डिस्पैच करने के लिए। और इस धीमे गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स नाउ। और भरम भरद्वाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। गौरव के लिए एक बार फिर से ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल। लगभग इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। नजदीकी मामला और इस बार यह विकेट गिर चुका है। गौरव इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन। और यहां पर विकेट नंबर 4 गिरता हुआ, 5 गिरता हुआ, माफ कीजिए। 48 for 5। और गौरव एक छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद 10 रनों के एक छक्के की मदद से वो पेविलियन वापस लौटते हुए। और 48 रनों के ऊपर 5वां विकेट खो चुका है इस वक्त। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। प्रकाश का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में। वो इस वक्त सामना करेंगे भरम भरद्वाज की गेंदों का। 3 गेंदें बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में है टैंक कोबरास के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। प्रकाश पई जो कि सामना करने के लिए तैयार। और भरद्वाज जो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर नए बल्लेबाज प्रकाश पई के लिए। यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन और गेंद को रोकने में असफल। और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अपने पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहा था और गेंद उनके पैरों को वंचित करते हुए निकल गई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए। द 50 comes up for Tank Cobras. 52 for the loss of 5 wicket. 2 balls left now in their innings. इस बार भरद्वाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद उछालना चाहा, कॉटन बोल्ट का मौका और आसानी के साथ फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकते हुए।
गेंद को उछालने के प्रयास में चूके इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, टॉप एज पर गेंद टकराए और फॉलो थ्रू में अपने बाईं ओर जाते हुए इस कैच को गेंदबाज ने बखूबी लपक लिया और इसी के साथ छठा विकेट गिर चुका। 52 for 6, नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। सोहन नए बैटर इस वक्त नंबर 8 बैटर जो कि टैंक कोबरास की ओर से मैदान पर उतरते हुए उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार और भरद्वाज अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। भरद्वाज टू सोहन, ऑफ स्टंप से बाहर, रनआउट का खतरा और यहां पर यह विकेट गिर चुका रनआउट के रूप में, जबकि इशारा है इस वक्त अंपायर के इशारे का इंतजार है इस वक्त। So over completed. It's a right delivery. It's a fair delivery and 52 for 7 now. The innings is up for Tank Cobras and now the target for Varada Panduranga is 53. They have to score for victory in the stipulated 5 overs. Exactly 10.60 the required run rate for them. 53 they have to score out of their 30 stipulated deliveries. That means in the stipulated 5 overs with help of 10 wickets, the present equation shows for them. और देखते हैं इस 53 रनों के 53 के टारगेट तक पहुंचने के लिए निर्धारित 5 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी वरदा पांडुरंगा के बल्लेबाज अपनाते हैं। तो उनकी पारी की शुरुआत हो गया पर चल लम्हा हुआ, तब तक एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर वरदा पांडुरंगा की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi, and the fantastic recovery from the team which is started very slowly, the Tank Cobra A, and at last they managed to score of 53 and 52 in fact, and set a target of 53 to win the match. Thanks to the innings of in the beginning Prasad, once again the man in good form, scoring 15 runs, and then a contribution from Gaurav in the end, scoring a valuable 10 runs, and Vivek hitting some runs in the last slog overs. So altogether 52, total score 53 will go into a target in front of team Varada Panduranga, and Sujit will go and start the proceedings.
the first ball. And the batter is on strike. Gurudat, they're going for the single. And they completed, in fact, the wide call by umpire. Divit, and with that extra 1+1 scoreboard, 2 on the board without loss of any wicket in the over number first, which is started with the wide. These two opening batters, and of course, they're the key player for the side. And the two very good explosive batters in the middle. And even that 53, I don't think it's going to be a save for the team Tank Cobra. They have to bowl very well because these two batters, of course, knowing for the big innings. Again, driven nicely towards the wideish long on for a easy single. Sujit, the previous match, he bowled very well for his team. And you know exactly in this big match, they're bowling against two very good quality batters. And scoreboard now 3 on the board. Both the batters off the mark with that single. And white +1, in fact, actually. And he has to open the account. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Oh, this time mix up. And this is going to be a huge wicket. This is really a huge wicket in this particular delivery. And the Shiva Prasad absolutely not impressed with his partner, because after pushing the ball, in fact, he beat the ball pretty hard into the ground, and handle of the bat which is broken. And there's a 2 damage in one delivery. One is a bat, another one is a batsman in the non-strikers end in the form of a run out. Shiva Prasad back in the pavilion at the same time. And the batter lost his bat because Guru hit the bat pretty hard into the ground, tried to block that ball from Sujir. And the wicket number first, which is back in the pavilion. It was a first success, the big success for Tank Cobra. As far as the wicket is concerned, the wicket of Shiva Prasad is concerned, the danger man is back in the pavilion in the form of run out. 3 for 1. New batter in. Dhanush is a new batter in. And wait and see how Dhanush will go into give the start here for the partnership for the team along with Gurudat. Sujit. The outside line of off stump again. That mix up opportunity once again created for the run out. Once the ball is deflected from the bat of the batter. Wicketkeeper Bunty fails to collect the ball. One more single. The turning out to be a good over is in progress. 4 for 1 in the over number. The first is in progress. Left-hand batter is on strike. Coming around the wicket for the left-hand batter, Dhanush. Nicely played it down to cover point region off the back foot. Good placement. So Dhanush is off the mark with that single score. Now moves on to 5 for 1. The long way to go. 53, the target in front of Team Varada Panduranga. And now wait and see how Gurudat will going to take the responsibility. Sujit from the Machali end. Ball's going to be a white. It's a white. With that extra score, now moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Over number first is in progress. Sujit again, short run up as umpire. David again swings and missed, and again the wide call by umpire. Again that one more extra with the addition of that extra score, now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Again that Sujir tried to get the ball around the legs of the batter, but is always asking for trouble. If you see that field set which is made for that over, long off wideish and wideish long on. The two fielders are in the deep. Full toss, sings it hard. You can't give the full toss delivery to the batter like this man. Gurudat is a fantastic striker of the ball, and just he need to say thank you very much for that full toss from Sujit. All the efforts are gone in vain because of that one full toss delivery. He just tried to yoke the batter. He's always asking for trouble because he need to be very accurate when he's trying for the Yorker line delivery. If it is a full toss, then you need to find the ball out of the park.
It's 13 for 1. Sujit again. Right arm over the wicket bounce. Again, it's going to be one more extra, one more wide. This is third wide of this over. Already fourth wide of this over, in fact. And 14 already on the board for the loss of 1 wicket. After scoring a massive 53 runs. The 14 already coming from the first over. Sujit again. Bowles played it just over the head of the mid-wicket fielder. And they're turning for the second run as well. Lovely running between the wicket. Dhanush, the one, is running towards the dangerous end. 16 coming from this first over. And that's a good start here again for team Varada Panduranga. And they're really good start here, chasing a big total of 53 to win this match. And some news coming here from IPL and Hyderabad, the team which is dominated in the last season with the batting. Again, they're continuing their domination in the first match against team Rajasthan Royals. They scored a massive 278 runs. The century, the first century of the IPL, which is registered by Ishan Kishan, scored 106 in 47 deliveries. And then some quick firework from Head as well as the Reddy, and of course some small cameo in the end by the batter. Klassen scored a 34 quick fired runs, altogether 278 runs, a massive total from team Hyderabad. That is the news from the IPL, the match number 2. A lovely delivery to start with. Sudhindra targeting that midland off stump, and Dhanush, it's absolutely sensible batting from him. You know exactly, you have a batter like Gurudutt is in the other end, his job is to get the single and get his partner back on strike. It's going to be a very good contest now between Sudhindra and the batter Gurudutt. Is batting on 9 with the help of one massive 6 in the previous over towards the mid wicket. Sudhindra takes his own time to deliver the next delivery. Away from us, ball's going to be a huge one, far away outside the line of off stump and wide signal umpire. This is all we can see, that the bowler feeling the pressure when you're seeing the batter like Gurudutt in the strikes, in the striker end. Always the batter bowlers looking for the survival. 18 for 1, Sudhindra. Away from us, past umpire Ravi Uppala. Oh, this time Flum, absolutely Flum in front of wicket. No doubt at all. Is front foot or back foot, anything. If you see that right in front of middle stump, slight bit of initial movement, shuffled across the line of the delivery, beaten by the flight after 2 bounce which is coming into the batter. And Gurudutt just wanted to play across the line, pays the penalty, Flum in front of wicket. The wicket number first 2 is back in the pavilion. It's 18 for 2. Opening batters are back in the pavilion. This is going to be a good big success for the team Tank Cobra. Dismissing the 2 opening batters early. Now is the right time for the team Tank Cobra to get back into the game. After that massive first over, 16 runs coming from the first over, 2 in the second, and new batter coming to the middle, Vittal. Vinod is a new batter in. We're going to face next delivery of Sudhindra, successful bowler. Bowling right arm over the wicket. The Sam catch, it is a call. Catch has been taken. The first ball he played an unorthodox cricketing stroke. It's not a clever thinking. Trying for the unorthodox stroke when you are playing your first delivery. It's not easy to get that unorthodox strokes, and pays the penalty for that. Back-to-back 2 wickets here for Sudhindra. That means he is on hat-trick. So far there is no hat-trick in this Tank Cobra trophy. So this is going to be a golden opportunity for Sudhindra
to get that hat-trick of the tournament. Rakesh is a new batter in. What a successful over is in progress from Sudhindra. Much required for Tank Cobra after that expensive first over, 16. Quite understandable, that is a power play over. They lost the wicket of Shiv Prasad in the form of run. आमगेल वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी जावन आशिल्ले गणेश नायलांची तांकां टँक कोब्रा फॅमिली दाखवून हृदयपूर्वक स्वागत. Sudhindra trying for the hat-trick. Oh, that might be with a very close one, isn't it? The last moment, batter has got a bat onto that. Rakesh has got a single there. So 19 for the loss of 3 wicket. Very good bowling performance there from Sudhindra so far. 4 delivery bowled. We picked up 2 wickets and conceded 3 runs. Now Dhanush, the left-hand batter, wait and see what he will going to do here. After he's missed his partner Gurudat, can he take the initiative of getting some acceleration in the run rate? The wait and see. Sudhindra changing his angle. For the left-hand batter is coming round the wicket. Oh, lovely shot. Played it nicely towards the cow point region. There will definitely the couple of runs before the Sujir coming from the deep. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that couple of runs, Cobra moves on to 21 for the loss of 3 wicket. The last time in this over. Match is evenly poised. Both the teams are absolutely battling hard for the victory. This is going to be a great contest between the 2 very good teams. Sudhindra. Ball's going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire. Wide outside the line of off-stump. So this is all runs are going to be a bonus here for the team Varada Panduranga. 22 for loss of 3 wicket. Need to be very careful when you're conceding some extras here. And still they have to get another 31 runs to win the match. Again, identical mirror display of the previous delivery. The same line and length, and I don't know why the Sudhindra is feeling that much of pressure. This may be the reason that left and right combination is just missing his line. Try to bowl outside the line of off stump. It's a 23 for the loss of 3 wicket. Oh, this is a line. This is a line you need to bowl, and Dhanush wanted to keep the strike for the next over by picking up the single in the last delivery of the over. Successful over from the point of Tank Cobras is concerned. Picked up 2 valuable wickets, but still I think the run rate is very much what the team wanted in that 2 overs. They're going exactly 12 runs per over. 24 for the loss of 3 wicket. 29 more runs required for the victory in remaining 3 overs. 18 ball, 29 required for the victory. The match is evenly poised. See, in the situation like this, and wait and see. A lot of discussion is going on. This is going to be a very crucial stage of the innings. After that 2 overs, the match is evenly poised. Maybe the team Tank Cobra is looking little bit comfortable after dismissing that 2 dangerous batter out in the hut. They're sending them into the hut, and might be that's the relaxation here for the captain of the side. But having Dhanush and Vinod, Rakesh, in fact, Dhanush and Rakesh in the middle, it can be anybody's game. Dilip brought into attack from the Machili end. He will go into bowl the 3rd over. 18 ball, 29 required for the victory. Just I want to see the field set here for the left-hand batter. The fielder down at short fine leg. Fielder at deep square leg. One fielder at mid-wicket and wideish long on. Long off is there, deep extra cover. Short third man cover point. Short mid-off. This is a wideish mid-off. Starts with the warm-up delivery of the evening. Wide call by umpire. With the addition of that wide, Cobra moves on to quarter century. 25 for the loss of 3 wicket. 28 more runs required for the victory.
Then the wicketkeeper is not really up to the mark, a little bit mix up. There is a certain single. Dhanush has no idea where the ball is, but his partner Rakesh very much interested for the single. And at last they are going against that single. Rakesh going back, no run scored. This time, appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Maybe that ball is going to miss the off stump. After that, the turn in the ball. आमगेले MLA जावन आशिल्ले बाबण्णा तांकां टँक कोब्रा फॅमिली दाखोवन रत्नपूर्वक स्वागत. तांणी केन्नाय आमकां सपोर्ट करता जी वर्स वर्स. 26 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. And a warm welcome for proud MLA of South constituency, Vedivas Kamath. Is absolutely arrived here. Appeal and Flum, absolutely Flum in front of wicket. That was going to hit the midland leg stump, no doubt at all. Ball pitching in a line. And this is the wicket what team Tank Cobras wanted, a situation like this. All in sudden we can see that the pressure is mounting up here for the team. Varada Panduranga. 26 for the loss of 4 wicket. The 26 for the loss of 4 wicket, the all in sudden. Once the stage which is clearly set by the opening batters when they scored 16 runs in the first over, then we can see that the Tank Cobra slowly they are back in the game by picking up some wickets in a frequent intervals. The new batter. Akshay coming to the middle with a lot of responsibility in his shoulder. And Dilip absolutely has got a huge wicket. And that previous delivery which is pitched in a line. And finding the back foot of the batter right in front of the middle stump. Going to be a wide. One more extra. With the addition of that extra score, but the moves on to 27 for the loss of 4 wicket. And the over number 3 is in progress. Dhanush ball, lovely delivery. Absolutely perfect one. The batter have to depend that ball because the way that the bowler getting that line and length is so impressive. And played it very defensively, not for run. This is the one area that is really struggling Dilip. After getting a one good delivery, the very next ball he bowled a wide. That means all the efforts which has gone in vain, what you did in the previous delivery. 28 for the loss of 4 wicket. Another 25 more runs required for the victory. 14 balls remaining. Lofted handsomely, but not really able to get the distance. Sujit, the man down at deep extra cover, waiting for that catch. At one stage when the batsman hoisting it over, looks like it's going to be a maximum. But ball is absolutely lost their speed. Maybe that was against the direction of the wind. It's not so easy in the evening to get the distance in the deep extra cover. Ball is almost landing safely to the hands of Sujit. The wicket number 5 is back in the pavilion of Varad Pandurang. They're in trouble now. 28 for loss of 5 wicket. New batter in is Vishwas. It means confidence. And he need to bat confidently if they wanted to win the match. And wait and see how Vishwas will going to get some partnership, get some acceleration in the run rate, which is required for the team. Varada Panduranga, they are in a trouble. Dilip picked up his second wicket. Oh, one more lovely delivery indeed. It is an excellent one. Equally negotiated very well by the batter Vishwa. Played it very confidently down to mid-wicket for a single excellent over. One more successful over which is comes to an end, which is consist of 2 wickets for 5 runs. Great over. Now 2 overs remaining. 24 more runs required for the victory. Required run at exactly 12 runs per over. What a great tournament is in progress. Tank Cobras Trophy Season 4 is under progress. I already mentioned Tank Cobra
the organization which is not only engaged in sports and games. I already mentioned they're doing some social work. As far as this particular tournament is concerned, they are providing 300 rupees for every six, and that amount which is collected, which is given to the Save Life Charitable Trust for the noble cause. And the last year they donated 45,000 rupees for the student those are studying in college, and those who are financially backward. And this is going to be a great concept from Tank Cobra. They are giving some contribution for the society as well. So Vivek brought into attack. Dr. Vivek Pai starts with the wide. With that excess, Cobra moves on to 30 for the loss of 5 wicket. 23 required from 12 balls. This time, chance here for the wicketkeeper himself to take the catch. And the wicket number 6 is back in the pavilion as well. This has been a disaster for the team. Varada Panduranga, that the wickets are tumbling here. That's all we can see, that when the asking run rate is going to 12 runs per over, no other option at all for the batters. They have to look for the big shot. And this is what the result we are seeing, that the batters of team Varada Panduranga are struggling against the bowling of Tank Cobra. The team, the host team, Tank Cobra A, so far looking in a driver's seat, but you can't say anything in cricket. The cricket is game of glorious uncertainty. 1 or 2 big shot can change the complexion of this game. Varadraj is a new batter in. Oh, what a delivery. This is absolutely a peach of the delivery coming from Dr. Vivek. Fantastic one. The perfect delivery to ball to the fresh leg. No clue whatsoever. The batter completely received by that beautiful off-cutter coming along the carpet. All in sudden, team are looking in deep trouble. They lost 7 wickets for just 30 runs. The mighty batting department of Varada Panduranga are really shaking against disciplined bowling performance by Tank Cobra. Prajwal is a new batter in. Prajwal, but quite unfortunate, we can see that Dhanush is in other end, came as a number 3 batter. Oh, this time 1 more wicket around the legs. Hat-trick, the first hat-trick of this tournament. Dr. Vivek Pai registering his name. The first hat-trick getter of this Tank Cobra Trophy 2025 Season 4. And what a way to get the hat-trick here. When his team is required the most, he delivered that fantastic over. Consecutive 3 wickets in 3 deliveries. And Vivek Pai absolutely bowled that beautiful 3 deliveries, which is the bowled out. Two bowled out, 1 caught behind the wicket. So 3 wickets in a row for Vivek. Congratulations for Dr. Vivek Pai for your outstanding performance. The first hat-trick of the tournament. 4th time in this over. Bows 1 more lovely delivery indeed. Equally well played there by batter Bharam. They played it nicely down to extra cover for a single. 31 for the loss of 8 wicket. Now target is looking very tougher and stiffer, but Dhanush after a long time coming to striker's end. Played it very nicely towards extra cover. The fielder is there in the deep, so they wanted to come back for the second. Oh my goodness, he's in trouble. He's in trouble and he's gone. I really not understand why Dhanush is responding for the second run. Because he is the one who is running towards a safe end. It's a really bad judgment of the run, I want to tell you. Nothing wrong with that. His partner is rightly called for the second run, but Dhanush is not responding for that second run. Faces a penalty. 1 more wicket back in the pavilion. It's 32 for the loss of 9 wicket.
Tank Cobra organizing the season 4 of this cricket tournament, day and night cricket tournament under floodlight. And when you are saying that under floodlight, our proud MLA Vedivas Kamath is responsible for the permanent light for this UCG cricket ground because of his love and affection towards the cricket. This time is one more wicket back in the pavilion. Bundle out, 4 wicket in this over for Vivek, Dr. Vivek Pai, and that's it. Comprehensive victory for the team Tank Cobra. They bundle out their formidable batting department of team Varada Panduranga for 32 runs. They bundle out and they won the match by 20 runs. Congratulations for Tank Cobra. And with that victory, they are grabbing all the 2 points, very important 2 points. Congratulations coming from the teammates as well as from opposition. That's it for the match number 11. The team Tank Cobra won the match against formidable team Varada Panduranga. And they're getting the full points. Congratulations. We are coming to the match number 12. And before that, we'll take a short break in our commentary box. Now time for the man of the match. So it's a time to announce the man of the match. The man of the match which goes to the bowler who took the first hat-trick of the tournament. It's one and only Dr. Vivek Pai is judged as the man of the match for his wonderful bowling figure of 1 hour, 2 runs and 4 wickets. So that I request Dr. Vivek Pai, please go and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. And I think proud MLA Vedivas Kamath is there in our main stage enjoying the game of cricket. It's time for the presentation of the man of the match award. So welcome for experienced umpire Arish Padil is joining our umpiring panel of this prestigious Tank Cobras Trophy 2025. Before the next match will going to start here, time to change in commentary box. It's over to Trivikram for the further explanation of the match in Hindi. Thank you. अत्तजल मैचाचा मैन ऑफ द मैच डॉक्टर विवेक पै अंक अम्मल मग एमएलए बाबण्ण मैन ऑफ द मैच अवार्ड दूका तंगलोट गणेश अण्ण दूका गणेश अण्ण बाबण्ण ಒಟ್ಟು ಜಂಕ अवार्ड दूका उर्वा क्रिकेट ग्राउंड हिस्ट्री के बॉलर एक ओवर हैट्रिक 4 विकेट एक ओवर अंतु डॉक्टर विवेक पै एक हमने टीम खातीर ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. I request the 12th man of हमने टीम कैप्टन जाना राहुल पे नाने एक बाबा नाक समय स्मरण के हमने टीम आदगोनु समय एक स्मरण के देनु वेलकम करते हुए हमगल टूर्नामेंट तशीची बाबा ना मस्त थैंक्स हमगल टूर्नामेंट तक प्रति वर्ष हमगल मन जीएसबी लेला कंचे क्रिकेट टूर्नामेंट गेला एक सपोर्ट करनु एक क्रिकेट तक कदने एक सपोर्ट असे उंडकेला मस्त थैंक्स बाबा ना तशीची वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी हमगल मगाचे चरकेल ट्रस्टी गणेश अण्ण
हंकाई टँक कोब्रास तो कोण स्वागत करता त्याची कंचे विषयारी आमगे चर्केलो ड्रॉप तिथे सिलेक्टर टी गणेश अण्णा मस्त स्वागत गणेश अण्णा. Beautiful shot here by Aditya Bhatt. Win to the fence. 4 runs coming up to the scoreboard. The scoreboard moves on to 5. Yet a beautiful shot here by Aditya Bhatt. And I request the 12th man of CSK to come on to the commentator's box as soon as possible. The 12th man of Classic Salmar Karkala to please come on to the commentator's box. Aditya Bhatt this time. One more beautiful shot on the air this time. Sixer. Beautiful shot here by Aditya Bhatt. Please correct. It's a 4. Beautiful shot. Wanted a bigger hit. Yet it's a boundary given by the umpire. Beautiful start here by Aditya Bhatt. Wanted to go for the big hit. But managed well with the boundary. Varun changing the field this time. Wanting to control Aditya Bhatt, and there's some kind of communication happening between both the batsmen this time. Aditya Bhatt is in the form. He should score really well. This time, again, goes for the beautiful shot. 4 runs coming onto the scoreboard. Aditya Bhatt, another boundary. Beautiful shot. The number, jersey number 7, Aditya Bhatt. The man, the myth, the Aditya Bhatt. This time, striking hard for his team. Another shot. Beautiful shot to the straight. Yet, just a single coming onto the scoreboard. The strike has been rotated and the scoreboard moves on to 14 with no loss with the completion of first over. Wanting this kind of batting more from the Aditya Bhatt, and as you know, you can see the batsman at the other side, Pawan Bhagat, the beautiful batsman, played really well in the 30 yards match as well, which was conducted by SVT Volunteers Association. SVT Volunteers Premier League played a beautiful knock over there and made his team victorious in that season. This time the new bowler is this time is Ganesh, and Aditya Bhatt who will be facing it. First ball of Ganesh. Let's see what's going to happen this time. Full toss delivery, yet couldn't connect, just a single. Strike has been rotated, and Pawan will be facing the first ball of this over. Pawan Bhagat this time. He needs to go for the bigger ones. Score is stuck at 15 this time. Beautiful shot. Just placed it and rotate the strike as Aditya Bhatt is in the form, and just to give him a touch and rotate the strike. This time Aditya Bhatt put up LBW. There's an appeal from Aditya Bhatt as well. There is some kind of things that's going on. Not out is the decision given by the umpire. Bales didn't move. This time another appeal. Bowling ridiculously this time Ganesh. Beautiful comeback this time. Troubling Aditya Bhatt, and Aditya Bhatt couldn't go for the biggies which he had started at the beginning. He was playing with the field from the beginning. This time
He needs to go for the bigger ones. Aditya was this time, just placed it, just a single, changed his crease. Now Pawan will be facing Ganesh. The young player Pawan Bhagat is onto the strike this time. The playing, building the partnership in between with good communications. This time too, when wanted to get a single, yet it's a dotted delivery. Over comes up and the scoreboard moves on to 17 with the completion of second over. Beautiful over, a great comeback by the bowler Ganesh this time. The first over was a huge loss for the CSK team, yet they made a beautiful comeback in the second over. The new batsman, the new bowler from CSK is Kiran, who will be bowling to Aditya Bhatt and will be bowling from the Machli end. Let's see whether Aditya Bhatt strikes or Kiran picks up the wicket. Let's see what's going to happen this time. Aditya Bhatt is a sets batsman. Let's see what is he going to do this time. First ball of this over. Good shot, yet just a single. Chance for an out, yet reached within the strike. There is some unhappiness by the wicketkeeper shown onto the fielder, just as he couldn't manage to get to the cover. This time Pawan Bhagat missed, couldn't read the line and length as well. Beautiful bowling by the Kiran as well. This time again missed it. Chance for an out. Wickets falling. Run out. Pawan Bhagat has to move to the pavilion. Wickets falling. The score is 18 for the loss of 1 wicket this time. They here built a beautiful partnership, yet couldn't continue it very well. Now Pawan Bhagat departs. The new batsman from Cobra B is Suraj. The new man who is coming from the Cobra B. Yet a great player, Suraj. He is playing in the non-striker end this time. This time, shot into the hands of the fielder. Yet just a single. Strike has been rotated this time. They need to go for the big one. Last 2 deliveries remaining. This time went for the reverse shot. Beautiful shot here. Just a single and running for the doubles as well. 4 is a decision given by umpire. Beautiful reverse shot. Wanted this shot for the team. Got it shot for the team. Suraj playing beautiful knock here for his team. It's a magnificent shot this time. Another shot. This time running for the second. Completes very well. 2 runs added to the scoreboard. With the completion of third over, the scoreboard moves on to 25 for the loss of 1 wicket. Cobras leading very well, but needs more runs to be scored to set a high total, as there's a huge batting lineup of CSK. They need to give a big total this time. The new bowler who will be bowling from CSK is Nitish. Aditya Bhatt will be facing Nitish this time. Let's see who strikes, who gets the wicket. This is a nail-biting match now. Aditya Bhatt
was in the form, played really beautiful at the beginning. He needs to continue the same form, same technique, same aggression this time also. Aditya Bhatt again into the air. This time chance for catch. Let falls into no man's land. This time chance for an out. Wickets falling. Aditya departs. Just one run will be added to the scoreboard. Aditya Bhatt back to the pavilion. The new batsman here is Prasad Nayak from Cobra B, and Suraj will be facing this time. Suraj needs to strike this time as the score is struck on 26. They need to go for the bigger hits. They need to go for the biggie. Wide is the call given by the umpire. These extras will cost costlier for you. They need to come back. They have striked very well. They have worked disciplinedly. The bowling team is working very good. But this time, they need to control more. Prasad Nayak is batting this time. 4 balls remaining of this over. Prasad. Beautiful shot. Onto the long on region this time. Just a single. Strike has been rotated and Suraj is in the crease. Suraj also needs to strike. It's a crucial match here for Cobras. This time again in the same region the ball has been stuck. Just a single. Again the score is moving really slowly and the scoreboard moves on to 30 for the loss of 2 wickets. Prasad this time. Ball is in the air, but bowler beneath. He strikes. Batsman departs. Prasad needs to go. Wickets falling. Wanted to go for the bigger ones, yet couldn't manage well, couldn't connect well. He needs to depart. The scoreboard is 30 for the loss of 3 wickets. The new man is Raghav from Cobras B. A power hitter from the side of Cobra B. Let's see whether he can go for the bigger ones. He needs to go for the bigger ones this time. Just an edge and the strike has been rotated. Beautiful running between the wickets. With the completion of 4th over, the scoreboard moves on to 31 for the loss of 3 wickets. Final over remaining this time. Let's see who is going to bowl from the side of CSK. The new bowler is Manjunath, and Raghav will be facing Manjunath. Let's see whether how good the batsman will strike, or will there be any mystery by the bowler Manjunath. Will he manage to pick wickets? This is the fantastic match that's happening between Cobras B as well as CSK. Classic Salmar Karkhala. And Manjunath, who is bowling this time, will be bowling from Machili end. This is the beautiful match that's happening, which is organized by Cobras. The Cobra Trophy Season 4 happening beautifully. This time again, played a beautiful shot. 4 is the call given by the umpire. I said he is a big man. He strikes well. The 4 runs
adding into the scoreboard. The scoreboard moves on to 35. Raghav strikes. He needs more of the strikes this time. Again, beautiful shot this time. Near the boundary, but the fielders managed well and hold to the ball. It's just managed to get 2 runs this time. The scoreboard moves on to 37. Another shot at the same decision, at the same direction this time. The beautiful decision to gain more runs and just scored a single this time. Wanted to go for the doubles, but single has been taken and strike has been rotated. The beautiful lights have been on in the stadium. The ball is in the air this time. Fielders beneath. It lands in the no man's land. Just 2 runs coming this time, but 2 runs not come. Suraj has to depart. Wickets falling. Wanted to go for 2 runs, yet couldn't manage to reach into the crease. Suraj departs this time, and the scoreboard moves on to 39 for the loss of 4 wickets. The new batsman for Tank Cobra B is Lakshmish, aka Malinga. Lakshmish, the new batsman from Tank Cobra B. He's an experienced player. Let's see whether he strikes this time, as the bigger hits are needed to give the big total and set a remarkable score this time. This time Lakshmi scores, but not connected that good. Just a single. Strikes will be rotated, and Raghav will be on the strike this time. Last delivery remaining of this innings. Raghav in strike. Let's see what's going to happen in the last delivery of this innings. Played beautifully, yet 4 is the call. 4 runs coming out of the scoreboard. Beautiful shot here by Raghav. The scoreboard moves on to 44, and the target is 45. 45 runs is the target given by Tank Cobras B to CSK team. Thank you.
धन्यवाद त्रिविक्रम. So the target is Hello. नेक्स्ट मॅच क्वालिफायर 1 फ्लडलाईट आणि जाता पडू तिरुपती क्रिकेटर्स कारकाळा आणि टँक कोब्रास ए या दोन टीमाचे कॅप्टनान स्टेजा लागी टॉस आहे का. फ्लडलाईट मॅच क्वालिफायर 1 पडू तिरुपती क्रिकेटर्स कारकाळा आणि टँक कोब्रास ए दोन टीमा कॅप्टनांनी स्टेजार येऊन टॉस घालका म्हणून निमून घेतस. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. तो इस तरह से अंतिम लीग का मैच यहाँ पर खेला जाता है. इस मैच के बाद प्ले ऑफ मैच शुरू होंगे. क्वालिफायर मैच नंबर 1 में पडू तिरुपति का मुकाबला होगा टैंक कोबरा ए के साथ और उस क्वालिफायर मैच ए की विजेता टीम सीधे इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी. तो टॉस के लिए इस वक्त दोनों टीमों के कप्तानों को पुकारा जा रहा है. तो इस वक्त यहाँ जहाँ तक इस मैच का सवाल है, द लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज, the second session of the last match of the league stage is now going to start. 45 the target for CSK set by Tank Cobra B. And then it's now going to start. First ball lofted but fell short of a fielder at deep mid wicket. He just got a single for that stroke. और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. तो एक रन बिना किसी नुकसान के और पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. तो जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए पवन और दोनों टीमों के लिए सिर्फ औपचारिकताएं पूरा करने के लिए मैच इस वक्त खेला जा रहा है. और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइट का इशारा अंपायर का और वाइट के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट. ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और पवन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट. दिस द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है सीएसके. अगर उन्हें 45 रनों के स्पर्धात्मक का लक्ष्य तक पहुंचना है तो यह गेंद बेहतर गेंद अंदर की ओर आती हुई, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका 3 रन. फ्लड लाइट्स के खंबे की बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं और शाम धीरे धीरे रात की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ और इस बीच पवन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइट का इशारा और वाइट के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर. 4 ऑन द बोर्ड. ये टू लूज एनी विकेट. इधर ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. पवन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लेग स्पिन गेंदबाजी उछालना चाहा और गेंद स्टंप्स पर यहां पर टकरा चुकी है और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. फर्स्ट विकेट गॉन फॉर सीएसके एंड द टोटल इज नाउ 4 ऑन द बोर्ड. Karthik the man dismissed. And now they are 4 for the loss of 1 wicket. Just this is just last match of the league stage. Just formalities to complete the formalities. This match is now progressing here to complete the to complete the formalities here. Because of that, this match is now playing in this ground. The last match of the league stage. हेलो कार सीट फ्रेंड्स मंजेश्वर आपका एक पार्टिसिपेशन मूवमेंट दिवचा का नंद का आमगे प्रति टूर्नामेंट तान एक टीम देवन खेलता मस्त थैंक्स रवण तशीच यूसीएल के रजिस्टर केलें कार सीट फ्रेंड्स मंजेश्वर थंय एक चॅम्पियन जावून आमी आश पावताची. यूसीएल के ऑल द बेस्ट रवणाक. तो इस वक्त पवन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बीच स्वीप करना चाहा, टॉप पिच पर गेंद टकराई थी जरूर लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात. रन इस बीच गेंदबाज पीछे तैनात. ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति पवन की. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस. मिक्स स्टार्ट फॉर सीएसके chasing the victory at 45 in 5 overs. They are 4 for the loss of 1 wicket. 5 in fact for the loss of 1 wicket. Exactly 40 runs required in remaining 4 overs with the required run rate of 10 runs per over.
तो शायद सीएस के लिए एक मौका जरूर है, अगर मैच में इस मैच में वो विजय दर्ज करते हैं तो शायद प्लेऑफ की पहुंचने की संभावनाएं उनके लिए पैदा हो सकती है। और देखना यह है कि अगर संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए इस वक्त उन्हें इस मैच को जीतना बेहद जरूरी बन चुका है सीएस के खिलाड़ियों को। और प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और रन्स वाइड के रूप में इस वक्त मिलेंगे 2। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, 7 ऑन द बोर्ड। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली स्ट्रक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रक, he just played that one with a reverse shot and fires the gap as well, just wide of the gully fielder। चौका इस वक्त प्राप्त करते हैं, बेहतर स्ट्रोक वरुण के बल्ले से लगता हुआ और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर, 11 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket at the start of the second over in fact। और गेंदबाज प्रसाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। सीएसके को इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है और प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। दिस द लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इज नाउ प्रोग्रेसिंग ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 4 2025। लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर से वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, 14 ऑन द बोर्ड। Still have a long way to go. In fact, 31 more runs now they have to score for victory. और प्रसाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, नो बॉल का इशारा अंपायर का, लेकिन वहां पर बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके, 1 रन भी उन्हें मिला, कुल मिलाकर 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, 16 ऑन द बोर्ड एंड अ फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन। तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और देखना है कि बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद का किस तरह यहां पर फायदा उठा पाते हैं। और प्रसाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछालना चाहा क्योंकि इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। The over number 2 in progress. Still the equal battle is now on. और प्रसाद lost it this time. I think it could be gone. Is gone in fact. Taken comfortably by the fielder Pawan at long on. And that is the wicket number 2. उछालना चाहता लंगोन फील्डर के सिर के ऊपर से, लेकिन पवन जो फील्डर मौजूद थे लंगोन पर, जिन्होंने कोई गलती इस वक्त नहीं की, एक बेहतर कैच उन्हें लग पा, देखिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली हेल्ड जस्ट इनसाइड द फेंस बाय पवन आफ्टर जंपिंग टुवर्ड्स टू हिज टॉप साइड। 2nd wicket gone. Prashant the man dismissed and now it's 17 for 2. Twenty balls left in overall calculation in their innings, 28 runs required. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। किरण नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और गेंदबाज प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए swings and this time he's got the distance. It's a massive one. 6 रन इस वक्त डीप मिड विकेट से मारेगा से बाहर और ऐसा कहना पड़ेगा जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है, मच नीडेड सिक्सर। 23 on the board and a fantastic struck came from the bat of Kiran in his very first delivery that he's faced. Now 22 required in remaining 19 balls. और इक्वेशन कुछ हद तक आसान इस वक्त होता हुआ, समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ और प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं।
Just a single run added, 24 on the board for losing 2 wickets, and the second over has been captured. And good CSK looking in a good situation. In fact, 24 runs they score for losing 2 wickets, 21 required in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. The required run rate is now exactly 7 runs per over. शाम के 6:30 इस वक्त बज चुके हैं. It's already 6:30 और मैदान पर रोशनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और फ्लड लाइट्स की खंबे की बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं. और इस मैच के बाद लीग स्टेज मैचेस संपूर्ण हो जाएंगे और प्ले ऑफ मैचेस शुरू होंगे. और पहला क्वालिफायर मैच पड़ू तिरुपति टैंक कोबरा ये के बीच खेला जाएगा. और प्रसाद नायक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में. 21 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी और प्रसाद नायक ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथ ओवर द विकेट. इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, नॉट सक्सीडेड और गेंद को विकेट कीपर ने अपने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर. 21 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी. 21 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 17 डिलीवरीज. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. और गेंदबाज प्रसाद नायक अगली गेंद लेकर तैयार. लॉस्ट इट एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस. और लॉन्गॉन फील्डर जो थे सिर्फ प्रेक्षक रहे इस स्ट्रोक पर, गेंद को देखते रहे और गेंद काफी दूरी पर वृक्ष के डालों पर जाकर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए. और छक्के के साथ समीकरण बिल्कुल आसान होता हुआ सीएसके के लिए. 30 ऑन द बोर्ड, 15 रन रिक्वायर्ड, 16 बॉल्स रिमाइनिंग. और प्रसाद इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार. एक बार फिर से, लेकिन मौका नहीं. गेंद इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के फील्डर के सिर के ऊपर से पार हो चुकी है. सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. Consecutive sixes for the batsman Kiran. Third 6 came from his bat and the things getting much easier with that couple of sixes. 36 on the board, 9 runs required, 15 balls remaining. और सीएसके इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ. प्रसाद नायक अगली गेंद लेकर तैयार किरण के लिए. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंच चुकी है. फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर. 8 रन चाहिए विजय के लिए 14 गेंदों में. और गेंदबाज प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी करेंगे वरुण के लिए. यह गेंद टॉप एज, मौका पॉइंट फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. रिवर्स शॉट खेलना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की. थर्ड विकेट डाउन. इट्स 37 for 3. Last ball left. So 13 balls left and 8 runs required. The present equation shows for the batting side CSK. गिरीश का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और प्रसाद नायक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार बल्लेबाज गिरीश के लिए. इस बार just sensible cricket, just waiting to the ball to come on to his bat, driven that one perfectly down to Whitey's long off and got in a single for that stroke. 38 on the board, 3 wickets down and the third over has been came soon and 7 runs required in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs. और तख्ता इस वक्त सीएस का काफी यहां पर भारी लगता हुआ. तो आदित्य भट्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. 7 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त आसान सा लक्ष्य इस वक्त सीएसके के सामने. और आदित्य इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. टैंक कोबरा एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए आदि यानी आदित्य भट्ट.
रिवर्स शॉट, गेंद को खेला गली पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका, ओवर थ्रो, कोई फील्डर वहां पर नहीं, लेकिन बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर नहीं लेना चाहते हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 ऑन द बोर्ड, 39 on the board in fact, that means 6 runs required in remaining 11 balls। और आदित्य अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त टैंक कोबरा बी के कप्तान, और ओवर की अगली गेंद लेकर आदित्य तैयार। फुल टॉस बट couldn't got the advantage of that one। गेंद जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हो, बल्लेबाज ने एक रन दौड़कर यहां पर पूर्ण कर लिया। 40 for the loss of 3 wicket। लेग पाई का इशारा अंपायर द्वारा। Just 5 runs required from 10 balls now। और आदित्य अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Full toss and dropped। That wasn't a sharp chance at the last moment। He's got a hand on that, but the ball was flicked out of his hands। That was an absolutely sharp chance, लेकिन इस मौके को कन्वर्ट करने में वो असफल, लेकिन एक बेहतर प्रयत्न उन्होंने जरूर किया। एक रन का इजाफा, 41 41, 9 गेंदें अब बाकी और सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। आदित्य अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 रन सिर्फ चाहिए, 8 गेंदें बाकी। अभी भी लक्ष्य आसान न इस वक्त सीएसके के सामने। आदित्य इस बार उछाला, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद जाते हुए और गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। सिर्फ 3 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी। आदित्य अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। मैच नंबर 12, लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। बीमा डिलीवरी, टॉप एज, और यहां पर रन से मिलेंगे जरूर। 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scores are now leveled, and also a free hit delivery for the batsman। No ball +1 और फ्री हिट गेंद इस वक्त बैटर के लिए। इस बार उछालना चाहा, 1 रन इस वक्त पूर्ण करते हुए। दैट्स इट, विक्ट्री फॉर सीएसके by 7 wickets against Tank Cobras B, and with that victory they back the complete points. Now it's going to be a playoff matches will be played. The first match of playoff round will be played in the face of qualifier match number 1 in between Padu Tirupati versus the host team Tank Cobra A, and that qualifier match number 1 is now starts within just a short while. And man of the match of this match award goes to Kiran, who played a fantastic knock of 22 unbeaten runs, including 3 sixes, and because of that, Kiran of CSK enjoyed the man of the match. So we'll be taking a short break, and we'll be back right after short break with my friend Satish in English with the qualifier match number 1 will going to start between Padu Tirupati versus the host team Tank Cobra A. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.